be the best in the world, and I think that's why we're seeing Nova or so much consistency out of our top teams be able to do this time and time again. Yeah, I mean, consistency, of course, is going to be super important. And if I want to take the topic over to inconsistency. Okay, guys, हाम्रो लगभग सब कुरा रेडी भइसकेको छ अनि we are live. We're going to be looking at still one Infinity. Okay, we are live. We saw them be so consistent in the East League, and you look at, and when you compare West and East, I think 45 भइसक्यो खै त हाम्रो यहाँ consistent in, and they came in as start. Okay, been here. I would like to see them finish off with a good day. I don't think they're in competition for that first place, but they need to try and step it up. फेसमा पनि लाइभ स्टार्ट हुन आँटेको छ हाम्रो. Now it's just pretty much ST just explosion. Okay, Not we'll see a lot of connected explosions here. till This is now, our why? first match now today in our final day. It's Championship Why Sunday. this It's is not a why bad way to this kick is it off. stream key. wtach, Dave, and Necro. Start manually. Ladies and gentlemen, Okay, match start भइसक्यो हैन. 6 more games to close out the 2021 competitive PUBG Mobile year. One team will be crowned PUBG Mobile Global Okay, awarded. यहाँ हाम्रो सब टिमहरु एकदम उड्दै उड्दै जाँदैछन्. हाम्रो अर्जुन भाइ खोइ Necro, it all starts now. Game 1, day 3. Ergo, let's get it, man. Let's get it. Let's get it, dude. This is what it has come down to. That one single team. And currently Noah are looking like the Kings, but still you have the teams that are right underneath them. You have still those 4 teams. And I key. still feel like teams right Copy. Enigma, Copy the key. Navi, I feel like they're always going to be those teams that are going to be a huge threat for Noah. Even if one single game slips out of their hand, Noah will need to make sure that they're trying to... Why live isn't starting? मेरो लाइभ स्टार्ट भइरहेको छैन. अलि आवाज कम कर. हाम्रो यता स्टार्ट भइसक्यो है त. Average points in Ergo, 17.3. Not only that, I'm worried about Order. Yesterday, Order was slaying with the grenades. Order was just putting up the numbers. Phenomenal performance here so far. And I was looking at Order's numbers in particular. This dude averages a little bit over 500 damage per game. So I don't know if you can stop that, man. I don't know if you can stop that. It's like an unstoppable force of nature at this point. But yeah, Fenerbahce, this is what I was really... Match start भइसक्यो. कहाँ छौ बे तिमी अर्जुन? Bottom of the board, Fenerbahce, Furious Gaming, Godlike. I'm expecting these teams to actually try to Hello. win some people's games. And they can always go for those because now they already know they're all the way in the bottom of the board. There's no way they're going to be able to at least like get on top. So maybe, you know, might as well try and just ball some games. And we already are seeing over here 7 going against Fenerbahce. He spots one man out, lobs in an 8, flushes him out of his position, but still knocks spawn a little too quick on his feet. बा केटा गीत गाउँदैछ अहिले बसेर. Be kind of by themselves up here in the front lines. Yeah, they might have recognized, okay, there's an enemy. Hello. Had that Uzi and really trying to... च्यानल वेलकम टु माई गाइज अरे फेरि उसले बोलेको म्याच हेर न यहाँ मुला कस्तो खतरनाक भइरहेछ तिमी गफ गरेर बस्न बस्ने हेर यहाँ म्याच. Pull them back. I think that's a smart move because you don't want to risk it, especially if you're down there at the bottom. यहाँ स्टार्ट भइसक्यो यार. यहाँ Losing one of your teammates this अघि भइसक्यो सुरु यार. तिमी कुन दुनियाँमा छौ? and collapse on them at the same exact time. Everybody needs to be on the same page right तिमी now. कुन दुनियाँमा छौ क्या? म त्यही बुझिरहेको छैन. The teams that I'm really going to be eyeing out for are going to be Nextria, Enigma Galaxy, Navi, DXA, लल and maybe Down One Gaming as well. यहाँ त्यस्तो गरे यार. If they have all ओनामी खोइ ओनामी अहिलेसम्म आएको छैन यार. consistent, I'm pretty sure there's a chance. वो अहिले उसको मतलब हुन्छ नि माइनक्राफ्टको स्ट्रिम सायद. Those teams that also is going to be having those consistent games. So I don't really know what to expect, man. It's just so hard to tell. It is. The pressure today. होइन एनजिएक्स को कार हेर आउँदैछ अहिले. Competitive PUBG Mobile. Some would say the best lobby yet. You know, highest level of competition with the best players in the world. So make sure you watch live, earn these rewards. The grand finals treasure box. 2x गरे 2x गरे And you ठिक want छ. to look like one of these players? You gotta unlock the skin. I already got mine in game, so. अब एनभिके को हेराउँदैछ. Here's Nova. That's ठिक छ गाइज. we're probably going to be highlighting a lot today. ओके हाम्रो यहाँ यता पनि लाइभ सुरु भइसक्यो हाम्रो फेसबुकतिर पनि देखान्देऊ. They're kind of talking about Paraboy in particular playing that scouting role, right? Always that player up in the front lines looking for that optimal. WN गेमिङ साइड के गरेको ओइ मुला च्याट हेर यहाँ हामी यहाँ हैन यो PMGC को कास्ट गर्दै छौं गा बसेर नेपालीमा यही गरेको. हेर मुला हाम्रो PUBG को कास्ट
and the team Yeah. is Cast. still doing just fine. So हेरेर मजा लिँदैछ मतलब कास्ट हैन मतलब हेरेर Literally हेट still in कास्ट like अरे plus KDA, and I'm absolutely speechless. Yeah, even though he's getting predictable with what he's doing and still maintaining that KDA, dude. I mean, I don't really think so. I need to add anything like about it already. Like the stats speak for themselves. एसटी एसटी हेरे आउँदैछ अहिले इन्फिनिक्स हेरेको छैन As I said, he's just an unstoppable कस्तो force लेट of nature right now. It's like Order seems unstoppable पारे until now. Another team that I'm really going to be eyeing out for today has to be Stalwart Esports, man. अहिले एसटी को हेराउँदैछ What एसटी को happened to them एक्सन yesterday, they seemed ओपी बोलते पिन कमेन्ट looking at the 10th place right पारिसक्यो now. 2x मैले हैन tournament डब्लुएन with गेमिङ the chicken dinner, right? The हाम्रो team ओनामी first खोइ winner, ओनामीले बोलाउनु पर्यो 14 एकैछिन points. एकछिन ल म ओनामीले बोलाउँछु Day one, solid when it comes to placement points. Not a lot of elim हेलो हेलो ओनामी Day two, kind of the ओनामी opposite. They had a couple games with कहाँ छौ तिमी अहिले आउ न points, but just कि not स्टार्ट a lot गरेको of छैनौ तिमीले placement points. म्याच So, म्याच yeah, स्टार्ट I'm with भइसक्यो you on that one. Like today, if you are one of these mid-pack teams, यहाँ you 6x really तान्दैछन् gotta हैन try to get both M24 मा wins जल्दी जल्दी and placement पबजी वालामा होला points. तलकोमा हामी तल छौं ल Flowing PUBG in वालामा every single game, and yeah, I had to pause myself right there because this tournament, hey, we have been seeing some ओके nice म्युट गर न त त्यसको आवाज हैन त्यसलाई बोल्न पनि हामी आफ्नो हेर्ने क्या त्यसको आवाज बरु कम गरिदिउँ ल Oh, he got kind of scared as well. That's why he just like booked it. ल त्यसको आवाज कम गरिदे Not interesting. I'm just gonna book the ticket right off, and well, he just catches the US. इङ्ग्लिसको Maybe if he stops it for even a second, Newsy, it's not gonna take enough time for Newsy to just like line up the shot and hit the shot onto him and cracks some skulls open. But yeah. हाम्रो बगी र डिएक्स को टिम पुरा अगाडि कहाँ कहाँ छैन यो डिएक्स को टिम कहाँ छ रे त्यसमा पनि मिल्दैन आफुले डिएक्स को टिम डिडब्ल्यू यिनीहरू पहिले बगिसकि सब लिएर हिँडिदिन्छन् आज तिमीले स्किम खेलेनौ म्युट गर त्यसको आवाज अरे That's more points than not the BM, but that's more points than almost Fenerbahce down there at the bottom with 46 points. जी बाबा I believe Order alone has some more elim points than elim points from a couple of these squads. So, yeah, this tournament has definitely been the Nova/Order tournament, player spotlight. Dude's going to be walking away with a ton of highlight clips after this event. So, it's really, like you said, I agree with you. X-Ria, Enigma Galaxy, Na'Vi, it's up to these teams to try to close that gap today. And one thing that they can really do is pay close attention to the kill feed. If they recognize on the kill feed, okay, Nova, they got taken out. I think to me, that's the indicator, if you are one of these teams in second, third, or fourth, to really ramp it up and really go all out and try to capitalize on as many points as possible. So pay close attention to the kill feed today. Yeah, you got to pay close attention to the kill feed without a doubt. But yeah, I want Furious Gaming and Fenerbahce to just go all in. I want them to spoil some games over here. I want some content. I want to see some teams getting like, I want to see some people rage over here, okay? I want to see Fenerbahce and Furious Gaming to try and dig on some enemy hills just to do it on purpose as well, because they're all the way in the bottom of the leaderboard. There's no way they're going to be able to get even in the top 5. But yeah, if they do so, if they just like try to have a little bit of fun in the lobby, I feel like that can also be a huge thing. That can also be something that viewers will enjoy as well. Big Malo already down from Furious in particular. Yeah. The Infinity looks like they were setting up a bridge camp. We look at this nice little glimpse of them from this nice point of view. Now, Na'Vi are down there on the military base island. So if Na'Vi do decide to use that west bridge, this could pay off big time if they can capitalize on these elim points as they pass by. Na'Vi. But the blue, it's going to apply a little bit of pressure. So do they wait? Do they sit back and wait, or do they relocate? Right? That's the question in my mind. If you're Infinity, what do you think the play is here, Necro? I feel like you should just try to relocate as quick as possible. You do not sit back and wait. I do understand Na'Vi all the way in the blue zone. But again, Na'Vi is one of those teams that are really well known for those late rotations, and they're going to keep on doing so. So Na'Vi, that's kind of like their main play style. Infinity, on the other hand, I feel like they should not wait for Na'Vi. Instead, they should just try and rotate and maybe try and play things a little safe, try and book their ticket already inside the next zone. But again, they're all the way on the edge as well, so I don't know where the next circle is going to be shifting, but the circle shifts right in the center. There's a lot of teams already in the center of the zone, so
making yourself comfortable in the center is going to be quite tough. Yeah, not too bad of a circle shift either for the Infinity if they do want to kind of stick it out a little longer, try to camp out Na'Vi. But I agree with you, like looking at the overall leaderboards, the Infinity have a lot more to lose in this situation if it goes awry for them compared to Na'Vi. But then on the flip end, Na'Vi, remember, they are chasing down that 1.5 million US dollars. So they don't want to let that slip on out of their grasp either. So looks like both teams going to be popping in their vehicles, looking to relocate into the zone. But over here, Xavier getting sprayed upon by Action, the solo out there. Oh, the solo in the compound. I'm pretty sure Xavier, do you realize, is the only solo man taking a lot of shots onto them, but also has dealt quite a lot of damage. So Xavier, I don't really feel like they're going to be challenging a fight against Action, at least for now. They found themselves a safe house, and they're going to take control of it, which makes quite a lot of sense. But yeah, Action, Stalwart Esports, there's huge separation coming out. If you look at the map feed, Dave, the separation between Action and the rest of the pack, I don't personally like it, but again, maybe they have a little bit of game plan. Yeah, I'm trying to count how many meters away. It's at least 700 meters, but I do believe Action is going to look to pop into their vehicle and try to regroup with their teammates just a little north of Milta. So yeah, there he is down there. So it is kind of early on. Teams are kind of shuffling to find that perfect spot to call home for the time being. So Action, if they play their cards right, might be able to just avoid all the sight lines right now and actually make it back to their team. Now, the team that I'm really worried for has to be Infinity. Now, they were camping the bridge, but look at the late rotation coming outside from Na'Vi. Now, they are going to wrap up right behind Infinity, and I don't feel like Infinity are going to expect anyone to be right on the back. It's a 2-2 split coming out from the side of Infinity, but again, they're quite spread out from each other as well. So, Infinity might just have a little threat unless Na'Vi decides to go for a complete, like, you know, they just throw a complete new curveball and they just try to go all the way up from north, which would be a good rotation. Yeah, I don't really see a lot of teams near school. They can try and get those compound, but again, the next circle shift, I don't really feel like it's going to shift anywhere near school. Yeah, so I do believe Na'Vi, they are playing this one slow because we saw them kind of zooming in on that bridge. They did recognize, okay, there's a couple enemies on that bridge. That's why they played slow. So with that in mind, this is a team that is very comfortable playing in the early game blue. I wouldn't be surprised if they just avoid trying to send it directly into the zone and just wrap all the way around, kind of like what you were mentioning, kind of north of Pachinki, near school, wrapping over there. Of course, we can see it is going to be free and clear, so that is like the perfect call for Na'Vi right now. Yeah, and they also like to play on the edges, so considering how they like to play their game style, it makes a lot of sense why they're rotating like that. Yeah, for now, SGG and Furious Gaming quite close to each other. Now, Furious Gaming, as I mentioned, they have nothing to lose over here. They can just try and spoil SGG's game. SGG, they're also not looking that great all the way on kind of like the bottom of the board, I would say, on 11th place. So SGG, not looking that great, but still, there's at least a chance that they can make top 5. I agree with you. Not for S2G, but for Furious, when we're talking about nothing to lose, but then at the same time, you don't want to lose, if that makes sense. So, yes, they have nothing to lose, but you don't want to be the team that gets taken out in 16th position every single match. And I think that's going to be something on their mind. If you are one of these bottom teams, I think the goal today, get a chicken dinner, right? Just get a chicken dinner so you can say you won a game here at the highest level of competition. And I think that'll make you feel good. But over here, next Rhea, okay, looking for a potential fight onto 628. Ooh, they take a couple of shots, connected one. But now next Rhea on to move instantly. You realize they're not going to be able to regain the control. So now next Rhea on to move, trying to reposition themselves, trying to find a little bit of more comfortable spot. Downbound Gaming right next to them as well. But yeah, we have Xavier and Godlike this time. It seems like they're challenging this compound. And what a great jump shot coming in from the side of Godlike. But the problem is they're also getting shot at from the back. But the opening being found on the compound, that's going to be opening quite a lot of things up. But over here, Xavier, they're able to hold off this compound pretty well. Yeah, look at Xavier. They had 2 members up close and personal. Now they're sending 2 more because they had a 2-2 split to close the gap and try to provide that support. Jonathan Clutchcott still going to be alive behind this broken wall. Looks like Xavier are going to be pulling back. So one player I was looking at in particular from Xavier who has that clutch badge is Frankie, right? It has to be Frankie. So I was looking to see exactly what Frankie was doing. And it looks like Frankie was just providing that oversight, that cover fire for their squad mate to pull back and save.
Yeah, but now Xavier, they have a really good positioning as well. But the problem is they don't have the man number to hold it down. Only 2 men left to try and hold the position down, so defense might just crumble if any of the team decided to challenge a fight against them. Team Secret, another one of those teams on the struggling phase. Oh, look what they're doing. All the way on 12th place. Yeah, they're just blocking the ways. They're just making sure Furious Gaming are being trapped inside that bunker. What a huge, like, big brain play. They know there's an enemy potential down there in the bunker, and they park their UAS in a certain position that is angled that you cannot crawl or jump or move past it, and then they blew that up. So, yes, Furious Gaming, they are safe for now, and yes, there's a couple entrances to these bunkers, but that right there, that's one of them eliminated. And now look at the other entrance. It looks like Godlike are going to be pulling up right behind. So Furious, man, they are stuck underground. Oh, they are. 3 players Godlike right outside the gates. Furious Gaming, they can't really move a lot. They're also giving a lot of footsteps away with the way they're moving. So Godlike are pretty well known of what Furious Gaming is doing over here. Furious Gaming as well, they're big time chilling. They're not really trying to do anything. They're just taking things quite slow. Makes quite a lot of sense as well. If the circle moves away, though, that's going to be a huge problem for Furious Gaming, without a doubt. But there's a lot of teams on Shelter, so they're probably going to be engaging in each other. And I do already see 2 players falling down from Godlike, and it's H2G taking a little bit of shots onto them, and Nova as well joining the fray. And the zone did actually move away. So you got S2G, you got Godlike, and then Team Secret blocking all the entrances right now. If you are Furious, you are stuck. I see they might have one of them available to utilize, but regardless, all those teams, they will have to move. Oh, here we go. Na'Vi finding an opening onto Noah. News for Noah, surely. But still 3 players that are open. Noah, they can make a lot of things happen with only 3 players live in the lobby. We've seen that in the past. Not just 3, only 1. Just keep order alive. He can probably clutch out the whole situation and carry his team on the back. But yeah, now Na'Vi left with all 4 players to work with. I do want to see where they're going to be positioning themselves now. As I mentioned, they like to play on the edge of the zone, and they're probably going to be trying to do so. But Nova is the team right in the front. Yeah, big chilling right there up to the north. But look at that, big fight. Silas dropping down with the scar. There's 1, there's 2. Oh, Furious Gaming, the guy screaming a buggy, I believe, underground, looking for a play to happen, to execute, to reposition, but popping back over here to the north. I was going to say, I don't think Na'Vi will contest this onto Nova. Nova, yes, they did lose 1 in the process of grouping up in this compound, but this area, Nova, they have it pinned down. They got a couple buildings they're working with. We see Order on the outside using that broken wall for additional sight lines, and they're making sure to take shots onto Na'Vi in their vehicles to push them away so that they can't actually crash on top of them. Oh, I do like what Na'Vi's trying to do here, but still the position, they will be held outside the zone. And here we go. Hamoudi finds an opening on to take C, but also taking a lot of shots in return. Not a good news for Enigma Galaxy for sure. Hamoudi spotted out in the open. Does have the little Gazia to work with as cover. But still, Na'Vi, they're being held outside the zone, and they will need to try and beat the timing on the wall of death. Yeah, Na'Vi, they might actually get sandwiched. And the reason Na'Vi are here is because of those shots that Nova took upon them up there in the north. So it pressured them to rotate in this area. So gotta look ahead in Enigma Galaxy. A couple members prone down. Next Ria is going to be trying to pull up behind them. A lot of teams right now congested right on top of each other on this edge of the play zone. Dude, look at the left side of the map. There's so many teams. Enigma Galaxy next to Ria, Na'Vi right next to each other. Enigma Galaxy as well. They need to watch out from the back, even from the front. Takes C, spots out a player in the open, but luckily Hamoudi was able to crawl back to safety in the nick of time. On the other hand, 628 as well, challenging fight against next Ria. There's just an absolute chaos on the left side of the map. Beautiful nade to confirm the kill, and still Meku able to connect all of his shots. Raouf, those missed shots. A missed opportunity from Enigma Galaxy to try and stop Na'Vi. But Na'Vi, it just looks like they're easily able to breach through Enigma's defense. Yeah, and I really appreciate how Na'Vi, they were utilizing that 1 player in the car strat. They had Matic kind of low in the health department, but in the vehicle looking to have their squad mates get a knock so they can run them over, confirm that, and immediately turn the tides. And that car strat paying off big time for Na'Vi right there. Talking about defense crumbling, that's one of the prime examples. Enigma Galaxy taken out quite early in the game. Actually,
They were the first team to get taken out the game as well. Taken out the game from 16th place. That's not a good news, is it, Dave? Then we have Godlike following it up on 14th. Pretty sure A7 as well will follow it up. And now Furious Gaming finally, the final man seems like has been put 6 feet under. S2G quite close to 4 rivals, and here we go. The opening being found. 7 is the man who finds the opening. But Appy from the back trying his best to at least give some blind shots, trying his best to provide some cover fire. But at this point, the man from 4 rivals has to be a little gone case, but still the man advantage favoring 4 rivals big time. Molly right there. Silas Pugh has been just on the ball here in game number 1. Let's see if they can continue to clutch it out. Playing a ring around the rosy in the smokes. 2v1 right here. Silas getting one, but not getting the other. So close. S2G, nothing but violence all game long. Not paying off in their favor here. Only got 3 elim points. Not that great, S2G. Didn't really get a lot of points from that. But again, circle shifting away on the right side. Navi still has a lot of pressure to deal with. They still need to make it inside the zone. They're trying to play the edge lines, but if they do play the edge lines, Noah's going to be the one to just put a lot of pressure on Navi again. So Navi, overall, they're not really looking that comfortable inside the game. We also do see Team Secret on the high ground. Noah finally on a move. Ooh, they're sending Jimmy in order in separate directions here. Try to hedge their bets on these sightlines from Don Juan and Team Secret above them. I like how they're spreading out here. It looks like Jimmy going to be trying to take some shots with the Scar. A nice little spray down out there in the distance. And Jimmy just pulled up in such a nice location that there was already a burnt out vehicle that Jimmy built their own cover. Oh, there we go. Popping up with the M4. Spray down right there. Oh my god, but from the other side, it's Kitsune taking out order. Huge knockout. Navi needs that. That's going to be bringing so much, or at least that's going to be giving them a huge sigh of relief. Now they don't really need to worry about Nova anymore, because the rest 2 players are right in the front, and they're quite separated out from each other. Pairboy and Jimmy, there's a huge separation between these 2. And Navi, they have such a huge area to play around with. Yeah, but they do have this this cover to work with. But Pairboy not slowing down yet. Not slowing down yet. Tixie getting the love tap right there. Look at the cover. Pairboy has some solid hard cover, and so does Jimmy. So I really do like this spread. Yeah, spread definitely is working out. But again, if one player falls down from them, Noah will need to try and play this really safe. As I mentioned, even if one player goes down, this might just be it Manova. But yeah, Navi, they should be able to get back to Tixie, hopefully. And yes, the res is being stuck onto Tixie. Tixie should be back up on his feet in no time. Noah, on the other hand, the spread is quite good, but they also need to worry about the team on the left. It's 4 rivals. Yeah, it looks like 4 rivals trying to sink their circle teeth into Jimmy away, down there. Yeah, circle does shift. It doesn't favor them. And Jimmy still just putting in work. Look at Jimmy's cover. I'm still amazed with the cover that Jimmy was able to build over here. Matic, though. Oh! Jimmy! Oh, what? You see that? He challenges a fight against a bolt action like that and still able to take him out. Oh my god, Jimmy, the nerves on this man. I don't even know what to say at this point, dude. Jimmy, absolutely insane. Gotta say, the confidence on this man is looking at all-time high right now. But Noah, as I mentioned, if one man goes down, Noah will have to play this game all solo. And now it's all down to Pairboy. And this is where it's his time to shine, Dave. Yeah, and we can see Navi not looking to push over this hill and take the face check with Pairboy because they're not sure how many enemies are actually over there. Pairboy's doing such a good job that to continue to apply that pressure and scare Navi to push on the other side of the hill towards Don Juan. Navi are just cleaning it up. No matter which team is in the front, Navi will clean you off, and they're able to make their presence inside the next zone just like that. They're just sweeping it through, Dave. They don't care what team is in the front. Navi are able to easily swipe through each and every single team. Sung, though, finally strikes back, but Kitsune in the close will take care of Sung. Sung goes down, a little too oblivious about Kitsune's position. Sung goes down, and Don One Gaming now in such uncomfortable place. Fabian really far away from Sung. Wow, okay, gonna be able to take up this guard tower for themselves. That's 2 times this game that Nova pressured Navi to rotate around them instead of face checking them. That's 2 times right there. Nova are doing such a good job at keeping that pressure regardless how many players they have alive. And I'm mentioning that because Pairboy's still alive up there in the north, snaking it right now. Yeah, snake it till we make it. Pairboy. He's
just waiting for the right moment to strike. Infinity, one man falls down. There, now it's all down left with that. One last man alive. Stalwart Esports on the other hand. We didn't really give this team a lot of spotlight, but they have all 4 of their players alive this late in the game. 6 teams left, Dave. And this might just be Stalwart Esports game. Bearboy not stopping, man. Not stopping. The solo in the blue. Looks like one of the squad mates from 4 Rivals tried to take him out. Immediately caught some bullets to the dome right there. Oh, man. 5 teams to go here. 5 teams to go. 5 teams to go. Fenerbahce and Stalwart Esports have huge man number advantage inside the lobby. All 4 players alive for these 2 teams. 4 Rivals having 3 up. And then it's just 2 solos. One from Noah and one from Infinity. This point, Paraboy, though, plays a little bit of spoiler. Finds an opening onto 4 Rivals. And confirms the kill instantly, if I'm not wrong. Yes, he does. 4 Rivals now left with only 2 players to work with. So it looks like Fenerbahce, they were playing this edge towards the south for some time. They did split up. Now, the Duke Machine just got done repositioning these vehicles in a certain type of way that will provide him cover from Stalwart down there to the south. So really curious to see, where does Stalwart go? Do they push straight uphill, or do they try to wrap around the southeast towards Fenerbahce? Action's already inside the zone. It's kind of like the ticket. He's already booked a ticket for his team. Being in the front, securing a little spot inside the zone. And now all Stalwart Esports need to do is just try and breach inside the zone. And I'm pretty sure they're going to be able to do so anytime soon. Infinity, the only man left alive, is trying his best to hold his nerve with the gun. But again, he's being locked in the sights of 4 Rivals. And it's Appy. A little peek from Infinity, and that's going to be it. The Wall of Death is just doing so much damage, yeah. Oh, Fenerbahce kind of getting separated right there. They are going to lose one in the back line to Stalwart. Let's see if they can defend the top of their hill. Stalwart Esports are going to be pushing up. You got top in action in the front lines. Keep an eye on these players. Oh, man. 4-on-3 situation. Fenerbahce. 4 Rivals being taken care of by Stalwart Esports. 4 Rivals eliminated on 3rd place. And now Stalwart Esports versus Fenerbahce. Fenerbahce able to make an equal trade. And now this leaves a 3-on-3 situation. Stalwart Esports versus Fenerbahce. I do like the position of Fenerbahce. They do have a little bit of high ground to work with, but still, Stalwart Esports, they're making it hurt. Yeah, and top has this boulder to work with, too. So if Fenerbahce can get a nice molly on top of that boulder, that molly will spread and pretty much take away that hard cover. The thing is, I'm not sure what type of utility they got working with right here. Separation from Fenerbahce is huge. They have one man, Nox Bomb, all the way on the left side, top. He's aware of that. Nox Bomb spots top. Takes shots, instantly taken out. Scry taken down quite low. And that's not looking that great. Action right next to Scry, but still Scry doesn't really have the HP to work with. Rebellion just trying to jiggle around the smoke. Position compromise. Stalwart Esports action's well aware of what's going on in the front, but still Rebellion now a snake in the grass in action, needs to watch out. Rebellion's position being revealed. Pika strikes in. The tracers just going on back and forth. Stalwart Esports, HP not supporting them, but Duke and Machine as well, the only man left alive from Fenerbahce. And we do know Duke and Machine is capable of clutches. He's the man who likes to stay down prone, but this time it's not going to work out. Stalwart Esports are going to be your winner of the first game of the final day. Winner, winner, chicken dinner, a ton of elim points, but Fenerbahce as well, a 2nd place finish. This team was dead last coming into today. If they can continue with this momentum, continue clawing at the overall leaderboard, they could be looking at some additional monies in their pocket. But Stalwart, hey, Necro, that was the team that you said to look out for here today. Yeah, dude, I told you. I knew Stalwart, they have no other choice, right? Yesterday, they didn't really have one of the greatest of days. So today, they had to make up for it, and we are already seeing a little glimpses of that. Hopefully, they're able to keep the consistency going even inside the future games. And if they're able to do so, hey, Noah, you have a possible threat. 12 elims, over 2k damage in that game. And they had a pretty challenging push in that late game, too. They had to push uphill, and they did a great job at doing so. So Stalwart Esports already showing up here hot in game number 1. Ladies and gentlemen, we got a bunch more action to go. Let's head over to the analyst. Well, Stalwart Esports start off day 3 like they started off day 1 with a victory in their pockets. They get themselves some juicy, juicy points. 12 eliminations, and of course, as you see, the first place for the chicken dinner. Much needed points for them. Obviously, a very difficult time for them to contest first place at all. However,
the amount of money they get extra, every single point they get, every single placing they improve on, is a lot of extra money in their pockets. Yeah, and not an easy game at that, right? Because they were on playing the more southern side. They had to take every single fight uphill. And the play that they went for, actually, because if you look at their stats that game, they had 1,200 healing. They had a lot of the teams looking their way and just taking those shots. And they were just, okay, we're going to wait it out, wait for all the teams to be pushed over that ridge, and then they're going to have to fight each another. And when there are less players, less teams available, then we're going to go for the push when there's only Fenerbahce remaining. They played the long game, and it worked out for them. It definitely did. And I mean, can we talk again about Nova? We mentioned how they're pretty much their biggest rivals. Well, guess what? They showed up, and now we're starting to see more of the likes of Paraboy. At some point there, we were scared that he was going to be able to do the 1v4 against 4 rivals. It could have happened, but right here, look at the stats. Fenerbahce finally showed up for me. This is a team that I've been talking about how consistent it was. This team that wasn't really well known for their elims, so I'm not surprised that they didn't get that many elims. But for them to be able to at least get up there, this is a team, Max, that's looking to not be dead last. There's going to be one, right? There is going to be, we don't know. But, hey, still going to have that prize pool, right? If you can try and get some extra good games at the end of the day, Fenerbahce could be looking pretty comfortable. Oh, you know, Paraboy getting himself 1,000 damage, 1,010 damage on this game. And, man, he scared a lot of teams away. Na'Vi in particular, they were not willing to take that fight. The fact is here for Nova and for Na'Vi in particular, as you saw next Rio go out really early, is the fact that Nova still scored 5 more points than Na'Vi did in that match. Yeah. Meaning that lead is lengthening even more. It was already a ridiculous amount of points. I think it was around 45 before. It should be around 50 now, if I'm not mistaken, if I can do math correctly. Well, okay, I know it wasn't 45 when I said in the beginning. But the fact is, that lead is still growing. That means that no matter how well Na'Vi did, even getting themselves 8 eliminations, Nova still got 9. And then Nova still placed higher. This goalpost is continuing to move, and Nova are getting step-by-step closer to closing down that $1.5 million and being called the best team in the world. What did you say, Seven, at the start of the day? I think you said a 100-point lead. You expect between first and second? I was like, that's too much. Now I'm looking at this, I'm like, hey, there's a chance like a 100-point lead to be created for Na'Vi, and that would be insane. Oh, sorry for Nova. That would be insane if they could create it here in just a few next 5 games. When you have a player telling you that their biggest rivals is themselves, in a way that's kind of just brushing up the competition. Nobody has showed them anything that they could be scared of, and I think it's impressive for the team to be able to, if they can put up a 100-point lead, I think it'll be huge, especially for the legacy. This is a Nova team. 100-point lead is huge. Yeah, this is a Nova team that has a huge legacy. This is just gonna add to it. One thing that we do have to mention there, it was Navi's performance. They were able to jump up from 4th place to 2nd place. And what's the difference in prize pool there, Max, for that? That's 180,000 over to 630,000. So I'm not going to do the exact math. How much is that? I'm not going to do that. I should have checked the numbers actually, but it's a big increase, and it's pretty, the really fun fact with themselves, and almost got rid of. Thank you. And the fact that they were almost able to take out Nova on Na'Vi, but the thing is still you have that point differentiation. If Na'Vi had a bad game while Nova was able to get a really good result there, that could have been already GG on the very first game of the day, and that's a very scary prospect. Yeah, and the thing is, we don't want to call it right and say, okay, it's over, Nova won, but the fact is, we have 4 teams below them that are on the 120-point mark. If they can't pick up a strong match here in match 2 of the day, then that almost basically is it. Nova can pretty much just AFK and still come out on top. And the craziest part is now that, I mean, we just saw it in that first game, we're starting to see some of the teams that, in a way, aren't really in contention for that top 3 situation starting to get points. We saw ST, I think they started off the day in 10th place. Yeah. They're getting points now, and I mean, we've been hyping them up for the longest time. If this continues to happen, it's ultimately just gonna end up helping Nova even more, especially if Nova continues to do the game plan that they've been showing over and over again. Exactly, because Stalwart not a threat to your first position. They're just way too far away. Same for Fenerbahce. As long as the points in top 4 not getting those points, like Nova are just gonna be relaxing, saying like, it's in the bag. So how are they gonna relax, Max? Like that. I felt I could be pampered if I was at the hotel, but I'm not there. Manny Petty? Yeah. That's true. Yeah, get Manny Petty and get a nice little drink in his hand, bathing in the sun, which Nova might be doing with a nice vacation of $1.5 million. But you're very right. And the thing is, right, we're talking about how these teams need to catch up some. I think you mentioned like hot dropping before. But realistically, if your team in 2nd through 5th place, you can't hot drop them, because if you fall out early, that's it. That's your hopes gone. You have to hope other teams are able to punish them. And as we saw, I think it was King who went out early. Order didn't care. He still picked up 5 eliminations. When it was just down to 2 players out of Nova, they continued to be aggressive up against, I think it was like Na'Vi fighting uphill and still winning fights. Yeah. Like, even when they're down people, they can still bring the eliminations. You know what's the crazier part that just kind of came to my head? I wonder if Paraboy saw the performance yesterday from Order, and he's like, I want to be able to top that.
I want people to know wanna be I'm you, my still boy. the bad man. Yep, that's exactly it. And I think it might be looking that way. I mean, we just saw what Paraboy was able to do. You guys didn't see that on camera. They caught me just like, I don't know what you're talking about. I'm too old for these memes. Maybe you'll show me one day. But yeah, I mean, Paraboy, we've always talked him as being the best player in the world, one of the most handsome players in the world. He wears the most stylish clothes, hangs out with the chillest dudes, goes to the best restaurants. The fact is, he is the star of the team. Yeah. And Order has always been in the shadow of him until this event. But what's even more impressive for me is that he's doing it against the best teams in the world. This is the best PUBG Mobile has been, period, in its entire existence. And Nova have created a legacy for themselves, or are still in the process of creating a legacy for themselves that no team can touch. Now, I know all of you from Indonesia are like, well, what about Bigatron, Jason? Bigatron never had to compete against the best Chinese teams in the world in those 2 years. Yeah. In a way, I don't want to play down what happened in Malaysia, right? Because remember when we were there in Malaysia, how dominant Bigatron was. And everybody was like, okay, Bigatron is currently the best team in the world. But as you just mentioned, Nova wasn't there. And that was always a big question mark, especially from the community, from the esports community. It was like, well, they did good, but Nova wasn't there. So are they really our main champions? And I think right now we're getting a lot of answers from Nova. Well, speaking of champions, let's talk a little bit more about Stalwart Esports here, as they were the champion of our first match of the day, and take a look at a quick little recap of the rotations and the likes. And Max, one thing that we talked about, I think when we were off camera, is that where has the Stalwart and Infinity been that we saw on league stage? This Stalwart team, I mean, we saw Pika pull off like almost a 1v4 with the Car 98, if I'm not mistaken, in one of our Eranga matches we had. Infinity, Newsy, and Gautani have kind of fallen off. The Stalwart we're seeing here in this match is the Stalwart, if you guys didn't watch East League, that we're used to. But for some reason, they can't hit that level of consistency here. I mean, we even mentioned on the pre-show, right? This is not the Infinity and Stalwart that we expected coming into the so it was on tournament. the show. It was on the show. Okay, I so we wasn't did it sure. both. But really, there's a big issue. But this game, at least in particular, and we're going to see the further we go into this recap, and we're going to see how elaborate their plan actually was, that they were just setting themselves up for success a lot more. Whereas I have the impression, if you look back, other than that chicken dinner they got on that first game of day one, after that, they're just going super aggressive, which is what we know from them. But their good macro that we saw in the East League has just not been that dominant, and we haven't seen them go for these really smart rotation, getting really strong positions, potentially waiting it out like they did this game to get in those positions in the first place. They've just been trying to full send it every single time, and it's just not the play style that I like. But this game here, them waiting it out at the south when all the teams were fighting north, that was what I expected to see from them 7, and it worked out at the very end. I actually have a question for you, Matt. After seeing that performance, do you think this is in a way as Stalwart Esports kind of sparking up again? Do you think they're going to be challenging for that top 3 situation? You know what? I would love to see that happen here, and in particular because I think that if you look back on the last few days, they would have just full sent it here. Here, they just took their time, and I think it's a big change of mentality looking back on these last 2 days. So I think so. I would hope so. So that... Go ahead. All right. What? Rock, paper, scissors, no. I just want to give you some context to that, right? If I'm not mistaken, Stalwart were around the 70 points before this match, and second place is around 120, like second through fifth, right? Yeah. There's a 50-point gap between those, and Stalwart was on this, like deep down the second page. There's a 50-point gap between first and second. Like the distance that Stalwart has to close is the same distance that the second through fifth place teams need to close up against Nova. I mean, that just goes to show how dominating Nova has been. But going back to Stalwart, we mentioned hot drops earlier, and this is another fun question that I mean, we've been asking for the longest time. We are gonna have one more set, the final Sandhawk, not coming up, but after this match in Miramar. Do you think we'll finally end up seeing that magical hot drop that we'll be talking about, STE and Alpha 7, considering where those teams are at, right? No. I don't think. I would love to see the DBS fight we saw during the scrims, but let me ask you. Let me counter your question with a question 7. Would you wager, let's just say $50,000? हेलो के भइराछ भइ के राछ यहाँ With the way they've been performing. No. Would you do it? Oh, would I you do drop in and hot drop a team where your potential to lose $50,000? हैन यस्तो भयो क्या बाबा रिसाएर बोलाउनु भयो मलाई तल So yes. अनि भन्नुभयो कि दोकानमा बस्नु पर्दैन 2टा मान्छे चाहिन्छ यहाँ रिसाएर कराउनु भयो अनि गए अनि ती अट्के क्या अब आउँछु होला 5-10 मिनेट पछि अहिले त आउँदिन तिमीहरू गर्थे 2-3 घन्टा त हुँदैन कहाँ 2-3 घन्टा आइहाल्छु म गराउँदै हुन्छ नि के गर्नु यार I can't do anything के गर्नु यार यस्तै हो बुझ्नुहुन्न बुझेपछि केही छैन गेम राम्रो गयो त
होइन होइन गेम खेलोस् भनेर नबुझिदियोस् बस टाइम दिनु पर्यो क्या त्यो छैन क्या ल हटाउ छोडा यो कुरा तिमी हटिया गइनौ के अरे केही बुझेन नेट त्यस्तै अनि मेरो यो युट्युबको लाइभ के भएको ए युट्युबको भन्छ ए चलेछ फेसबुकको लाइभ ल ठिकै सब लाइभ चलिरहेको रहेछ धन्यवाद सम्हालेकोमा दुईतिर नेटवर्क राम्रै चलिरहेछ दुईतिर लाइभ भइरह दुईतिर लाइभ छ केही पर्सेन्ट घटाइदिएको छु क्वालिटी आज राम्रो छ नि पहिला अस्तिको भन्दा अर्जुन हिजोको भन्दा राम्रो छ नि यो माइकलाई के भयो आवाज गइरहेको छैन कि के हो ए गइरहेको रहेछ ल अहिले म एकछिनतिर आउँछु ल कति बजे 6 बजे आउँछु 6 बजे आउँछु ल All right, we are back now, and we had Stalwart Esports start off the day strong, replicating their performance from day one of the event, but they still have 20+ points to catch up on if they want to get into the second place position. But then again, you have the likes of Navi here trying to defend that title with their $600,000, bumping themselves up 450,000 from the match before. I'll say you got that wrong. Yeah. But we, oh, okay, all right, Max. But to be, as we're saying, right, we're talking about can teams realistically catch Nova? If we look at the point difference, we would say it is possible, but the difference is it's Nova, and they've been playing really well. Yeah. But realistically, we could see Stalwart at the end of the day getting into top 3. There is a very good chance if they can put on another chicken dinner like that, they're gonna be in top 5. I can see it happening. That's the main reason why I was asking that earlier, because I was trying to get your opinion on it, because I can totally see that happening, considering that this is a team that showed us some amazing performance on the first day, literally on the first game. I would love to see that kind of style that they were able to show us on that first match. And if I'm not mistaken, you were wondering what has gone wrong with the team. You said the team's pretty much playing the exact same. It's just some micro things that haven't worked their way. Especially their macro, I would say in particular, that needs to be worked upon. But you know what? The start of the day was a chicken dinner. That's great. I'm going to spoil my team to watch. It is going to be Stalwart, because when we look back on the East League,
they were a team that would have that momentum factor, just like Alpha 7 in the West League, and they would get chicken dinner, then get himself a few podium top 5 finishes. This is what I need to see from them now if they want to hopefully race for that 3rd place and get themselves hopefully $330,000 in that position. So we'll see, but at the end, still going to be looking back on that game. Paraboy, even though he was solo versus 4 rivals versus Na'Vi, just stopped everyone. I really liked actually what Dave mentioned in that game. We had 2 situations where Nova basically just pushed Na'Vi to rotate around from them, even though they did not have the man advantage. That's how scary this team actually are. They do not have the advantage of terrain. They are playing low ground. They do not have the man advantage, and yet you are not ready to take a fight against them because they're Nova. And something that Nova was able to showcase us there in that last game is that they're willing to be aggressive when teams expect them to be defensive. I think it was Mustache Dave that was able to mention it. They were taking fights even though they didn't have the high ground, even though they were at a disadvantage. And I think we see that over and over again. I mean, going back to the first day when I saw, I think it was Mafioso trying to shoot at some of the Nova players, the man just stopped with no cover, turned around. Another thing that has caught a lot of the other teams by surprise, just expecting them to be defensive and then just getting surprised and having to fall back. Well, you guys were talking about what Mustache Dave mentioned. I'm going to talk about what Necro mentioned. And if I remember correctly, word for word, he did say Jason Kaplan is one of the most handsome human beings in existence, and you should make sure to go follow him over on Instagram. Yeah, I believe he said that. No, but it's actually, maybe talk about our teams to watch here. And I'll start things off. I know Max, but Na'Vi in particular, like, you got to continue to perform. They got 8 eliminations. Not for any team that's like, oh, wow, that's really good. You guys put on a great match. The problem is Nova did an even better match. They survived even longer. They have to improve even further than they just did. I mean, at some point, I feel like Na'Vi is going to take notes of that, and they're going to be like, okay, we just got to fight for 2nd place. We're not at that point yet, but it will happen at some point. If Nova continues to showcase the performances that they're currently showcasing, my team to watch is going to actually be Enigma Galaxy. This is a team that ended up getting 0 elims in the last one. Na'Vi was able to outperform them, and I feel like if they want to have a chance to even get between those 2nd and 3rd places, they need to start performing. They need to start getting those elims. Well, I gotta spoil things for you. Not to Vincere, which is obviously the full name of Na'Vi, is like born to win, not born to 2nd place. Vanessa, who's your prediction? Okay. Who's your team to watch? Enigma Galaxy. Okay. Well, there we go. Oh, sorry, I was too busy in my head. Like, what is not to Vincere? We go back to my class. I thought I said their name wrong for a second. I was like, hold on. But I'm glad you did say Enigma Galaxy as well. Like, this team, you remember on day 1, they had only 20 eliminations. Like, they were almost the lowest fragging team out there. And we saw them struggle with that in the past, to be fair, in East League. But they have improved here in the finals. But again, they have to improve even more. And that's got to be so frustrating for some teams who are already playing at such a high level to have to play even better with only 5 matches remaining. It's going to be tough. But you know what? They're going to have to make it happen if they want to be the best in the world. And speaking of best, we got our best commentators in the world here. Necro and Mustache Dave. A shout out to the boys on the desk. 5 more games to go. $1.5 million first place prize. 600K second place, 300K third place. There's a ton on the line here, Necro. Popping into Miramar. I gotta ask you, man. We are heading into Miramar. We're heading towards the end of the tournament. Do we expect any change-ups here on this game in particular? Okay, before answering your question, I gotta say, Jason is one of the most handsome dude over here, okay? He's looking pretty good. He's looking clean, man. Already saw that, you know. Any switch-ups? I don't exactly know. I just want the teams in the bottoms to actually try and hunt down teams in the front, okay? The teams try and hunt down teams all the way on top. Try and hunt down Nova. Try and hunt down Na'Vi. Try and hunt down Nextruya, you know? That would be one of the most, like, interesting things that I personally want to watch. I don't know, hunt them down. We getting into this match, we can see those average points in Miramar. Alpha 7. Day 1, Alpha 7 was my squad to cheer for. I mean, I gotta cheer for that team representing Brazil. Let's see though, can this be the match that they really clean up here and get a couple elim points to set them on the right track here today? Oh, dude, set them on the right track. A couple more elim points, yeah, that's what all these teams want, especially teams that are in the top 5, without a doubt. They want to just go. They want to just get those elim points. They want to get those placement points as well. But unfortunately, in that previous game, Enigma Galaxy got taken out quite early. Actually, they were the first team to get taken out. So that means this Miramar game is going to be meaning quite a lot for Enigma Galaxy particularly. And talk about getting taken out. We saw last game a couple of these players, PMGC 2021 Prestige, Scar L,
game skin. I saw those laser effects go like pew, pew, pew all over the screen. It was beautiful. So if the pros are using it, you should use it to go in-game and unlock the PMGC Premium Crate. Oh, dude. I like that. It looks kind of cool as well, right? Especially when you're like spectating the players. Looks kind of cool. Personally want that skin as well. I'm trying my best to get it, man. But yeah, now we have Fenerbahce over here. As I mentioned, I really want Fenerbahce to go and try and play this ball sport. 6-8 is the team in the front. Pretty close. Nox Bomb got taken out. Fenerbahce, again, not a good news for them. On 14th place, Godlike right underneath them. And then you have Furious Gaming. Now, we also got to talk about Godlike, man. First game, not that great of an outing. In this game of Miramar, they need to fight for the pride. Well, talking about fighting for it, we do see one of their squad mates on that hill right there, possibly taking some shots. Looking to get at least an limb point here, but they need to be cautious. You know, they are sliding down the overall leaderboards. And when we're talking about Godlike in particular, like if you... Oh, real quick. Talk about the bait right there. And Nox Bomb, one of the key players, in my opinion, from Fenerbahce. Always on the ball. It's between Nox Bomb and the Duke and Machine. They're always working together as a unit. You can tell that their synergy is on point. So if you are Fenerbahce and you're looking to climb up, losing Nox Bomb early, that's going to set you back a couple pegs. But to get back to your point, I wanted to ask you this actually. Like, you're Godlike. What do you think the plan is here today? Like, best outcome. What do you think is the plan from that squad? Honestly, Godlike needs to realize there's nothing to lose. At this point, they're just playing to get top 10. If I'm Godlike, I want to be in top 10 no matter what in the end of the day. Just to at least be up there, in the top 10. And that's going to be quite huge for India as a region in a whole. Even if they're top 10, that's quite huge in my opinion. Being in the top 10, it still means being in the top 10 amongst one of the best teams in the world. 16 teams in the world. I mean, that's quite huge, right? And I feel like, considering the fact that they have so many odds, they had so many odds coming inside the grand finals, they just got thrown into it. So, I mean, hey, being in the top 10 against all the odds, that's going to be meaning quite a lot. So if I'm Godlike, I'm just going to try to go for, like, a little bit of safer place and involved in a lot of third parties. Yeah, that's what I'm saying. Like, of course you want top 10, but it's like, how do you do it, right? How do you, if you're Godlike, how do you do it? And for me, I have to compare to what they have been doing. And I noticed that they tend to look for those off-center positions, right? And they scout them out towards the mid to late game, and they always lose one or two on that scouting rotation. So when I have to come up with a quick answer off the top of my head, I'm the coach. I think how they do it is just play the edge, play the edge nice and slow. And kind of to your point, I think just try to go for placement points. And if there is a team kind of getting in your way of the edge strat, then obviously take the fight. But the key detail right there is hopefully if you do it that way, you have your team alive compared to losing one from scouting, right? Because they need everybody alive. If they want to pull this off, they need the whole team alive in every single team fight. And there's been multiple times where they would get in a team fight, and that's not the case. That's my take. I mean, that's my take. That's my take. I don't, no. Feel free to add to it, take away. I feel like that's a good take without a doubt. But as I mentioned, they should also go for those third parties, because third parties, I feel like, are one of the most safest bet to actually win out a fight, because third parties means already the two teams that are fighting, they're already quite hurt. So all you need to do is just try and find a little bit of better positioning on those two teams and just try and take them out. So Godlike can try and do that, but still we don't exactly know what's going on inside their heads. So we'll need to find out in the future, because currently they're in water treatment. They still haven't really left it. They're still inside the circle. And I feel like if I'm Godlike, I'm not moving out about water treatment. Yeah, I get that, but they're in water treatment with a 2-2 split, right? And if a team of 4 pushes one of your duos, can you defend? Like, have you shown us that you can defend? That's my question. So, do we continue with these splits? Do we continue with these mid to late game, just sending out a scout looking for an off-center position? Or do we just play nice and slow? But let's check out this interview.
которые, соответственно, прошли в гранд-финал со своих регионов. Также есть в каждом регионе команды, которые вообще не понимают, что делают на этом турнире или как прошли на него. Поэтому я думаю, что в каждом регионе по три команды сильнейших и команды, которые прошли в финал, покажут, кто сильнее, Запад или Восток. Okay. Interesting stuff there. Interesting stuff right there. So we'll see. We saw last game, couple elim points. You know, they're climbing up. I mean, what's your take on that? Dude, Navi, they're on second place, dude. That's quite huge. 128 points, but the problem is, Noah is just miles away. 183 points. If you want to get the top place, you still have a huge climbing to do. You have a mountain to climb, and for that, you wanna hope. You need to pray. You need to pray that maybe Noah will have at least 1 or 2 games slipping out of their hands. And again, Noah, the way they're moving, the consistency they're having, for those slip-ups, the chances are quite low. I like it. I like where you're going with this. If you're not first, you're last. And I think that's the mentality right here. And although the point gap between first and second is pretty steep, they're not showing any signs of slowing down. It is 100% every single game. And they're doing it, man. They are showing up. So I love that championship mentality. And we'll see how it unfolds here today as all these players wait to see where the next circle goes. Does center up a little more, so not too harsh for a lot of these teams who already acquired some center locations. Clutch got moves inside the house in the nick of time, shuts the door right on his eyes. But yeah, next Ruya, quite lucky, gotta say, Clutch God. Oh my god, he's lucky that the headshot did not connect. If it did, Clutch God would have been knocked out and the kill should have been confirmed easily for next Ruya. But over here we have now 6-8. Infinity right in the front. If you talk about one of those teams that were looking really strong in the league days, and now Infinity in the grand final, somewhere down line, kind of fading away in the end days. Yeah, talk about fading away. The Duke machine go for a really risky scout compound rotate. Was able to walk away with their life, but look at this Stalwart looking to make a push over here next Ria. Oh, two of the top teams on the leaderboards, and this is going to mean quite a lot. This fight's going to mean quite a lot. Nate quite close. Was not able to deal enough damage on the action, though. Was able to move back into safety. Next Ruya, if I'm not wrong, the cavalry has arrived for them. Stalwart Esports, only 2 players in the front. I do see top on the left as well. Try and provide a little bit of backup fire. Also play for that informational play. Yeah, Stalwart definitely on the hot cusp of their last game, right? So they're feeling good. Top with that off angle, trying to make sure to catch any type of sight lines on those 2 players from next Ria in those back lines. Just a smidge of sight lines to work with there between the 2 buildings. Really buying time for their squad mates in the front line too. The trio trying to take this building for themselves. Oh, 3 players in the front. Scry, Pika, and Action. Action, of course, is going to lead the pack if the push comes in through, but still, Stalwart Esports taking their time. 2 teams inside this little compound. I'm pretty sure as time passes by, they're going to keep on getting impatient. And this is look at this. Top is taking shots too. Oh, Frozen popping up the door, trying to take some shots on Action, but Action with the M249 in the front lines. Looks like Frozen is going to toss his smoke, throw a little confusion out there. But I was pointing out, Top is taking a lot of shots from their off angle, applying that pressure and keeping next Ria from really grouping up in this compound. Oh, UMP! Oh, not no. Good. Oh, not good. Next Ria opening the fray. Beautiful peek. Beautiful timing from Kudor right there. And now Stalwart Esports will need to try and bounce back from this. 2 players in the front, Top all the way in the back. Clearly, Stalwart Esports lacking huge man number inside this. If these 2 players get pushed on by all these 4 players, it's going to be quite tough to defend. But still the M249 on the... Just looking to buy some time. I really want to see Top group up and try to make this push into the compound to support their teammates. But on the outskirts, God, like you were talking about them, they're trying to third-party this. Yeah, this is what I told you. Third parties are probably the best bet for Godlike. Just try and collect these kills.
But guess what? This time, third party by S2G. S2G are like, all right, well, knock, Godlike. You try to third party them, we'll third party you. And now next three, the push comes in through. Do realize Stalwart Esports are looking quite weak in action on the off angle, trying his best to deal a lot of damage, but the man on the top, Couture, is just getting a lot of insane timings on Stalwart Esports. Kills being confirmed, and now Stalwart Esports, they're hurt. Yeah, action. They tried to pull back towards top, and top was providing a really nice amount of cover fire for them to make some moves happen. But the thing is, they just got caught in the tail end, and now top retreating out here. Next zone did go on up, so top can retreat back to the edge and play for those placement points. But that right there goes to show me that team communication is flowing on the side of Stalwart. And although the play didn't work out in their favor, still a good play at the end of the day. Godlike, it seems like they're able to make it back to safety. So 4 players still alive. Looking pretty good for now. Neo, though, a huge separation between the squads, and I personally don't like it. Navi in the front, Godlike, trying to just scare him away from that compound. Top, all by himself in this compound, and Navi are looking to crash onto it. So many buildings in this area, and it just happens that Navi gonna be rolling right past top. But top, applying that pressure, was able to confirm one. Can't top clutch this out. M4 down to 24 bullets, looking for that wraparound, anticipating the push from all angles, taking a lot of shots on a Miku. Let's go top. Can we get the third? Oh, that's a huge mistake from Navi. Kitsune especially jumps out of a moving vehicle, gets knocked out. Meku as well drops in the straight line. And top is not going to miss shots like those, but Meku is still knocked out. The rest should be back up onto Meku. Beautiful smoke to provide that cover. But Nova as well, they found themselves a good spot inside the zone. They can try and hold it off as long as the circle doesn't take a huge shift away from them. And from what I'm expecting, it shouldn't really. I'm tipping my hat off to top still right there. Top, the last player alive, still was able to get a couple elim points, right? That will help stay afloat. Yes, only one, but every point is going to matter at the end of the day here. Bolt action in the end. Well, Lamborghini's tossing mollies up there, so they might think there might be an enemy up here, actually. So trying to clear it out. Oh, that was his chance. That was his chance. While he was waltzing, that was his chance. If he would have connected that headshot, would have been so nice to witness. Just watching some skulls being cracked open. But yeah. But at the same time, they don't want to give away that intel that they're playing the edge, right? Because obviously Xavier, they're not aware that A7 are up there on that hilltop. So I definitely get why they did hold the shot, because information is everything here, especially as we get to that mid to late game. Yeah, A7 clearly do have a huge high ground on top of Xavier as well, but if they give their position away, teams in the front, like Dynamo Gaming, they're definitely going to be taking little shots. And yes, A7, they're finally on a move. They do realize the circle shifts away, so they will need to try and make their mark inside the next circle. See, in that last play, to hold the shot, it pays off even more right here, because they're able to rotate around without Xavier knowing for a fact that they're going to be pulling from that area. And yes, at the end, Xavier, they did spot out those enemies in those vehicles, but that slight amount of time played in the advantage of Alpha 7. Oh, next three, straight up crashing on the compound of S2G. S2G knock, you have a little threat, but this time the threat being neutralized, and S2G easily able to take care of them. Fenerbahce quite close to Xavier. Fenerbahce's compound as well is getting charged on. The defense is trying to get breached through, but still the Xavier are crumbling down. Duke and Machine in the front. One man in the back for Xavier. He's a little too separated away, but he still doesn't really have a lot of HP to work with. Lamborghini in the front, trying his best to confirm those kills. Nate goes through and instantly will confirm. But Duke and Machine, as always, he's the only man who's left alive for really late. Yeah, as long as Duke and Machine doesn't catch a grenade to the face here, they might be able to defend. Lamborghini pressing up here. Lamborghini also needs to make sure, though, that their back sight lines aren't going to be exposed, because I see Enigma Galaxy right behind them, but it does look like Duke was spotted towards the end right there. 4 rivals as well, taking a dig on a Nova. One man getting knocked out. Still looking just so good on the overall rankings, man. 183 points, plus they got 2 points more. So they're looking really good. They're big time chilling. Godlike out in the open. Don't like the position that Godlike has.
Down to only 3 players live: Z God, Clutch God, and Jonathan. They're in the Team Secret open. in the front. Yeah. Yeah, but fortunate for them, nobody's going to be behind them, right? Yeah. And they also have clear sight lines to the north to make sure they can't give backstab. So they really have some time to work with right now and come up with some type of game plan on how to push down onto Team Secret. So they do have that working for them. They do have that working, but still, I mean, we've been watching Godlike, and these kind of moments, they have been choking quite a lot. But hopefully, they're able to figure out a game plan for themselves. But Dynamo Gaming now getting pushed on by A7. A7 not happy that Dynamo Gaming has this compound, and Dynamo Gaming as well trying their best to hold on this defense. Revo! Oh, he could have got taken out there. A7 win this. They have to. A7 are so good up close and personal. Oh, no. Especially with Avian's going to be burned alive. And here comes Mafioso with that additional support to help Carrillo flush out this Dynamo player on the second story. Oh, that's going to be pressing Dynamo down even a little bit more added pressure with Mafioso joining the fray. A7, all 4 players found themselves at least a safe spot for now. I wouldn't really call it safe because they do have another team right next to them. So Dynamo Gaming, Junie, I do like what he's trying to do, is playing things a little safe, not moving around, not really giving his exact position away. So that means A7 will still have a little problem knowing that Junie's right on top of them. But here we go. Dynamo find an opening on the A7. The confirmation there instantly. Sung is the man who's trying his best to do so. And Bull, another one, taking down A7. They're sweating right now. 2 players being taken out just like that. Dynamo Gaming not looking that great. Junie from the back strikes in. Finally, the silence breaks. And now A7. Carrillo, the only man left alive. He's trying his best to fight back. But Dynamo Gaming defense is a little too good. Wow. Taking a little too many fights at the same time right there. They had a duo on that first story, Alpha 7 trying to flush out the Dom 1 solo on the second story, and that amount of time was able to really pay off in Dom 1's favor in the opposite building as they just popped around the corner, hip fired the UMP, and well, we saw right there the tides have turned. And on that note, Dom 1, they finished that fight just in time as well because the next zone did shift and it is completely opposite from where they currently are. So they have some time to regroup, met up, and use those vehicles that Alpha 7 used to push them to reposition. Team Secret. Do like how they're moving over here. Playing right on the edge of the zone. They can try and gatekeep so many teams, including Enigma Galaxy right at the back, TX Xavier as well. This is their chance to try and rack up a lot of kills, but Furious Gaming, team in the front, 4 rivals, hasn't really been doing that great, but here comes a third party, getting shot in the back. Backs being exposed, Poppy Potro not going to be happy of that. And here we go, Freak as well getting charged on, but Team Secret is looking a little too strong. Wow, yeah. A Groza and a Shack right there. Oh, Nola with another 2-2 split. This is pretty much their bread and butter, especially here on Miramar. So really keep tabs on them as everybody honestly just trying to reposition in this new circle and trying to survive. Furious on the high ground though. Scream with the scar. Huge angle, huge sight lines from Scream, but Scream is getting pressured from Navi. Oh, dude, it's just like all the angles at this point are being watched out by so many other teams. Third parties after third parties. Where Odyssey happened, this was expected, but Nova, quite a lot of damage being dealt onto themselves, and Nova going to be taking a little bit of back foot, taking a little chill pill behind that ridge. Here we go, 4 rival strikes in, they find a knockout. Furious Gaming going to be a little unhappy after that. Big Milo still has the high ground to work with to try and hold off the players of 4 rivals. Triggers in, trying his best to escape the sidelines of 4 rivals, but it's not going to work out. Yeah, if I'm Furious right there, they spent so much time, so many resources to really lay the fire down onto 4 rivals. I think you just commit to making that push and trying to take them out in that close range battle compared to trying to rotate around them. And we saw right there, Furious, they just got blown to pieces. They weren't even able to use their weapon. And now here comes Nova trying to push right into that same spot 4 rivals were holding down and defending from Furious. But the circle shifts on to 628. 628 are in luck. They also have one of the best compounds inside the circle. If they play this to perfection, I mean 628 might just win this game. But Infinity as well alive in the game with 3 players. That's quite huge. Lamborghini making it hurt onto H2G. Man falls down in H2G now. Down to a 3-man squad. Team Secret getting shot in the back by Nova.
These are two big teams, and here we go. Lamborghini being spotted. Yep, as you said, Nate Parade comes in through, try and flush out Lamborghini. Lamborghini makes this push happen. Has the M249 as well. A lot of bullets to work in his favor, but he's also getting shot at in the back. There we go. There we go. As you mentioned, he just naded himself. Unfortunate. Oh, unfortunate for them, fortunate for Lamborghini with the M249 out there. And you were just talking about the Infinity down here in the south. They did have 4 up. That's no longer the case. But over here, Team Secret, they have been defending their shack for some time. Can they do it? Up against Paraboy, tossing a molly right into the smokes. 3 elim points on Paraboy. M4, it is locked, it is loaded, it is ready to go. Paraboy up close and personal. You gotta watch out for him. He's gonna go for that spray down. He's gonna get one, but traded on from Jumper. But Order right behind him with the support with the UMP. Can we clutch it out, Order? Oh, he's trying his best to clutch it out, but Order as well is taking things a little cautiously. He does know that's the only man left alive for Team Secret. Jumper still able to wipe Nova out of existence, and somehow Jumper is able to keep the defense alive. 7 elim points right now on Team Secret. We can see them in 13th position. They are trying to climb up this leaderboard. Jumper, the last one alive. Little solo battle out there against D. Xavier Lamborghini. Meanwhile, all that chaos in the north, guess who's up? 6-8. The only team with 4 up here late game. Oh, look at the spread as well. Yu Yang all the way on the left and the rest 3 players on the right just moving on the edge lines. I don't know if I like this spread though. If Yu Yang's position gets compromised, that means that 6-8 are going to be in huge trouble. But still, this might just work out if Yu Yang plays this out really safe and keeps his position anonymous. Lamborghini gets spotted. He should be taken care of in no time. And yes, Yu Yang takes care of him. But that means his position now has been revealed to the player of H2G. And if I'm not wrong, it's 7. But here we go. 6-8 moving quite close to Infinity. They have no clue that Newsy is right in the front, but Jumper gets taken care of by Yu Yang, and there we go. That's quite an instrumental play by them. Yu Yang's position, yes, if they do get called out there, you have to assume they're not going to be able to get picked up, but Yu Yang is just putting in the work from that angle, and, well, it's a 3v1. 3v1, 7. Has the ghillie suit. Position being compromised, sides being locked onto him. 7 still trying his best to deal a lot of damage. Yu Yang taken down quite low, but the rest 2 players are looking pretty healthy. Yu Yang staying in the back. Decides not to heal this time, but 6-8, 33T moves in forward, and he's going to seal the deal. And just like that, 6-8 are going to be your winners in the second game. Wow, what a Miramar match right there. The mid to late game, nothing but action. 6-8. Let's go. Represent the China, getting that winner chicken dinner here this game. Now, I got to go back though. I know we are talking about them a lot, but Nova Esports, they had a duo, and they are still, in my opinion, able to really put that wrench in the plan of Team Secret, who, quite honestly, they were looking really good this match. And hey, they still did a good job, but you cannot discount if Nova have 1 player alive, if they have 2 players alive, it's a full squad. Order alone is a team to themselves here, so it is something else. Ladies and gentlemen, let's hear what the panel has to say about that game. All right, Dave, getting fancy with the analysis desk with a panel. I'm curious to see what you come up with next here. But 6-8, maybe they're tired of seeing their Chinese brethren team getting victories for themselves or doing well. They want to get some limelight on themselves. Pull up a victory here, very strong indeed. Helps move them up the rankings. And that's a good start for a team who's looking to just edge forward, get a couple of extra hundreds of thousands of dollars in their pocket here. Yeah, I think even Dalshi, we checked the stats, right? He was, what was it, 3rd top fragger in lobby at the start of the day. So it's actually really impressive. They've been pretty silent, but we got the same issue we have, for example, with Next Ray, where it was only Dalshi really doing a lot of the heavy lifting for the team. Here, actually going for a strong position that typically Nova hold on to with that very famous 2-2 split towards Hacienda del Patron. Execution really well, waited for the late game, and just started pushing out when there was just less numbers. Really good execution. And something that we saw, it's 2nd place, 3rd place, and 4th place teams that were all out before top 10, which is kind of allowing these teams that weren't really in contention before, they could try to make a push. I mean, we saw how much ST was able to push up with that last chicken dinner. They could make a push for those top 3 situations. You can see Nova here, 6th place. Yes, that's not great, but they still get 6 and 7 more points ahead of the teams we're trying to catch. And this point gap continues to grow. This goalpost is continuing to be moved.
And obviously part of that is due to the man on your screen here, Paraboy, the MVP yet again. Is this the second MVP in a row out of him? He's like, you know what, Order? Get out of here. MVP's mine, son. I'm the star player on this team. I mean, you know that blue, those blue lines, that's Order, okay? He's still pretty far when it comes to elimination. So, though in terms of overall damage, he's still really high coming out from him. The blue one. The blue one Blue there. line? Yeah, the blue line. That's Order. And you know that that's going to still require a really huge day from Paraboy if he wants to overtake it. It's $10,000, you know, it's a pretty good vacation. Make to a hotel. Get pampered, you know, you'll be fine. Yeah, get on to the Fairmont Hotel over in Singapore. You can see here the points they do have, though. They have a 62-point lead. 62. I think I said 72 point is I was expecting at the end of the day here. I might go back and revisit this because I don't think I'm going to be right anymore. I'm actually cool with my 65, actually. I'm not going to be too far. But the really interesting point in this game that you've got to keep in mind is that all the teams that we're looking at here, which are going to be Na'Vi, Nima Galaxy, and Next Ruya, are currently in 2nd, 3rd, and 4th, respectively. They all went out before top 10. And while Nova was still able to get a decent amount of points, so that gap is once again increasing. We're starting to get to the point where there's no comeback from this Can we give a special shout out to D Xavier here in 5th place? 0 chicken dinners. Every team around has one, and yet they're still in 5th. That's pretty damn good here, especially for the team coming from Vietnam. I mean, if we compare them to Damwon, they're able to really maintain performance they had in the finals of the league stage in East. That is impressive. I mean, if you look at their placement points, they have more placement points than anybody near them. That means they're being consistent in regards to those placement points. I do want to give another shout out to 628. They were able to jump up to that 6th place, and this is what I was talking about. We've been talking about which team can catch Nova, right? We might be getting to that point now where some of these teams are definitely not going to be able to catch them, and it becomes an issue of some of the other teams that were in 10th place, like 628 was before this match. They're now put themselves within 13 points of 2nd place. And if I'm not mistaken, that is a big gap difference in prize pool and something that a lot of teams are going to be keeping an eye on. I was going to say, Max, you can calculate the prize difference, but I No, don't want to put them on the spot. The thing is, right, if you're talking about Nova here and the point that they have, pretty much, as long as they just don't go out with 0 points, they're going to win. That's what they're currently sitting Yeah. at. I would even go to say, like, we're already halfway done with the day. I would say this next We're not game... halfway done yet. That was we're not, yeah, I know, but we're almost there. Okay, That's the thing. that's true. If this next Sanal game, we do not see any of the teams that are in top 4 below Nova get a good result and Nova having a mid-lane or even bad game, I think it'll be over. I don't think you can close that gap already. It seems almost infeasible here. I think they'll just get closer to my point gap difference. 100 points. That's what I thought it was probably going to be. They're looking to do it. And once again, the craziest part is that Nova still has a fight between themselves. You have Paraboy, and then you have Order, and both of them are trying to clash against each other and see who's going to take that MVP. Yeah, and the thing is a lot of pride to have as well. If you can beat Paraboyness, I think for Order, like that'd be phenomenal. And we saw a couple teams contesting it. We saw Order having the big lead going into the day, but again, Paraboy's continuing to show up here. And if Paraboy, not only is he playing to win, but he's playing to be the MVP. I feel scared for every other team out there. I have the impression we're going to start seeing Order and Paraboy drop different locations. Like, they're hot dropping each other right now, just contesting early frags. They're just going to like, okay, we're going to take one team each. We'll try and get all the eliminations, but they're fighting for that MVP spot. They're not even playing, they don't even need to play afraid. I mean, Paraboy almost took Secret on by himself. Like, that's how much confidence they have individually to win fights. They're taking fights uphill, which is already tough to do. Against the teams, the caliber of teams we have, they just have no fear. It was Team Secret. I think we have to give a shout out to Jumper from Team Secret because even though we haven't really spoken to Team Secret or seen anything from them, Jumper being able to beat the 2 players, right, that are truly in that contention for MVP, that's going to be a confidence boost for this player. And I mean, these teams are still fighting it out for some prize pool, so hopefully we'll see a little bit different. I'm not going to say Team Secret's going to go all the way to top 3. That's not what I'm saying. But it could be maybe a confidence boost to push them to top 10. Yeah, I think it could definitely be happening. Though, if I do have to bring potentially a negative aspect to the table on that play, I think that Nova could have played that a little bit better on that push onto Jumper. They could have gone for a 2-man push at the same time, but they just went in one by one. Are we nitpicking right now? Yeah, I am nitpicking. I'm trying to find the small little details. Like, I can go negatively on that aspect. Otherwise, it's 99% good gameplay. Paraboy should definitely wait for Order, but they're currently fighting for that MVP, so he wanted to get those elims first. I'll get it first. Yeah, we're not happy with them being 60 points ahead. They need to be 160 points ahead, everyone. Okay. But the fact is, I mean, they still technically can improve, but obviously we have to be hesitant to, I'd say, to critique them because we don't know the columns going on within the team. We don't know, like, maybe they're feeling really relaxed, right? Maybe they did get pampered at the Fairmont.
maybe they don't have to worry too much, and they're not playing in that kind of situation where, all right, we need to catch up to this team to win. No, they're just like, as long as we just don't die, we're going to win this whole thing. I can already go to my bank, cash that check right now. I'm already thinking about what do I want to buy, some new shoes, maybe a nice car, maybe want to help Max out and get him some skins finally in the game. Who knows? Yes. Oh, I thought you were going to go somewhere completely different with that. But We're not sending Max to Turkey, no. Oh, okay. I completely agree with you in regards to Nova, just playing a little bit more relaxed. I'm not going to lie, Max. I would love to see Oder and Paraboy drop in different locations. And I think what you were trying to go for is mostly Nova trying to do a four corners. Are they that confident? Are they that comfortable right now that they can just try to have a player, each player just land in a different spot just for fun? Maybe the last match. Maybe the last few games, just for the memes. And then Paraboy's going to land like near Order and like just try to nade him down. You know? So this is my MVP now. Get out of here. I would just like them to try and nade each other. Like, no, get out. That's what we're getting at too now. They're trying to down each other before they get any aliens. Yeah, Order, take that car and run off. Ba, 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 ba. Okay. Well, we're seeing 6-8 here in the rotations they made. Obviously, they closed out the victory. What do you want to say about 6-8's victory? Did it look easy? Look hard? Did they have to fight for it? I mean, still getting the eliminations they got. I think it was like 27 points, I think. Or no, it was 25, right? Because they got 10 eliminations. It was a very strong game, but unfortunately, this team has just been a little bit quiet, but they are moving up the leaderboards. They are securing themselves better positions, and more importantly, they're showing the world that there's not only one Chinese team that's better than you in the likes of Nova. There's two. Yeah, and this is the Chinese team that doesn't have this type of experience in PMGC, right? So maybe you need a little bit more time to get into the swing of things. And here, actually, it was a very slow-paced game very early on in this match. I think early to mid-game, not much was really happening for them. The moment they had control south, start going uphill, start taking control, going for the wide splits, and make sure that no one has a living opportunity or chance to take that fight against you. So 6-8, this is the type of finishes that I'd love to see from them. I wish I could see it just a little bit more. I mean, we might be able to, right? This is a team that already has 2 chicken dinners. They still have, 4 more games to play. There could be a chance that they're going to see that prize pool getting bigger and bigger. Thanks, my math was great. They're going to see that prize pool getting bigger and bigger as they move up, and they might start changing, they might start adjusting, especially with some of the other teams. I got to call one out. I got to call out Alpha 7. I mean, Alpha 7 right now, they're having to... They might not even make it to top 10. Yeah, do Brazil not making it to top 10. And when we talk about that, like, remember what we were saying with Godlike, how we were hyping up Godlike, okay, maybe they're going to be able to make it to top 10. Alpha 7 might be putting themselves in a situation where they might not make it to top 10. I feel like for maybe Alpha 7, and I mean, this can sound kind of negative, but it's not really entailed that way. I think being in Brazil, sometimes with the performance they've had over the course of the year in PMPL Brazil, it becomes like an echo chamber for them. They kind of think they're the best team in the world, and they kind of have a wake-up call. But speaking of wake-up calls, we're going to head over to Singapore here, and we have an interview with Tixie with Charmaine. Take it away, and let's see what Tixie has to say. Hello from Singapore for the PUBG Mobile Global Championship Grand Finals. I'm Charmaine E, and oh my gosh, I wish you could feel the excitement, the exhilaration. And with me now, we have Navi. We have, of course, Tixie from Navi. Hi. Good to see you. A big hello to all your fans internationally. A few questions for you. The Grand Finals is only 4 matches away from ending, and looking at the standings, you are within striking distance of the championship. With that in mind, what preparations did you make coming into today? Всем привет. У нас осталось последние 4 игры до окончания всего матча. Как вы думаете подготовиться ментально к последним 4 играм? Думаете ли вы поменять стратегию? Нет, мы не планируем менять стратегию. Будем играть также от края, и мы планируем занять топ-1. Не будем смотреть таблицу до последнего матча. На последнем матче посмотрим, и если нужно будет, на кого-то упадем, и, возможно, у нас получится выиграть. Мы рассчитываем на первую, вторую строчку. We are planning to be on the first or the second place. We are not going to look at any tables and the results. We are just focused totally on our games. And we are not going to change any of our strategies. We are on our way. That was actually going to be my next question, which is, after the last match, will you be making changes? So no changes? Yeah. Вы не думаете менять никакие стратегии еще? Нет, мы будем играть так же, как и играли все 12 матчей. We will be playing the same as our previous 12 games. All right, sounds good. Final question, because I know you want to get back to it. Which team do you think will pose the greatest threat to your chances today? Какая команда самая большая проблема для вашей команды? Как вы думаете?
Думаю, что Nova, они на протяжении турнира очень стабильно отыгрывают и отыгрывают до последнего матча. Они также играли очень стабильно на лиге, но у них там чуть-чуть не пошло, они заняли 4-ю или 5-ю позицию. As it's seen, the Nova, they are playing very stabilized and on their way. They were also the first in their previous game, but unfortunately they take the first place on the previous leagues. But here they are going more better and stabilized. All right, well, all the best of luck from all of us here in Singapore. Otherwise, sending all the love back to the analyst desk. Thank you so much for joining us here in Singapore. We have Titsi from Navi. Oh, it's just me. Okay, hey, wait, that's where they're Why are you waving waving this alone, flag? Jason? Because contractually obligated time here to be on air. It's actually great to hear about Tixie and obviously get to hear that Nova is their biggest threat, but to be fair, I think we kind of assumed it. You okay? Yeah. Okay. Sorry, I was just thinking about Singapore. And I know what you're thinking about. You're thinking about OnePlus, actually. Funny enough, Seven, it's actually our sponsor here at BMGC. You guys can unlock victory with the OnePlus 9 Pro with its ultra smooth gaming and its 90 FPS. And you guys never have to settle when using a OnePlus. And obviously, that's what Nova are using here because they're decimating everyone out there. And Paraboy in particular is like, I'm not settling for second place MVP. He's going to unlock victory, and he's going to take it himself. Yes. I do miss having you and Claris there staring at the phone next to me, and then Claris doing like weird faces as well. But also big shout out to Singtel here, our carrier over in Singapore, providing ultra high speed network with 2 times lower latency. They're helping the event out as well. It's a big sponsor. What was that? I don't know, speed? I don't know. Are you the Flash? Yeah, I was trying. All right, well, we'll zip on out of here. We'll quickly head on over to a break while we see what other characters and superheroes Max can pretend to be. And we'll see you guys in just a few moments here. Your hands are in the way, Max, for match 3. Bismillahirrahmanirrahim. Eddie, are you okay? Yeah, take the egg. You can take the egg. Yay! Oh! Can you see how many flowers are there on mine? Go! Yay! Yay! Bungalow Pongal! Bungalow Pongal! Bungalow Pongal! Semua! Hi bro. Welcome to Pongal. Thank you.
PMGC 2021 Grand Finals. Grand Finals. Grand Finals. To glory. आज नहुनुपर्ने यार We are back and about to hit the halfway point here at PMGC 2021, and it is our final day here at the Grand Finals. And at the end of the day, we're going to have Grand Finals हो कहाँ आज final हैन in the world, and they're going to be Grand Final भनिरहेको छ $5 million richer. And at the moment, Nova are currently sitting in that position to do exactly that. I got Maxman, Several Worlds Gaming as well here on the desk to join me, Jason Kaplan, as we break all this down. And so far, Nova have looked just हैन Grand Finale अनि Grand Finale भनिरा Grand Finale teams start to stand up here. Stalwart Esports in match number 1. We saw 6-8 here in match number 2. So we had 2 STE teams taking victories. Will it be a third? Well, only time will tell here. But we talked about marriage, right? Not in the terms of proposing and getting engaged to the love of your life. We're talking about the marriage between elimination points and placement. अनि टोटल 18 म्याच मात्र हुन्छ त अब यो पछि पनि म्याच हुन्छ They definitely are. I mean, Max, this is something that we've been asking. And another thing I want to mention, this team it's scary in a way that they just keep on improving every year. If I remember last year. Say what now? I think that's been a little bit right, because if that's in the on Sandhawk, sorry. तिमीले माम खायौ This is on Sandhawk only. That is actually insane, noticing because we've only had 2 Sandhawks being played, and I didn't realize Nova was doing that well in ranking points. That's actually really scary, right? Because I mentioned it. This is the game where I'm going to say that they are... The chances for some of the teams in our top 4 is going to be gone after this game. And the fact that Na'Vi are not able to perform that well, we saw like 1 average placement point on this map. If they go out early here and Nova have another good performance with an average placement point for Nova of, what was it, 10.5 there? Yep. It might be GG for Na'Vi to get to that first place. Still, of course, there's that fight and that battle for second place, but first place is just going to be lost in this game. So we need to see them try and get a good result here, which they haven't been able to do just yet. Not even just from Na'Vi. I want to see a better result from just all of those second to fourth place teams, because now they're giving that, we were mentioning it earlier, they're giving a chance for other teams to just... I'm going to put it out there. I think we're going to start seeing some of the teams that we really haven't seen in second, third, and fourth place. I think they're going to start getting replaced. We haven't really seen Next Ruya in such a long time. We haven't talked about that. लाइभहरु एन्ड गरिवरी गएको कि मतलब के गरेर Yesterday slowed down so much that it affected Next Ruya. ए त भइहाल्छ नि खाना खाँदै Answer that no, Next Ruya is not able to perform if Frozen is not performing. We need to see Frozen. केटाको पनि च्याट हेर्नु पर्ने छ यार If they want to maintain themselves within that top 3 situation. Is that your team to watch, Next Ruya? It's not. Oh, it's mine. Well, that's my. Chala यो चाहिँ PUBG नै खेलेको छ थाहा छैन म. Oh, we can make 7 jealous. No, I'm not doing that with you. I'm just kidding. I'm just thinking at the end of the day yesterday. I'll just go back to Turkey. I get for me and you, Next Ruya. Now, Max, I'll say why I'm saying Next Ruya. वाह यिनीहरु पुरा They have not looked good, and they could be slipping from second to third. वाह ओपी गाना यस्तो खतरा गीत गाइदिरहेछ यार तिमी मलाई थाहा नै थिएन यार hundreds of thousands. थाहा नै थिएन यस्तो बवाल गीत गाइदिन्छ यार तिमी. Normally I would come in with my own point, but it's actually the same thing as 7. We got the same reason behind it, because they've just not been really performing today, and we need to see them get back into it. बिल्ला उडाको हैन यार बिल्ला उडाको हैन. Galaxy, they need to get good result, because now it's starting to get to a point where lead is going to be extremely hard to close in the next 3 games that will remain of this Sandhawk. हैन का एउटा कुरो मेरो यहाँ युट्युबमा पनि एउटा भ्यू हेरिरहेछ फेसबुक पनि एउटा हेरिरहेछ अहिले दुईटा भयो वेलकम को हेर्छ मेरो लाइभमा वेलकम है त यसो कमेन्टमा के च्याट हानौं को हेर्नु म पनि lines of what you guys were saying, it's just a team that just hasn't been performing. Usually in Sandhawk, so far this tournament they have averaged about a 9th place finish and only 4 elims. That is not the stats that we used to see from Alpha 7. Hopefully they'll be able to step it up here. Yesterday they had oh सही भन्यो but then for some reason they decided to play bumper cars. सही भन्यो केटा सही भन्यो. You shouldn't be playing bumper cars, so maybe they'll be able to learn from that and readjust. All right, real quick, I'm going to switch it up on YouTube. Predictions of who's going to win this match.
Next Rhea. हैन हामी Nova. Okay, I mean, you have the realistic तर आज answer, I can pretty much agree with you कस्तो there, though, and I hope for Infinity, but you know one thing I don't त्यति have खासै hope टाइम for बिते जस्तो लागेन भर्खर next आधा option is 1 gonna घन्टा र be आधा Session धेरैवटा म्याच बाँकी and हुनुपर्ने यार Necro अहिले त once again. म The कुरै cover बुझिरहेको from छैन the blue and the story टेकअप on टेकअप Session. सानोको टेकअप ए बबाल त सानोको टेकअप भइसक्यो गाइज ओके हैन हाम्रो टिमहरु यहाँ एकदम उडिरहेछन् प्लेनमा ओए कपिराइट लाग्छ ले सम्लेर सुन है यहाँ बाहिर चाहिँ आवाज नआओस् ओके खतरा म्याच हैन यहाँ हाम्रो टिमहरु सब झरिसके But I'm from the west side, man. West side, best side. So I gotta go. In 7, hey, we heard. ओए हो र आमामा सही भनेको थियो यार We gotta represent, man. Alpha 7. टप 10 मा आइसक्यो मतलब You gotta show up, and honestly, after that play, I hope they just ignore. भाग अनि अहिले भर्खर #8 मा भनेको हैन मलाई #8 हेराइरहेछ त यार With the bigger picture on their mind, and that's getting that winner chicken dinner. Right now, it is critical for teams Match who are 15 not later. performing well. Match त हेरे Tilted. So let's see what will happen. पानीको पानीको We're officially halfway पानीको done with पानी the day. पानीको पानी यार यो त मैं पानी हो गई भइरहेछ त के हो यार ओए फाइट परिसक्यो यार लोल गोडल ल गोडलको क्लच गट गयो त यार नो 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 बेबी नो confirming the kill, but yeah, what I really noticed what's really cool was the circle. ओ रिभाइभ गर्दिरा Divided equally on those 3 islands, and I do want to see where the circle is going to be shifting now. If the circle shifts on top floor, ए तिम्रो नेटवर्क Duet and Navi are going to be तिम्रो having a आवाज huge advantage inside the game, and they can try and hold on ल पुस हान्दैछ हाम्रो हैन गडलको टिमबाट दुई जना नियो र the circle shifts on the right side. को रे अर्को यो But esports are जीगड hell of a ruckus. So I do गडलबाट where the circle is going to be shifting, but now we have Z-God closing in some distance on Fenerbahce. Yeah, it looks like looking for some revenge. Uh, Looking to possibly take out Fenerbahce. मलाई के लाग्दैछ मलाई के लागेछ इनहरु बीजीएमआई खेलेर सायद इनलाई यो PUBG ग्लोबल खेल्न अप्ठ्यारो भएको हो कि You know, they're aware of what's about to happen. We see them prone. They got the Vector. They got the Uzi. So they got some weapons that are really good up close and personal. So really, if they bolt through his windows, they're gonna need to be careful. Yeah, क्लच गटको अर्को पनि गयो क्लच गटको अर्को पनि नक गयो अर्को पनि नक भयो क्लच गटको already going to be concluded. That means after 3 games, champion will be announced. And for now, it's pretty clear who's probably going to be it. But yeah, Godel trying to push against Fenerbahce, and Fenerbahce holding their nerves with the guns. They're not really giving their position away just like that. Godel, on the other hand, though, they're getting impatient and they do want to take him out. They do smell the blood. ओपी गड नियोले निकाल्छ होला यार नियोले Went a little bit in the back. Z-God, though, does realize both the players are just ओपी finds an opening. Grabillion gets taken out. Z-God push comes in through, but runs out of घुस हान बे and he will get some. ओपी ल ताली Oh, easily able to take care of these 2 players. Punch him Is he out. going to punch him out? Is he going to punch him out? Punch him out. He's gonna No, try no, to he's punch not. him out. पन्च हान्दैछ यार मजाक किन गरेको गड जोनाथन के गर्दैछ Because that duo, they're pretty much by themselves. Because Fenerbahce, their other 2 एफबी गरको टिम आएर उडाइदियो भने छैन फेरि एफबी को टिम आउँदैछ सायद एफबी को कति जना भयो 2 जना So they're just so far away that it's just impossible to provide that support. And it looks like one of them actually tried to swim across the channel to get there in time. And PUBG को वर्ल्ड कप भइरहेछ tagged and bagged. So Knox bomb. एफबी को त एफबी आउँदैन पॉइंट निकाल्न खोज्छ टप 10 मा आउन खोज्छ फिक्स टप 10 मा Turn the tide when it comes to placement जस 1 पॉइंट भयो भने निकाल्नु भन्छ सोच्छ And you know where I'm going with this. You can heal. You can get all the meds. So सात पितो केटेको पुरा सात पुत्लो उड्छ हो पुरा यो मान्छेको त खेल्दाखेरि हेर्दाखेरि पनि यसको यस्तो छ अनि ओनामी तिम्रो के नेटवर्क and I am planning $15 लाख तिम्रो के नेटवर्क राम्रो छैन क्या हो ओनामी get those 6 placement points, those 8 placement points, and अटकी आइरहेछ तिम्रो साउन्ड in general when we look at the overall leaderboard. मेरोमा किन हाई अबिरल वेलकम त्यस्तो किन सुनेको त मेरो त फेरि नेटवर्क राम्रो तिम्रो एकदम राम्रो तिम्रो आवाज राम्रो आइरहेछ ओनामीको चाहिँ अट्केर आइरहेछ किन got taken out quite early, so don't really know if that was a good decision or not, but एनआरएस को टिमले हेराउँदैछ अहिले players alive, Fenerbahce with only 1, and then you have Godlike with 3 players now. एफबी को गड न्यू So excited to see Godlike
But still, as I mentioned, in the end of the day, even if they're top 10, that's going to be quite huge. स्यानरको पनि सुरुङ रहेछ आज भर्खर थाहा पाएँ यार मैले जिन्दगीमा थाहा थिएन अहिलेसम्म मलाई कसम थाहा थिएन यार Cooking a grenade, tossing a grenade. Oh, little shy नेट of the नेट mark नेट here. नेट हान्दैछ यार Rivals यसमा turtling up right For here, real, anticipating for a potential push from Alpha 7. forever ओपी नेट खतरनाक नेट हान्नु यार यसले A7 ले खतरा A7 को ए तिम्रो डिले छ अलि 2x गर ओइ 2x गर तिम्रो डिले छ अर्जुन डिले छ तिम्रो अघि नक गरेको तिमी अहिले भन्दैछ यार नेट पे नेट दिइरहेछ पुरा एकदम कोराई कोरा चारोतर्फमा छिरिहरि रिभाइभ दिँदैछ हाम्रो हैन फोरलको टिमले ठिक छ ठिक छ ठिक छ गाइस किन फल ब्याक आने Yeah, Senatech's really far from the A7 also not able to provide that support similar to what we saw from Fenerbahce. अनि यिनीहरुले किन फल ब्याक लिएको थियो Push. So I think after last game's Dam failed attempt to claim that compound for themselves, they realized, okay, we do not want to risk it. Currently 10th place overall. केटा 18 प्लस यार बोला न बोला यार धुक्क भएर बोला भन्छु केटाहरु बोल्दै बोल्दैन नि 18 प्लस लेको त मतलबै भएन त यार These are how those two players got taken out for Furious Gaming. Unfortunate start for them. But again, hey, you are in a public place, okay. Wait, तिमी के लाइभ गरिरा छैनौ? Dave, I really do feel like the next 3 games that are about to come, they're going to be really interesting because I feel like the next 3 games this is तिमी लाइभ गरिरा छैनौ? Start playing spoilers. Oh, it's going to be अनि मतलब एन्ड गर्दिएको लाइभ. Xavier. Okay. Okay. मुला अनि अहिलेसम्म तिमी मतलब यसको लाइभै गरेका थिनौ like S2G we're all prone. हे लल केटा यार मेरो लागि बसिरहेछ यार Look at this. SPG are setting up a trap and ल OP2X को स्प्रे 4X को स्प्रे एक जना नक छ DXR को ठीकै छ केटा हो ठीकै छ बबाल छ DXL को ल्याम्बोर्गिनी अरे नामै ल्याम्बोर्गिनी राख्दैको छ यार खतरा फ्यान रहेछ ल्याम्बोर्गिनी को त As the speed of Lamborghini just falling back. Oh, dude. तिमी कहाँ छ Punch out. Punch out. Yes. So real quick, I want to मैले त अघि दुईचोटी पाइसके 2x. Man push from Alpha 7. I feel like if they would have, and I'm going to keep talking about it a little bit. I feel like if they would have wiped out. Oh, सही भन्यो त्यो आफै हुनु नि. Yeah. I feel like if they would have. Previous match हेर बा क्लच निकालेको DWZ ले. OP. Because they did not win that fight. Previous match. त्यही त And that's why we see low SP मा हान्दै not playing that aggressive play style that we're used to seeing from Alpha 7, at least from the West League. तिम्रो ओनामीको डिले छ ओनामी 2x पारा Junie too. Junie juked them from the second story, popped out the window and vaulted through instead of going down the stairwell. Junie was more kind of like the distraction and Sung was just set up for मेरो MB पनि सकेछ 3000 MB. So Dear customer, you have less than 100 MB अरे lol. And Sung from the back just striking and taking each and every single player down single-handedly. But yeah, now Navi, another one of those teams, as I mentioned. अहिले Navi लिइरहेको छ 3x तान्दै अहिले हटाइसक्यो 3x. Where the next circle shift is going to be heading towards. If he goes on the top left island, as I mentioned, 6 to 8 are going to be in a huge advantage. Huge, man. Huge. And Navi getting a lot of spotlight. हेरिसक्यो एनेक्स मेरोमा त्यही अहिले 3x तान्दैछ अहिले बगीलाई दियो DWX लाई तान्दैछ DW के नाम हो being so consistent, you know, even if they get one or two minutes taken out here early to mid game, they still are just हुन्छ केही छैन अलिअलि अबिरल दिवाडी अरे अरे फेसबुकमा कसैले पनि केही भनेको छैन यार No, without a doubt, man. It's like all the time they're able to get the stellar positioning inside the game. At this point, I just want to know what exactly goes on. Well, like, what kind of comms do they do? Team comms and everything. जोन यता हाम्रो पिङ टिमको एउटा पिङ्की टिम क्वालिटी घटेको हो मेरो You're just better. You're better. You're better. And they're telling Order that in his ear, and Order's just pushing up with the grenade. Order got a double grenade onto Team Secret last game that we saw. Now, of course, Jumper was able to defend that shack phenomenally, really clutching it out. But
those are the team ओपी बोलते अर्जुनको गडेल You got this. #16 नै एफबी लाई ओपी ल Well, getting into this game next Ria. I जस believe the पोइन्ट निकाल्यो यार यसपालि 4 पोइन्ट निकालेको छ यार गडेल चिकन गर्यो भने एकैचोटी टप 10 मा जान थाल्छ है अब Any thoughts on जान्छ होला नि perspective? अनि 15 प्लस अनि 4 15 factor seems kind of like अनि किल गरेको छ त अनि यहाँ 4 + 4 छ अनि तिम्रो 15 प्लस आयो भने तिम्रो 16 teams, and this game's going to mean quite a lot because as I mentioned, लल भयो त्यस्तोमा केही चान्स छैन 20 किल हान्छ बापरे 20 किल concluded. सपनामा हान्छ That means the सपनामा next 3 games are going to be complete chaos and insanity. So this game is के अरे next Ria. They can either go for those heal battles as you like to mention it. and युट्युब then मा either फेसबुकको लिंक dominate कसरी दिनु or मेरोमा do कपी that and पेस्ट go हान्देऊ for त यार those मैले key and भेट्दै save भेटिन points while the other 3 players are just म trying to पिन हान्दिन्छु gain ओनामी those, elimination points. Yeah, Jimmy on the scooter. That's one player you need to watch. गडेल के भयो अरे Jimmy गडेल आउट अफ जोन छ त के हो That takes Jimmy That's to like deadly. that next level. Yeah, that is deadly. I would not What is this? anywhere near Jimmy on a scooter. Talking about the La, heal la, la, strats, la. well, maybe Enigma Galaxy, maybe Godlike. You know, maybe those two teams. I'm pointing them out because they Maybe, are all maybe three गर्दैछ, younger and maybe. out still looking for some additional bets, in my opinion. And these are teams that we might see them actually get this heal going, but let's see. This is going to be an indicator. Will Jonathan? अगाडि if गडेलको Jonathan जोनाथन does छ not take अगाडि shots at me, गयो 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 हानु अब 6 एस को स्प्रे ओपी ओए के गरेको okay, well, position ओपी बोलते बेटे Moody up there on the high ground. लल Yes, Jonathan was फिनिश turned on and taken out. So I don't know if that was फिनिश गरिदिए गडेलको जोनाथनलाई Turns around and slaps him right अर्जुन in the कता face. गयो अर्जुन पागल भइसक्यो होला Now, free और still, कस्तो that's फेरि like Jonathan गडेलले able to चाहिँ at least त्यसले get क्या one man जोनाथनले out. अगाडि पुस Separation from गरिदिइहालेको Godlike. Not a big fan of that. Neo again separate out from Clutch from Z God. सपोर्ट लिएको होइन भनेको मात्र Kinda unhappy about that. मिस्टेक But भनेको yeah, क्या Z God was able to wipe, अब यता के छ Fenerbahce out WG को out of फरेस्ट छ existence. उता Again, एनभी they still have एनभी को 4 टिम छ points एनभी को on छ the table. एनबीटी एनबी किङ And they can try and go for a एनबी little bit of survival game as well. रिएक्ट if they तान्दै हाम्रो बबाल do wanna तरिकाले have more points on their hands. आइफोनमा As I खेल्दैछन् यार mentioned, the goal is top 10. आइफोन अर्जुन हाम्रो यतिको अर्जुनलाई एकदम खुसीको खबर दिने हो I definitely feel like Jonathan could have let that one slide and just focus on getting these placement points. एनजिएसको टिम पनि आउट अफ जोन छ गडलको टिम पनि एउटा आउट अफ जोन छ गडनियो कता छ I don't know. I mean, एनजिएक्स एनजिएक्सको टिम लल the map that you can definitely 4x खतरा स्प्रे एनजिएक्सको win, गडलतिर clear that. खोज्दैछन् कता छ Yeah, झन्डैले Savannah is भेटेन definitely one of those ल ठिक games छ where गाडीले टाप they हान्दैछन् try and केटाहरू go for those kind of shenanigans, टाप but still, हान्दै Enigma Galaxy बगी लिएर haven't टाप हान्दै rotated inside the zone yet. They're one of those teams that are going to take कुन कुन टिम जोन भइरहेछ हौ pretty late. Have all गडलको the players नियो live. Again, बाहिर I'm छ pretty sure Enigma Galaxy has गडलको to be one of those जी teams that are gonna be गडल going जी for those गड heal battles. And look at अनि that, they got the एनजिएक्स pickup को on free. सबैजना बाहिर So छ those shots were for nothing. Those shots were for nothing. गाडल Next zone goes up though, so talk about being for something. यिनीहरू कहाँ छन् यार यो एनजिएसको टिम कति टाढा छ यार All the way up there. जोनमा त अति टाढा छ Infinity, एनजिएस strong position right now. This game. एफएक्सजीले खतरा दियो यार 6-8, one man gets caught. गयो 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 अलिकतिले गएन यार गयो फिक्स फिक्स Moves out from cover and Scream is going to capitalize onto it and now is looking to confirm the kill. अगाडि छ पानीमा छ पानीमा छ पानीमा छ पानीमा सबै एफजिएक्स कता गयो लल भाग्यो सब त Scream instantly backs off, not being a little greedy. ए Too कभर greedy in फायर that situation. गडलको गयो त Yeah, जोनाथन गयो त they only have 2 players to work with, so at this point, it's either a do or die situation. गडलको or गयो just त try and तिम्रो play it safe. अर्जुन ए गएछ केटा केटा त दुखिए खबर सुनाम भनेको Silas Pugh. खै मिस्टर ओनामी डट अरे फेरि डट नलेख न यार उता लेख न मेरो फेसबुकको लिङ्क यहाँ पठाइदेऊ न म सेयरै गर्न आएन क्या लाइभबाट कसरी सेयर गर्ने भनेर Cruising over this bridge. They're going to लाइभबाट be कसरी towards सेयर the गर्ने south here. Not in the play zone, so they're looking to Oh. reposition हुन्छ यार, BQ though. हुन्छ। Yep, looking for Trigger them, discipline. waiting for them to go for that swim. Once when they're in the water, easy pickings, and looks like Mikyu's going to wait for at least 2 of the members. नाभीको to be in the टिमले water उडाउँछ here. होला क्या ए He's नाभीको also टिम providing छ support यता for his teammates who are currently डिडब्लुजी swimming across the डिडब्लुजी channel as होइन well. So they डिडब्लुजी are नै हो नि playing a crucial role त्यही छ to the DWG को success टिम of the trio trying to make it पानीको away फाइट here. पर्छ यार Yeah, Meku is like just staying in the back. If there's a little हेरो threat, कि he's गयो getting a lot of यिनीहरू visual info for the एनिमीले team. हेऱ्यो कि यिनीहरू So गयो now the फिक्स team knows there's another team route on the right side, so they can always try and play a little safe from that. ओ भाइ
a proactive nature helps them quite a lot in कभर these फायर situations. दिदैछ हाम्रो First नाभिको round एउटाले हैन we do have Meku from the back as ओ well, trying his best to make it सब hurt. सब 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 Matic in the सब close. नक Forrest gets spotted from the back, and he's taking a lot of shots at his 4 rivals knocking on doors of Down 1 Gaming. के म्याच भइरहेको Maddox छ still in the water, man. He doesn't want to pop up. He doesn't want to pop up. He can't pop up because once when he goes on the shorelines, he might get spotted. And all those gunshots ringing on out now for rivals. रिभाइभ गर्न भयो रिभाइभ गर्न एबीको टिम रिभाइभ गर्न 4 rivals, yeah, as you mentioned, they joined a third party. Actually, 4 rivals has huge high ground over here in this fight. Navi, though, still a little safe. ए हुन्छ हुन्छ काम सकाउ न केही छैन Unfallen man. इम्पोर्टेन्ट काम गर्नु पर्यो सकाउ Down 1 Gaming still has another one man Stream alive EPS on the right side. And video Navi, I bit feel rate like it's अरे not gonna be a FPS huge threat for Navi. 57 Navi, audio of bit course, rate as I mentioned, 162 they're tied सब with बन्द Vex रहेछ Rio. They फेसबुकमा already have 2 points on their pockets, so that means Navi are now in second place officially. But still, they will need to try and maintain it, gaining a lot of points inside this game. सेयर गर्ने वाला यसमा हाल्दा पिन गरिदिन्छु त्यहाँ लेखेर हाल है मतलब फेसबुकमा पनि लाइभ भइरहेछ भनेर पेजमा अहिले लाइभै गरेको छैन पेजमा लाइभ नगर्नुको अर्थ भ्युवर छैन किन गर्नु पछि पेजमा गरौँ न केही just won after that engagement with Navi. So, gotta say, Navi definitely coming out on top of that one. Next zone does go up, though, just touching a smidge of paradise. And Infinity all the way up there to the north, a huge position for them. Yeah, Infinity definitely having a huge position. हुँदैन यार ट्राई गरेको मैले पेजमा लाइभ गर्दा पहिला अडियन्स त होस् यार अनि नै पेजतिर पठाउँछ यार अडियन्स चाहिँ छैन आफ्नो अनि कहाँ पेजतिर जानु अहिले अलि अडियन्स कलेक्सन होस् न फेसबुकबाटै होस् जेबाट होस् पछि छँदै छ नि अडियन्स भएपछि त अब फलो आइहाल्छ नि अडियन्स नभइकन पेजमा गऱ्यो भने के फाइदा That's true, but I'm still looking at the मेरो साथी नै कति छन् अब पबजी खेल्ने कति धेरै छन् पिएमजिसी हेर्ने क्लासमा गफ गरेर हुन्छन् तर फेसबुकमा त गर्दा आएका छैनन् झन् तिमी सोच न त्यसमा गऱ्यो भने त कहाँ आउँछ नि पेजमा getting some solid sight lines and getting a lot of elim points, especially like you mentioned, 6-2-8 now looking to reposition out there on that west side, but over here, one of the main focal points. All the टिमले पोइन्ट उठाउन पाएन यार ल अब वाइफाई लोड लिन थाल्यो मेरो camp to try to save the rotate into zone. I'm counting at least 4 to 5 different teams in this area alone, Necro. ओके अगाडि एसटी को टिम छ अनि 4IBL को टिम छ 4RBL को टिम छ पिच्छमा पडेको छ यार एसटी को टिम नेभी को टीम कता गएको यार आउट अफ जोन किधर जा रहे हो पिच आगे तो देखो आगे देख लो नेवी को टीम आगे तो देख लो यार पीछे डीडब्ल्यूजी ले दुईटा टीम छ यार बेचारा नेवी भाग्दै छ तरो किसिमले मेरो अब अटकिन थाल्यो नेट प्रब्लम हुन थाल्यो अब I'm kind of surprised. 4 rivals kind of running out here in the open. Their backs exposed here. Oh, look at Tixie. Tixie is prepared to take out Fabian. Let's see Tixie with Okay, DWG को टीम पनि गयो एलिमिनेटेड एकजना बाँकी थियो 2 पॉइंट को साथ एनवी को टिमले पनि डाउन गरेछ हाम्रो यहाँ एनआरएक्स को टिमलाई 4x को एकदम खतरा स्प्रे सहित Yeah, and that's bad for next Rio because they're down to just keep up the good work करे ओके हाम्रो निश्चल दाइ वेलकम टु द स्ट्रीम हाम्रो फेसबुक को स्ट्रीम मा हैन धन्यवाद थ्यांक यू एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सोला म खाना खान गएको घर बार नेपाल बिग फ्यान ब्रो ल यार खाना खारा होला छिटो छिटो लोड भइदिन्छ यार लोड नहुने यार त्यो बवाल टाइममा लोड भइदिन्छ यार फोरेक्स को खतरा स्प्रे यार डाउन गर्दै सके दुईजना डाउन जोन बाहिर भित्र फाइट परिरहेछ यार एउटा टिम जोन बाहिर छ एउटा टिम जोन भित्र छ #14 हाम्रो कुन टिम डाउन भयो एनआरएक्स को टिम पनि डाउन नाभी को टिम पनि डाउन गाह्रो छ यार नाभी को टिम ओके एनवी को टिमबाट एकजना मात्र बाँकी रहेछ जोनमा छन् बाँच्छन् कि बाँच्दैनन् छैन 4BL को टिममा पनि जोन बाहिर
over inside the zone NGS over को here, टिमले but they will खायो use ST को that. टिमबाट They see दरो the high ground, they will have to move out in the open, and that's where problems are gonna गयो start knocking their NGS को door. टिमले I do see Stalwart Esports as well trying to swipe their के ground गरेको up क्या in के front, गरेको just to try यिनीहरूले and move inside the zone. So हग दिया I रे think बाबा Nick हग Galaxy दिया have 23 first aids. Right. They are in 4th place right now. If they can try to MD move up साकिब and overtake वेलकम टू next माय year, फेसबुक that's लाइव a हाय lot भाई of ओ points भाई going यहाँ their बोलो way. भाई They can बोलो continue भाई to बोलो maintain यार those बोलो बोलो points बोलो moving forward in those next 3 games like you mentioned. So let's go. The heel strat on Sandhawk. That's what I want to see. Enigma Galaxy pulling that one out here. Honestly, हजुर भन I would त like to see a heel battle. Yeah, I mean, for It's going down. consistency के for teams, it's definitely one of the best choices के out के there for भन त के दिएको छु consistency. अरे And Parabol as well is left out in the wall of death, so तिमीले यहाँ फेसबुकको लिङ्क चाहिँ मेरो लाइभ च्याटमा मलाई चिन्यौ घरबार नेपाल चिनिन यार मैले के हुन्छ यार Silas Pew behind this little rock is just getting bombarded down and he's barely surviving on a को हो त मैले चिनिन यार तिमी अरू न ए चिने दाइ अब हाम्रो बनाइदिँदैले भनिदिइहाल्यो नि भान्डा फुटो अरुण दा तपाईँको भान्डा फुटो अरुण दाइको भान्डा फुटो एमडी साकिब वेलकम टु स्ट्रिम बाम बुम हुन्छ यार ओइ नेट हेर न कस्तो बवाल भइरहेछ बाम बुम डेन बुम 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 गरेर नेट Z-God outside the zone, healing himself up, trying his best to make it inside the zone. हेर्दैछ Right, the chances are looking pretty slim. I don't think so. Just moving out on the edges of the zone. मेरोमा अब त 2x पार्नै पर्छ क्या मैले 2x नपारी हुँदै हुँदैन Infinity are going to be having their arms open for Team Secret. कौन है वो इधर से ओपी स्प्रे तिम्रो निराजन दाजु अरे घरबार नेपाल तिम्रो निराजन दाजु भन्नुहुन्छ त ओपी 3x को खतरा ओइ दुईजना नक Able to get those points. And now के अरे including Team Secret. Fredo left with not a lot of HP to work with, and well, the wall of death will take care of him. यो के भएको त मजाक नहुन यार दामी म्याच चलिरहेछ मजाक गरिदिन्छ मेरो मोबाइल पनि फेरि And Infinity, they're looking so good. Look what's happening. Right, Nick Galaxy. 19 first aid. जोनले खाएको आम्मामा के खाएको यार जोनले यो So if they were to get taken on 10th place, that's 1 placement point. But because they utilized the healing strategy, they went from getting only 1 placement point to a guaranteed 12 placement points. ओइ You're crazy, man. कसले जित्छ कसले जित्छ Yeah, 4 teams is definitely really good, right? To keep that consistency factor going. And Rauf with having इन्फिनिक्स को हिड ब्याटल दिरा त्यही त हिल ब्याटल दिराछ है खतरनाक Finally, I'm really happy to see Infinity win this game. Infinix because we had to talk about how Infinity isn't really able to show themselves up. 12 Finally now able to show themselves इन्फिनिक्स को टिम बाकी छ बाकी हैन यो क्या मतलब 1v4 को सिचुएसन छ क्या इन्फिनिटी टिम अगाडि छ यो मान्छे हिल पे हिल दिइरहेछ I'm happy for Enigma Galaxy because I think coming into this game they were 10 वटा बाक with Nexria and अब सक्दैन होला अब गाह्रो छ अब दोस्रो कति बेरसम्म बात छ point place point तीन जना छ उसलाई थाहा This could be the play that gets 600k. That might be able to get $300,000. Like this play alone might have just पुरा हिल ब्याटल दिइरहेछ यो चाहिँ इपिक लाग्यो क्या एक्लै बसेर पुरा क्या हिल दिइरा जोनमा भएको भए फिक्स यसले हिल ब्याटलमा जित्थ्यो जोनमा धेरै टाढा छ क्या अब अलिकता पनि यताउति भयो भने यो प्लेयर जान्छ चारवटा बाँकी छ अब 3वटा मात्र बाँकी छ हिलिङ भने क्या गाह्रो छ कसले जित्छ के लाग्छ नामी तिमीलाई जित्न त थाहा छ उनीहरू इन्फिनिक्सकै टिमले जित्ने इन्फिनिक्सकै टिमले जित्ने होइन सक्यो ल खत्तम टाटा बाई बाई इमोट हान्दै मर्नु नि यार छ्या
200 extra K Set. at the end of the day. So GG's the Infinity. Like you said, they played this one nice too. Yes, they did. मतलब बसेको बसे Chips in their favor towards that जनतिर के जानु नि इन्फिनिक्सको टिमले यसपालि चिकन निकालेको छ 15 प्लस भयो होला यसको फिक्स तिमी केबाट हेर्दै फेसबुकबाट हेर्दैछौ फेसबुकमा दुईजना को हेर्दैछन् जो हेरे पनि धन्यवाद हेरेकोमा फेसबुकमा हैन were quite huge. Infinity overall, they totally deserve this, and they desperately needed this as well. OP match. What a game! 9 elims. OP match. GG भन्दै छ GG बोल्ते इन्डियाको गफ आयो गर्दै गफ आयो यिनीहरुको के भन्छन् न Nothing much, man. I just want to see the final 3 games, honestly. ल छिटो खाना खाएर आऊ तिमी पनि जाऊ Let's go. Get pumped up. Get that popcorn. Let's head over to the analyst. हम व्यूअर्स से बात करते हैं बैठ मेरो त कहाँले टाइम नै भएको छैन and Mustache Dave as we have closed out our third match of the day. अहिले टाइम भएको छैन मेरो Point of our final day of play here and लाइक गर्दै यार 10 लाइक पुगे sorry not Nova just yet. That's a little bit too far. Sorry. नेट गयो रे बाबा नेट गयो मेरो एकछिनको लागि आउँदैछ आउँदैछ So the heal off strat, I mean, it works out. You get consistent point every single time. Enigma Galaxy, they found the secret source, and it works out every single time almost. आयो नेट आयो नेट आयो नेट आयो नेट ओइ मेरो फेसबुकमा के हो ल्याग भइरहेछ के हो स्ट्रिम This one they ended up with 2, and yesterday they ended up with 3 elims in Sandhawk. So they might be getting the placement points, but I still feel like they need to work out with their elims. Just to show you, Nova 9th place, Navi 13th, and an X-Ray at 14th. Nova still keeping a lead over 2 out of the 3 teams we're trying to chase against them, meaning it's even more difficult now with 3 matches left to go to see Nova. They end up in 14th place with just 1 element. This is the kind of stuff that's just not going to allow you to stay Okay, with the net आयो net आयो I have the impression with next area, I understand what's going on wrong. Sorry net गएको थियो मेरो एकैछिन net आयो net आयो what's happening too much. Here I think they're paying so much attention to what's happening around them that they're just losing focus on the game, on their position, and it hurts them because they got pushed by secret. There was Nova at one point in that fight. I think that if they can take things step by step, would help net आयो सब कुछ ठीक छ अब in these fights. Yeah, and one thing that might help them maintain being consistent is picking themselves up a 1+9 Pro with a super perfect FPS. OP बोलते net वापस आते So never settle and potentially unlock some victories for yourself on top of things. अरे के गफ दिइराछन् नचाहिँदो गफ नै अल्छी लाग्ने क्या यतै बित्तिकै अल्छी लाग्ने गफ त that I wanted to touch on really quickly was the fact that Enigma Galaxy, they're 4 points, only 4 points behind in placements against Nova, but they're 60 points के बोल्दैछ यिनीहरु सुनिदिउँ न यिनीहरुको पनि कुरा 56 points behind in eliminations. They have 40 eliminations. Nova have 96. Maybe they're spending too much time getting pampered at the Fairmont Hotel in Singapore. You guys seen some of the players, the pictures they're putting out there make us so jealous. It is cold here in Berlin. They must be enjoying it, and hopefully for them, they booked themselves a little bit of an extra vacation thereafter to reward themselves for their placements here, which obviously the money they're getting, they sure as hell are going to be able to get that pampering in, the 5-star hotel. Maybe us. Maybe we should go take a trip. Let's get all the talent. Let's get Mustache Dave. Let's get Necro, nice. John Allen, Blank. We'll get some extra sunscreen for those two, and we'll head on over. Jan, are you listening? Yeah, that would be great. But obviously, as we move on to talk about this, the fact that Enigma Galaxy did shoot up the rankings, but still, 60 points difference. 3 matches left. You have to average over 20 points a match, and every time, that's easy, right? But every time Nova score a point... Match मात्र बाँकी छ भन्दैछ त यार तीनटा मात्र म्याच हुन्छ आज फाइनल त यस्तो नहुनु पर्ने अरे यस्तो कडा किसिमले अचानक फाइनल गर्दै हुन्छ happening, we said it right, 20 point every single game if you are currently in that top 4 position, and seeing how inconsistent sometimes those teams can be. Next Ray have been inconsistent, Navi's been inconsistent, we're lacking kills from Enigma Galaxy. If they don't improve on those aspects of the game in these last 3 games, I just don't see it happening. It can't happen here. I mean, and that's 20 points per game, and that's just guessing, right? Not even that. That's just guessing that Nova's going to end up losing every single those matches with 0 points, which I just don't see that happening. Yeah. So you're basically calling our victor right now, the entire tournament? Yeah, 100%. Really? Okay. Yeah. All right. Nova, I don't see any team. They even mentioned it themselves. They're the only thing that's stopping them from getting that championship. Is themselves. Yes. Yeah. I mean, I think maybe the battle we're looking at now in Nova is a battle for the MVP, and Paraboy's been putting this foot forward, but I still don't know who's actually in the lead at the moment, because Order did have such a massive lead in terms of eliminations.
But I mean, we have seen Paraboy stepped it up in a big way, and we haven't even seen Order in any of the MPs and any of the top players. I feel like Paraboy might. I feel like that race right there might be closer than what we might be. Yeah, I think in like match 1, Order had maybe one more elimination, but Paraboy was still the MVP because of survival time, because he was the last one remaining. I think the thing that might make it the Order is actually the MVP at the end of the day is because he had that 2,000 extra damage at the end of day 2. Like 2,000 damage for a race to MVP is huge, and to make up for that for Paraboy, I don't think we've seen enough for him to make up for that 2,000. So last 3 games, if he can get some big, maybe 5 elimination games every single time, then that might be able to allow him to close that gap. But it's too big of a gap that was created yesterday for Order. It's hard to close that one. I mean, even with that one, we still had the gap between the average survival time, right? I think at the beginning of the day, it was a 30-minute discrepancy between those two. And Order pretty much has to just spawn in and die right away. we would have to see, we would have to see what we were talking about. We have to see Paraboy land to him and be like, hey, hold this for me, please. Thank you. Oh, no. Yeah, I mean, the fact is, even besides that, if we remember, blah 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 blah. Just yet, crazier things have Khatra happened. English bolt थाहा छ मलाई. Before Nova. The battle then comes into like that 2nd, 3rd, 4th, potentially 5th place position. We saw Infinity. They shot their rankings off that victory into 5th place. There is still a very tight battle in these placings for runner-up. And the craziest thing that we've seen right between 2nd, 3rd, and 4th place is that those teams continue to keep getting eliminated before we even get to a top 10 situation. I think in the last match, if I'm not mistaken, it was Nexria and Navi that got eliminated before we even got to a top 12 situation. Yes, they were able to get points in regards to elements, but it's just not enough. Even happened in the Miramar game, I believe. All the 3 runner-ups also went out before top 10 position. That just can't happen anymore. It happens once more, you're out of that race of top 1. And we are seeing here a little bit of a race for the Infinity to make sure to close out this match. And we can see how wide of a separation they have here as well. I mean, they have 3 players grouped up together towards the west side of the mainland, and that 1 player off very far to the east. Yeah, not too big of a surprise. It's a pretty nice position. If they are यतिचोटि एनिमेसन बनाउन भ्याइहाल्छ नि यार. भर्खर गेमको एनिमेसनले कतिचोटि रेडी पार्न सकेको हो. How much fast? Arjunaको. And the cool thing about these positions next to Tatmok is that you got those little hilltop positions that are Arjun. This is, as I said, because not many teams drop there, and you get that vantage point for information, so it makes those rotations. Oh, Arjun आको हो. हाम्रो Arjun आयो. Arjun बाबा आयो. How many teams were outside of the zone? कति बजे? But this 2-2 split enables you to defend that position so well. So Furious Gaming had no chance to make that. हजुर यो नेटवर्कले क्या नेटवर्कले क्या नेटवर्क कनेक्ट डिस्कनेक्ट You just got to do an emote dance battle, and that's the play. That's usually what we end up seeing, right? नि कारण डिले भइदिन्छ क्या. One result though on Sandhawk, I can't remember which season it was. I think it was season. खतरा म्याच गयो. गडाल त जोनाथन त कस्तो मतलब मलाई हावा किसिमले थाहा छ तिमीलाई साच्चै जोनाथन हावा किसिमले मर्यो थाहा छ. त्यो मतलब हुन्छ नि अगाडि नक हैन पोजिसन चाहिँ ठिक छ कि तर त्यसरी मतलब एउटा नक गरेपछि अगाडि किन जानु क्या. फिप त मैले बुझेँ. फिनिस हान्न गएकै होइन क्या. फिनिस हान्न त्यसरी थोरै न गइन्छ त. कभरमा गइन्छ कभर सभर छोड कभर सभर त्यो पोइन्ट निकाल्न खोजे. दिमाग नितम्म लिएर होइन कि प्रेसर छ अनि पोइन्ट निकाल्नु पर्ने छ तिनीहरूलाई. इन्डियाबाट अनि के भन्छ होइन किन सोचेन थाहा तिमीलाई थाहा छ नसोचिकन त्यसले त अगाडि बढ्ने कुर्ने थिएन. त्यसले के सोच्यो कि अगाडि जान्छ रिभाइभ भइहाल्छ. मतलब रिभाइभ हुनुको मतलब त्यहाँ प्लेयर छ थाहा छ त्यसलाई. न त त्यो किन अगाडि गएर फिनिस चाहिँ किन गर्नु यदि प्लेयर छैन भन्ने कुरो आवश्यक छ त. अनि त्यहाँदेखि ओपनमा गएर त्यो होइन उनीहरूको कन्ट्याक्ट थिएन कि हो कहाँ पर बसेर खेलेको कि के गरेको यार. तर त्यस्तो चाहिँ नगर्नुपर्ने यार. यहाँ कपिराइट लाग्छ क्या. यो जुन एड आउँछ नि यहाँ मेरो त्यसमा पनि कपिराइट लागेको छ. यसमा पनि लागेको छ. यो एडवालाहरूले हाल्छ क्या. यो एडको गीत छ नि यो अहिले बजिरहेको छ नि एडको गीत हो त्यो गीतले हान्छ क्या. होइन त्यो हटाइदिन्छु म. हुन्छ कपिराइट हटाउन मिल्छ त यार. जहाँ जे गएर त्यो कुरोलाई म्युट गरिदिने क्या. त्यो गीतैलाई म्युट गरिदिने काम तमाम भाइ. त्यो गीतै चाहिएन मलाई.
हेभी स्प्रे दिन्छ नि यार 3x को 6x को तर स्यानकमा 6x कमै भेट्छ है म उतो हुँदाखेरि रेड डट हुँदाखेरि म एकदम कन्फिडेन्ट हुन्छ कि ओग्नेटरले चाहिँ केही न केही त गरिन्छ भन्ने कुरो हुन्छ क्या 3x मलाई लङ रेन्जमा सकिदैन क्या किनकि त्यो 3x जुन त हुन्छ नि डट कुरो त्यो कहाँ हुन्छ त्यही मेन थाहा हुँदैन क्या मलाई कता हुन्छ 6x पनि मलाई ठिक मलाई 6x लाई 3x बनाएर युज गर्न अलि ठिक्क लाग्छ क्या ओपी लाग्छ मलाई त मजा आउँछ हमको तो आती है मजा क्या लाई 3-6 अनि ये पनि ठीक है it's your choice it's her choice it's your फेसबुक का 2 जना हेर्दैछन् यार लाइक गर्दिम शेयर गर्दिम है त जो हेर्दैछन् धन्यवाद हेर्दैकोमा थ्यांक यू सो मच गाइज हेर्दैकोमा अब भोलि हुन्छ फाइनल त्यसो भए ग्रान्ड फाइनल पछि फाइनल आउँछ क्या फाइनल नभए कसरी हुन्छ यार ग्रान्ड फाइनल भनेकै फाइनल हो हैन तर ग्रान्ड फाइनल्स हैन यो फाइनल नै हो यो ग्रान्ड फाइनल भनेको फाइनल नै हो नि सेमी फाइनल आउँछ अनि ग्रान्ड फाइनल आउँछ क्या फाइनल नै हो यो लास्ट म्याच चाहिँ सही भन्यो कस्तो कुरो गर्छ के 6 त रिसी आफूसँग पनि हुनु पर्यो नि हाल्नलाई पहिला आफ्नो औकात त्यत्रो बनाउनु पर्यो क्या दिने कुरा सोच्नु लोभ त मलाई पनि लाग्यो म त्यसैले पबजी नै खोलेको छैन अब प्लेनहरु चाहिँ लोभ मलाई पनि लाग्यो त्यसैले पबजी नै खोलेको छैन मैले त क्रेट अहिलेसम्म मतलब हुन्छ नि साथीले As hard as that word is to say, is how hard it's going to be to overpass Nova. You can see lower tier though, able to travel. They travel गरेको. I'm actually surprised to see him travel that much, considering all he was doing was probably standing in one location. यसमा ट्र्याक नआएर के हुन्छ यसमा पनि पोइन्ट दिन्छ रे. But to be fair, right now in the Galaxy it gets him up quite a few placings. The problem is that strat. माकुरी आफूसँग रुमै रुम छ कि गराइदिनु पर्यो बसेर टुर्नामेन्टै बसेर है अर्जुन रुम छ यार 1 महिना मजाले खेल्न सकिने जति रुम छ मसँग पबजी को लगातार 1 महिना आरामले खेल्न सक्छ तिमी किनकि 4 हप्ते मतलब 1 हप्ताको रुमै मसँग 4 वटा छ त आफै सोच अब ए बा छ दानी चाहिँ कसले गर्छ स्पोन्सर तिमी गर्छौ होला Alright, cool. I don't know what that was, Max. The fact is, hey, केटाले दिमाग लाग्यो हेर न भाइ दिमाग लाग्यो केटाले हेर डुबाउँछ प्लेन उडो is very tough to do. And again, I feel like it really proves the point of like Nova have created a legacy for themselves being one of the best, if not the best teams in China, but best team in the world. मेरो अहिलेसम्म आएकै छैन Let's start off with you. Who do you honestly think is going to end up taking the MVP in between Paraboy and Order? I think Order created too much of a gap on that second day, so I would have to go to Order. I don't know if you, you agree? Yeah, I'm with you. I'm with you. Just mostly with what you're saying, the damage. I don't think Paraboy, he might be able to get more elements. यिनीहरु साच्चै यहाँ बसेको छन् र माथि. Being able to survive 30 minutes longer than the other person. If we were maybe halfway through day 2, I would question it, but right now with only 3 games left, यिनीहरु तलै छन् के काई. More than likely going to be taking that MVP unless we see some Paraboy just go absolutely nuts. So you both say Order. Yeah. So you both say Order. Well, I'm saying Paraboy then. ए र
No, let him down. Jim's next year's Jim's. ठिक छ ठिक छ Okay. Last year it was Paraboy's year. This year it's Paraboy's year yet again. मतलब तिनीहरू त्यहाँ आउन नसकेर हो क्या यिनीहरू जो फोटो तिनीहरू आफ्नै घरमा खेलिरहेछ बुझ न आफ्नै ठाउँमा आफ्नै देशमा बसेर हो नत्र किन हेर अनि आफ्नै ठाउँ would be potentially able to do it 2 years back to back. What's crazier is that when you actually ask गडल the best player गडल हेर हैन साच्चै अब तिमी सपोर्टमा छ गडलको हामी सपोर्टमा छैनौँ गडलको हामी सबै टिमको सपोर्ट जसले राम्रो खेल्छ त्यो टिमको सपोर्टमा छौँ हामी चाहिँ हैन he's the reason why this team is so good. So it is interesting. I will love हम to तो see भाई some of the stats maybe पहले from से ही Parabol तेज है and पहले see से ही how तेज Jimmy थे is बेटे able to pair up versus the other 720p players. में चल दी रहा यार Let's maybe get into our teams to watch here into You our fourth match of the bete. day. And Max, we don't think we start off with you often. So 7, let's hear what Max has to say of this team to watch. You know what? I actually feel मेरो I went for- स्ट्रिम 60p FPS में देना छोड़ो के वो that's fighting for the top 3. If I'm not mistaken, the last 3 performances, 10th, 14th, and 14th, that's just not gonna cut it. They need अँ के गर्नु त्यसो खासै मलाई लागेन यार अहिले चाहिँ युज गरिसकेपछि थाहा हुँदैन युज गरेपछि थाहा हुन्छ क्या एसएसडी तिमी प्लेन उडो खोइ मेरोमा खोइ त उडेको छैन त यार उडो आयो ऱ्याङ्गल गरे बुझे मेरो पनि आइसक्यो मेरो फ्लाइट पाताको छैन फ्लाइट चाहिँ उडिरहेछ जस Feels like it's foregone at this stage. It feels like we are now playing for second place, unless Navi can have some more consistency. गरे झार्कीबाट कि सुटिङ रे झार्कीबाट मिल्टा पावर आयो लगाइ They really do not drop out of those top spots at all, honestly. And even on Sanho, त्यो डिले आफै भइहाल्छ यार जति जे गरे डिले अलिकति हुन्छ क्या has been sealed here. And they were talking a little bit about that MVP race as well over on the desk, and I feel like अब म पनि 2x पार्दैन लोड लियो भने मात्र 2x पार्नेको लोड लिएन भने 2x पार्नै हुँदैन क्या आफै आफ्नो लेभलमा चलिरहन्छ just head and shoulders above the rest of Nova right now. सब टिम On a clean 45 kills. कतरा टिम चलिरहेछ हैन Which is absolutely सब टिम ल्यान्डिङ कसरी फैलिन्छ सबै टिम आफ्नो ठाउँमा झर्छन् कोही यता जान्छ कोही उता जान्छ यो एसनका टिम के गर्दैछ युएमपी भेटेको रहेछ पिङ्की पङ्की युएमपी Which to me says the order is just translating all of his knocks into his own elimination. ओ यार सही भन्यो पानीकै ठाउँ आउँछ यार पानीकै त्यसमा दिइरहेछ यार किन यस्तो गरेको होला यार पानीकै तर यसपालि पानीमै हुन्छ होला जोन फिक्स पानीमै हुन्छ थाहा छ कता हुन्छ फेरि पेयर भन्दा ब्रिजतिर हुन्छ ब्रिजतिर ब्रिजतिर हुन्छ आउट इन अरे के हो यो TX2 मा Substitution coming in, Mantoy out, Kid in, 4-team secret, they drop all the way up in Severny. And Nova, they've got 2 buckies, they're going to split apart, they are just south of Everest right now. NV को टिम 2-6-2-8 by the looks of things. ST को टिम दोतिर गाडी त मैक्लेरन उठाएर मैक्लेरन Stalwart, they made their way to Nova Infinity back to basics in Sosnovka military base. You might think that NV को टिम किन छुट्टेको यार एउटा उता छ एउटा यता छ एउटा उता छ किन but the amount of times and the amount of time ओ यहाँ यसले NV को एउटा टिमले खान्छ एउटैको टिम च्यापिन्छ फिक्स 10 meters into the ride is unreal, but it feels like this is becoming more and more of a common trend च्यापिन्छ where जस्तो both लाग्यो fit technically 3 players when it shouldn't necessarily be 8. गेडा च्यापे जस्तै That does really give you a lot of options in the early game, especially when 3 के players बोल्छ all यार around केटो one के location on बोल्छ the यार bucket. तिमी And that's really assisting the early game rotates for Nova to get into position, especially when they have an awkward playing त्यसले path that फेरि starts to Zaki. They want to get down into Gatka as हाम्रो soon as डासियाले चाहिँ possible. मिलिट्री बेसमा को झरेको छ इन्फिनिक्सको टिम झरेको छ हैन मिलिट्री बेसमा टिम 16 64 का 64 जना जन्मेको अहिले मतलब बाँचेका छन् हैन on the long haul down towards Quarry at the moment. इन्फिनिटी टिमले But एपिक Johnny, टिममा पुरा दिइराछ it's really getting towards the end. लुटिराछ 6x भेटिसक्यो 2x हो त बे 2x हो सायद Finals, not in the sense it's never going to continue. कुन टिम हो यो एनजी को टिम
finals always a lot of fun. MG But के looking एन्जिन at the ST को right side टिम of the कता screen, गइराछ फेरि 137, 134 to that massive gargantuan 197. यसले कसलाई सुट It गरेको really ST को does टिमले feel unlikely मिनीबाट now. To me, it is all about that second through fifth place, how much that can change. Because blank AKM को second गोली place छैन यहाँ हाम्रो is कुनै worth FB को टिमसँग $600,000. Fifth place, FB $90,000. FG That is an incredible drop off. DWG को टिम मजाले लुट्दैछ हैन यहाँ मिलिट्री स्कुलमा खतरनाक लुट्दैछ Enigma Galaxy. I feel like that is just incredible. यिनीहरू to जति see मेन late into the tournament. यिनीहरू जुन खेल्छन् नि यिनीहरू सब त्यसमै खेल्छन् होला है मतलब तिम्रो क्वालिटी लोमा अनि FPS चाहिँ अल्ट्रामा राखेर खेल्छन् होला है A wild card in towards those top standings, but the money that you earn for those small increments of points. आइमा खेल्दा सकिन्छ यो चाहिँ के A7 ने के उडाउँदै बसेको यो लल उडाइदियो भने छैन यस हेलिकप्टर यसरी बोल्छ न हौ नर्मल्ली भन्नु नि यार खप्ता गर्छ भयभरको थुक माइकमा फालिदिन्छ होला यार हो है It's a big part of the tournament, especially when we have such a huge overall 6 million coming to this PMGC. God नि हो केटो पुरा एकदम जोसमा आयो होला एकछिन गडलको टिम हेर्ने बित्तिकै that $600,000 drop into $90,000, man. I'm saying $90,000 is a lot of money on the line. So रिल्याक्सन कसरी गर्छन् बे spots right now, you're still going to be going home with quite a big prize pool for yourself, but it तिमीले फ्युल एक्सचेन्ज भन्यो होला massively in increments. And I think Navi would not want to वाह फ्लोप तो भारी केटो फेरि grab that $600,000 when they have been pushing so करने का नहीं रे बाबा hard. And I personally am hugely impressed by this Western team who has gone through a series of changes throughout the order year where they NV did को look so order ले great. Sometimes it was that massive glimmer of like, whoa, this is a really good team. बार 37 किल far better there. You And want the pro now player here in the PMGC Grand Finals, we are seeing a Western team that not slightly slipped their way up here with generous circles, but a team that has truly fought for it. And that makes me incredibly happy. But they are still पहिला हैन सुन न त पहिला जुन थियो नि पहिला नेभीको टिम थियो हैन अगाडि the gap between Navi and next Ruya 1 point worth 150 grand, right, from third to fourth place drop off. So they are definitely not out of the woods. They're not out of the woods yet. No, Nova कि नाभी रे for Navi, keeping this up is not necessarily, like you said, just a case of Nova चाहिँ हो NV भनेको it's beating back next Ria and the Infinity and the DX Xavier. Okay, ये भी सही actually really touched on DX Xavier a lot, honestly, and I think that when we were looking at the East League, I'm gonna be अब हल्का हल्का फ्लोमा भइहाल्छ but for DX Xavier there were a fair few times where it did really feel like the circle shifts favored them. ओए कपिराइट आयो केटा कपिराइट आयो ओए ल ल ए म त लाग्यो इनेमीले हान्नु कि गाडी ल्याएर I will take back those words right now because I think DX Xavier has proved to us that they are a phenomenal team that have what it takes to make it happen, and we just haven't been paying a lot of attention to them because honestly when you look at the middle packs you kind of अहिले सब सेफ खेला थाहा छ एकदम मतलब हुन्छ नि फाइट नलिकन सुरुमा अहिले तर थाहा छ तिमीलाई इरेङ ए ओए यसले फाइट पर्न सक्छ यहाँ DWX I mean, there's such a smooth curve on this lobby. यो यता पुरा एकदम पुरा यता त्यो मुभमेन्ट दिइरहेको Basically any team still at this point to make massive gains in terms of their earnings overall. I mean, even टाप 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 होइन क्या इरेङ्गलमा चिल भएर खेल्छन् क्या मतलब हुन्छ नि जस्तो अरू अरू म्यापमा हेर्नुपर्छ झर्ने बित्तिकै मतलब इनेमी नजिक आइदिन्छ कहिले के भइदिन्छ कहिले के भइदिन्छ कि इरेङ्गलमा त्यस्तो हुँदैन hugely and that's what we like to see. इरेङ्गल हुन्छ अनि इरेङ्गलमा टाइम अनि ठाउँ पनि ठुलो छ नि त इरेङ्गल गाडी बिना त कामै छैन क्या इरेङ्गलमा गाडी त एकदम जरुरी क्या Nova is one of the best teams in the world, but I will go one step further and just say that they are the best team in the world. They have been since सिचुएसनहरु नलालिदियोस् खेल्दा 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 पानी परिसक्या हुन्छ अनि etc. You know, they're just qualifying for the PUBG Grand Finals, and then they get here and they're like, all right, boys, let's win. Like, what matters is that trophy in the Grand Finals. DXT ओइ कोइ दे आनान बे ओपी ल ठीक छ 3x न्यूयॉर्को हक्तावा 3x को स्प्रे काम लागेन. You know, from fourth place in the East League as well, right? They still managed to get
I think like something around $60,000. NB को Jimmy That sort of region from Jimmy that. So Jimmy that's gonna Jimmy give भनेर them एउटा गीत छ नि capacity अगाडिको कुन टिम छ get just from being so strong and from Order's performance. I mean, पोचिङ्कीमा पोचिङ्की फोरेबल अनि कुन हो यो एनआरएक्स पढ्न सक्छ Let's take आउँदैछन् तिनीहरू Esports यतै as well, आउँदैछन् 'cause that was kind of a wild NRX card, in which case Damwon Gaming just यिनीहरूलाई had त केही पनि थाहा surge हुँदैन है of को power टिम that कहाँ came छ through के the हुँदैछ electrical भनेर circuit, हामीलाई सब which थाहा sent them हुन्छ है straight to the top, and I don't सब think जोनभित्र Nova's रहेछन् had है to fight फर्स्ट those जोनमा top सब spots for a सेफ very रहेछन् long time. जोनभित्र They're रहेछन् usually in this position right here, where they are a clear chunk of points ahead of anyone else, and it's playing catch up mainly for these other teams. Max has talked about a fair few times as well, is that, and I think 7-2, honestly, is a case of you have to hope that Nova goes out 16th, 12th place for the next 3 games. Even have a hope in hell. But is 16 कति 18 म्याच हुन्छ हैन No, to be quite honest with you. Oh, अब yeah, no, दुईटा that makes sense. अब दुईटा बाँकी छ No. Yeah. I get that. No, fair enough. I think it's, as I said towards the start, it feels fairly foregone, and the battle for second place is raging a little bit further down the tables. I'm thinking, what is the difference? You know, why are they coming into these things so strong when they haven't always been in the top in their respective regional plays? You know, they have been challenged. एउटै छैन तिमीसँग What is it? Is it this change of introducing the Western teams that gives them that little तर bit त्यो of सजिलो edge? लाग्छ कि मतलब किल एउटा नाम आउँछ एउटा गन मात्र होस् मेटेरियल निकालेर गरिहाल्छु फिल हुन्छ कि तर जब तिमी गन पाउँछौ नि हैन गन Does it give them things साँच्चै हो रियल कुरो गन त निक्लिन्छ गनसँग एक दुईवटा मेटेरियल निक्लिन्छ style lobbies and maybe it's that stylistic अनि मतलब एक दुईवटा मेटेरियल निक्लिन्छ तर पछि जब त्यो निकाल्छौ नि मेटेरियल निकाल्न सोध्छौ नि डरै लाग्छ क्या केमा निकाल्नु कुनमा निकाल्नु हुन्छ क्या कुन गन निकाल्दाखेरि अब Coming from PEL and then coming to here when you're playing on, you know, mobile standard, right? जोन सानो भइसक्यो अहिलेसम्म 64 को 64 नै टिम छ मतलब 64 नै आइल्याब छ त यार मेरो लोड भइरहेछ यार change in performance over time, which is because of practice and playing with these teams, understanding their playstyle. And I think that if FB got team out I know we always give out these improvement G got down the end of the tournaments. Good fight here from Godlike for once. DWG को मरेको really strong coming out on top. Damwon obviously takes a good shot. DWG जुनीले खतरा हान्दैछ त रेड डट को स्प्रे Earlier on in this tournament, Junie clutch factor. He's got Sung as well. Junie and Sung, a devastating duo. Damwon with some of the strongest अब crossfire दुईजना in the game, but they're out on the open terrain, and it seems like Godlike have the upper hand here. They should be able to get these reses off. ताप हान्दैछ बुतोलेर खेलेर डासिलेर टाप A little bit further up those tables, trying to scrabble together. सिचुएसन हेरेर खेल्छन् क्या यिनीहरू रोटेसन लिएको हो कि बाकी थाहा नि अब My last point, I think it's for Nova, it's practice, and over time they improve so quickly in different environments. It's unbelievable. And I think for any other team that might be very difficult, and Nova just has this fantastic deep mindset and grind set. yeah Especially when they come out in an interview and they're like, you know, our biggest enemy is ourselves. And that's fair play to them. That's fair play to them. ग्रेड पे ग्रेड आयो भने This is Damwon Gaming's biggest strength, is to understand when to leave a fight, when to not go any further. And I think, you know, being in 9th place, Navy को टीम पेट्रोल हाल दे potential for a massive jump up in points. थाहा छ मलाई थाहा छ मेरो यो नेट अलि ल्यागी छ कि नेट ल्यागी है भैया It's pretty decent. You just want to be नक हान्दियो टिपीले यार game, right? And just keep it एफपीपी consistent. नेभी एफपीपी ले It's going to be a little bit less likely to really get those big point scoring games. You just want to play for consistency. Next circle just about to pop. Fairly centered on Pachinki right now. Could head out to probably the Kites. जी को धेरै सको हैन यता म्याप हेरेर छ अब यहाँ हेरेर छ 16 Actually Fenerbahce right in the middle. Yeah, good position for them. फोरेबल को ठाउँमा छु एनआरएक्स अगाडि छ त्यो पनि हेर्दै छु बगीमा गइरा छ हैन फोर This is the risk you play on Edge, right? Is that you aren't necessarily going to have all these circles be kind to you and you have to be prepared for these hardships. But they do move further away into highly populated areas, which makes rotational paths for Na'Vi so difficult. 4 rivals taking a few shots from next room. लल यो कहाँ छिरेको एक्लै फेरि on our angle.
यो के गरेको यसले एक्लै छिर्दिरा त Into a bit of a ditch here, which includes a few players from Dam 1. It's going to go well. Out the next Ruya frying pan into the Dam 1 gaming fire. It's just not going well here. Only one player standing, and he's taking tick damage as well. Confused पार्न Shots across the way and has to hit Confused the bit, has to पार्न heal होला up नि अब before you can even look for this res. And in the meantime, next Ruya are even taking fights with Enigma Galaxy all the way in Pachinki. Right now, guarding out on the त्यही त confused पार्न नि हौ मुला pop those smokes and keep 4 rivals at 2. Enigma Galaxy should be able to get themselves back up in action, and I will say right now, if there's any team to give credit for, it would be Enigma Galaxy. TSJ कतातिर गइराछ गडलतिर ए टाप हान Since their ए भगिदिरा टाप inception has been टाप ridiculous, and getting here in थाहा the पाउने grand बित्तिकै finals टाप is place, massively well done. A team that's perfected Sandhawk. Frozen though, looking to perfect these nades. नेडम नाट भइराछ पुरा डुम डाम डुम बाम बुम भइरा It's a very similar position that next year you're able to clutch it out. नक मेरो भर्खर नक भयो स्याङ भन्ने भाग्यशैली के गर्छ होला यो वेट हान्न छ अगाडि एउटा आओस् अनि उडाइदिन्छु भनेर Quite going to light them up properly. Sung now last standing for Dam 1 Gaming. After a couple of unfortunate turns for them, another long nade over towards Judy's going to see him bleed out. Another suppressing nade, a little bit too long there as next Ruya want to find more. Frozen put down, and Sung now half HP has to move around the side. And against next Ruya, कस्तो मेरोमा ढिलो चलेको यार stand tall, but look at this, it's 4 rivals, they're back in the fight, and Sung may be having spoilers played at him. Kudo moves in, but not before Frozen gets flushed. Yeah, there on his knees. Sung looking to find one more, but these ditches do prove a little bit tricky right now. Sung also has to be aware that there could be a team, FPU in particular, that's going to cause him problems. Nice nade tries to do a little bit more damage, but it's not on target. Unsuspecting position there right in the center. That's where you thought you would nade. So Sung goes for something a little bit atypical there. Won't quite find anything with it though. अनि भाग्दैन त मुला टाप हान कस्तोतिर टाप हान्दिहाल्छ एउटा बग्गी लिएर हुन्छ कि टाप हान्दिन्छ Both teams currently out, or right on बग्गी अनि छिटो कुद्छ के टाप to not encompass them in this next phase, but Alpha 7 don't want to push through. मेरो मैले हेरेको छैन यार नेक्स्ट स्ल्याम वाला Keep it easy. Nova really not the nicest of teams to go up against. Quite the scary beast. Godlike moves on next Ruya's position during that chaos. Really well done from these guys. Revive गर भाइ revive गर न रे Up and in position. Next Ruya was just split for far too long. त्यही त खतरा म्याच चल्दैछ नि त A7 को ओइ 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 झन्डै अलि A7 को अलिकति Mafioso wins out the trade, and Alpha 7 get a flank. Paraboy second in the running for that MVP spot for Nova does go down as well. So now it's just Jimmy and King. NV को दुईटा नक छ यार Plenty of backup, and Alpha 7 picking apart Nova right now. अनि के गर्छ त अनि जिमी भाग Down 16th. That's what's required to get Navi into a better position, you know. जिम्मी ओइ जिम्मीले भेट्यो ए उले भेट्यो झन्डै भाग Strong Jimmy, the last remaining survivor, but 4 rivals just cannot hit the shots. Try as hard as they might. Jimmy managed to make it into the next circle, southeast, away from Alpha 7 and their new position that they hold. And Jimmy keeps on going. Oh, अरे but they don't have the angles. तो जान्छ थाहा पायो कि गयो यस्तो सिचुएसन छ Jimmy right now. I think this is something that Nova do very, very well, is just clear understandings of safe zones around the map, great compounds to play from, great compounds to win from. And that position right there just says it all to me, because this is a difficult position to broach for a lot of people. Not many people are going to be A7 को एउटा नक छ NV को यार 3 जना डाउन जिमी मात्र बाँकी छ NV को LRX को 2 जना डाउन छ DWG को 3 जना डाउन 4L को 2 जना डाउन Okay, and now 1v1 on the roll up, but low HP means that you have to play smart here for Alpha 7. The rest of the teammates not so lucky either up the hill. Navi, they've lost one, and Tixi is down, and Pepper still 3S को स्प्रे दिइरहेछ ताराबाट will not be able to land the shots over to Kitsune just yet. Alpha 7, are they taken down? They're going to be eliminated out on the western front. यति सपोर्ट नगरे यार Roll on through the sweepers in action. Matic out in the blue though, not likely he's going to get picked back up again, goes down there. Now Navi just down to 2. And a great opportunity that was gifted to them here to start to move up the NGX ले हैन 6X ले Enigma Galaxy happy with this one. In second place, can start to rack up some more अन्त पारा इसको बोलते awful position to be in. को बोलते स्प्रे
rubbing their greedy little mitts together right now. One player on Na'Vi, one player on Nova. Potential to extend that gap over Na'Vi and close it up towards Nova. मान्छे खेलासुमा यहाँ मान्छे यहाँ पागल भइसक्यो यार अर्जुन यहाँ पुरा नाभीको टिम ओइ नाभी like having an Arabic team here in the finals itself performing this well is just incredible, but Navi will be taken down in 14th place. Goodness me, this was a time to shine, and looks like we're going to get nothing but dull boots here. The good news for Na'Vi is that next Ruya are out before them and with less elimination points. That bumps that gap up from 1 point blank to 2. I know, it's impressive, but it is still something. It is, exactly. I mean, that's better than nothing, right? Better than nothing. Looks like Nova will have to see themselves a little bit longer. How are they going to make this? The roll up. I know the roll-up's good. Lol, के गरेको लस गर्ले फेरि Godlike Sung, just about going to be able to make it in, I think. Unless he does go down to the blue. अनि त्यो रिभाइभ भयो त Still playing spoiler. S2G, look at the floor. What are you doing? Finally, Pemberu gets spotted and Kelsey. Team 13 पनि eliminated पर eliminated. As to whether that would go through. यार के भएको क्या यो जान्छ आउँछ Looks like Godlike back on the cards though, looking for a little bit more damage onto Furious Gaming, but they are कस्तो खतरा फाइट भइरा छ यहाँ चाहिँ फेरि मेरो नेट गएकै छैन Forwards, Jonathan bleeding out, Zigod goes down on the forefront as well, and not really too much back up, and Neo standing behind the tree will get ticked down by ओइ आइजन यार हात जोड्छु आइजन यार versus the last player. Furious Gaming will find the knock, but you can't get that res. It's too far away. Grab some meds and see what you can do. लल हेराउने बेलामा गायब स्क्रिनै गायब Godlike Gaming left. हेराउने बेलामा स्क्रिन गायब छ्या 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 मजै आएन नि यार यहाँ लाइभमै हेराउने बेलामा डाउन भइदिरा तिमीले गडेले नौ टिम एकजना मात्र बाँकी छ हो Beautiful, boiled to perfection. को छ लास्ट को बाँकी जोनाथन पनि गयो ओइ सब टिम The Xavier looking here. They are on the outskirts as Lamborghini and Rabbits take that forward position. ठिक छ 9 point निकाल्दिरा छ यो म्याचमा as the crash is good, but it's being surrounded. Beautiful nades coming through from action there. We'll take down another player. You can see the other two boys off in the distance. Some good shots. There's one. Godel पनि गयो Pushes through this smoke and action will just shut it down. Stalwart able. अब eliminated भइराछ त. With 4 on the southwestern side, locked in combat now as the crash comes from 6 to 8 and they get one on the roll. अब खतरा म्याच भइराछ हेर न. कसले कता हानिराछ हेर न. एउटै ठाउँमा दुई तीन जना टिमको फाइट परिरहेछ एउटै ठाउँमा 3 जना टिमको फाइट परिरहेछ. अनि च्यापिरहेछ एउटा स्यान्डविच भइरहेछ सब किल निकाल्न मैले छन् क्या मेन किल निकाल्न खोजिरहेछन् क्या जोन आयो एसटी को र इन्फिनिक्स खतरा फाइट परेछ 1v1 को सिचुएसन छ अप डाउन को स्टेयरमा चाहिँ उता एसटी को कुन एउटा नक छ इन्फिनिक्स को एउटा नक रहेछ नेडानो ओपी गइसक्यो एउटा नोभाको टिम गयो यार एक किल पनि हान्नमा तर जस लिडिङमा छन् तिनीलाई चाहिँ टेन्सन छैन इन्फिनिक्सको एकजना बाँकी छ हैन कतिजना इन्फिनिक्सको एकजना बाँकी छ उफ्रेर पञ्चिङ गर्दै थियो मर इन्फिनिक्स पनि गयो मजाक गरेपछि यही हुन्छ क्या गेममा Absolutely, he's been studying his Suvac. Bako Bears पनि गयो यार त्यो अघिको ब्ल्याक स्क्रिनले गर्दा छ्या S2G on the western edge going to be guarding out 628's position, but Enigma Galaxy similarly guarding out these teams on that west. Stalwart on the east and Fenerbahce up in the north as well. Maybe look at us scrabble those points back into their pockets.
Honestly, we had a game just like this in the East League finals, and Stalwart won from this exact position. And त्यसबाट 4 जना बाँकी छ 4v2 छ 4-4-4-4 ए एसटी को एसजी को टिमबाट चाहिँ अब फरवर्ड जोन हेर कत्रो सानो छ Just will tear you apart, and STUG, they're getting set up to send these nades over. They need to find some knocks over to Enigma Galaxy, their main. Nade by nade, nade by nade, nade penne. They're looking for more. Okay, and yes. On top of them, Ralph goes down. ओए बब्बाल उड्यो यार गाडी त्यो म्याक्लेन उडेको Fully Freak gets knocked, and there is answer. There is a reply coming through from the guns of Stalwart actually across the way as Hamodi gets knocked, and it's just Lord now. Rip7 rolls on up to the shack, but he's low HP. He's sat in the car, getting some info, spraying around the side. अनि हेर्दै नि त एनजीएक्स को टिमबाट 2 जना नक छन् यार ओए के गरेको यो गयो एलिमिनेटेड एनजीएक्स टिम एलिमिनेटेड Just a little bit of a gap there, but he makes it happen. Now Stalwart still have to make their way in. Top's taking in angle with this match babal they're able to get out the way. Fenerbahce are just hoping. Team सोचिरहेको होला म भथे अब यस्तो गर्थे त्यस्तो गर्थे है Shots from Noxbomb will start things off. Mustache Day's favorite player from this team. अन्त राम्रो खेल्दैन त सोचिरहेको थियो होला है भित्र भित्र Nades over from Fenerbahce towards Stalwart as well. Right there at the bottom of the tables, every point matters, but they've already got a pretty decent jump on them already. The more they can get, the merrier, as action falls to a lovely long nade from Nox. Bounce भन्छ ल bounce nade bouncing. Providing so much cover for Fenerbahce. हिजो कि अस्ति राति they know are pretty good. ठ्याक्कै पछाडी पड्यो ठ्याक्कै पछाडी क्या सब यार 6x छोडेर 3x धेरै युज गर्दा रहेछन् थाहा तिमीलाई हेर त हेरेको छौ 3x धेरै रहेछन् क्या 6 need to move forwards under cover of smoke, claim some cover, but action breaks out into the open ground. Scarrel मा पनि 3x युज हान्दिएको छ ओके एसटी को सँग 1v2 को सिचुएसन ए गयो एफबी को टिमले खतरा हानिरहेछ यार एफबी को 3 जना ओके एफबी को 1 जना नक एसटी को नक एफबी को पनि नक छ त नेडिङ खतरा हान्छन् क्या यिनीहरु हेर न eliminated up 3v1 को सिचुएसन 1 को 3v1 को 1 को बे रिवाइभ भइसक्यो र रिवाइभ भइसक्यो रहेछ नेडिङ पेन Honestly, a hard push for S2G, but they made it work regardless. Stalwart's not going to be happy about this. This was their chance to move up the rankings towards the top. Wait, John sorry राछ यार जोन सरी राछ यार बताउन सक्छ होला बेनिफिट भयो हाम्रो एसजी को एसजी हैन मतलब एसजी को टिमलाई बेनिफिट छ नि त एसजी को टिम अलि त्यस किनकि जोन छ इनरसँग कभर भए पनि जोन चाहिँ उनीहरुसँग छ नि त यार तर ग्रेनेड कस्तो हानेको यार म बाइक ताको भको मेक्रिया चाहिँ सब फोड्दिएका छन् पुरा कोरा एउटा एफबी को टिम हेर न कस्तो उता फ्ल्याङ्क हान्दैछ र लेफ्ट तिरबाट हेर त हेर्यौ सुति अनि अब के यस्तो कम्पिटिटिभ म्याचमा सर्प बन्न मजबुरी भइहाल्छ क्या ओए खतरनाक दियो यार एफबी को टिमले निकाल्छ कि एसजी को 1 जना नक छ है एफबी को टिमले राम्ररी खेल्यो भने निकाल्छ क्या Kelsey, who has had an unbelievable game so far with the nades, with the shots, now really has to bring it all to bear in these final moments versus Fenerbahce. These smokes अब 2v3 को सिचुएसन 2v3 को सिचुएसन एउटा त कभर बाबाल लिएको छ एसजी को टिमले एउटा कभर खतरा लिएको छ अनि एफपी को टिमले पनि एउटा कभर ढुङ्गा कभर बाबाल लिएको छ Kelsey has the rock and the circle shift out northeast towards Fenerbahce's ridgeline. Rebellion goes down to Timber and they even the numbers with a quick flush, but Timber takes a tickle. It's burned up a little bit, but still has more in the cooker. Kelsey with a lane up on high towards Noxbomb. For anything that they can find, but no one really getting ground at the moment.
पेन टिभी रहेछ कुन चाहिँ हो Calm for the time being. They desperately need this extra knock. Timber has kept them in it for a little bit longer. That beautiful little elimination. एफपी को एउटा डक भयो हैन अब पुश जान्छ Smokes begin to fade. Just chipping away at Fenerbahce's stronghold. पुश जान्छ Timber's पुश position known. And he is going to start to move on through Nox. एफबी को एउटा एफबी को एउटा भएको छ सुती बढा छ एसजी को पनि एउटा हान्न बे हान्न You're right, but Timber, is he going to be spotted here? He knows Kelsey's there. Oh, set लगेछन् लगे To take care of Fenerbahce and send लास्ट मिनेट फेरि गइदिन्छ middle of those tables. जस्तो गइदिन्छ फेरि Timber really was the king of those final moments. मेरो किन गइराछ बार यार म त्यही बुझिन प्रभुले यत्रो म हल्लै खेल्छु के हो Christ alive, that stand up and the sidestep left Nox baffled. A great game, really interesting. Nigma Galaxy able to get a fair few points on the card despite their inability to get out of that precarious situation in the middle of the map. But it will be S2G. म्याच खराब भइहाल्यो हैन on our angle. केटा गफ सुन है केटा गफ सुन त S2G Timber instrumental, as you say, solid as Mahogany in those final moments. I have to admire their setup. Games for Nova, Na'Vi, Nigma Galaxy, not as strong as they would have liked, and with only 2 games to play, it feels more and more foregone. More and more foregone. के भन्छ र भन्छ Unami ako. Yeah, it might happen. It's looking very good to happen. Do see yet again, Unami Eagles जस्तो able to लाग्यो go मलाई down to one player. Unami अब गएछन् Better than 2 आउँदैन नभए out there on the chase. But gentlemen, we have S2G. यार तिमी न भगत I'm going to give you the floor here. गयो होला नि काम परिहाल्छ नि हो Entire event, but they've been letting you down. अब लास्ट मैच बाँकी छ हैन You know what it is? We've been talking about top 10 so much that SG was like, okay, maybe this is the time to turn it up. I think, if I'm not mistaken, this is their second chicken dinner. For them to be able to put up 12 elims, it is going to put them, I think it actually makes them pass Alpha 7, which is insane, because Alpha 7, it's currently not top 10. It's something we were talking about earlier. But with S2G, could they be doing something that STU was doing earlier, right? Yeah. Trying to put themselves within those top 5, putting themselves in a position where they can actually those last 2 matches. ती लान्छ एकछिन बसेर यसपालि कसले चिकन लगायो अरे के नाम थियो बिर्से म के कसले लगेको अरे है एफबी को कि एसजी ले लगेको अरे अहिलेको चिकन S2G ले लगेको हैन overtake their position and gatekeep them away. You're not going to be able to go with that from Nigma Galaxy. And also they had such a pivotal position, right, 7, and yet they came out with, what was it, 1 elimination? Bro, we need to see those eliminations, especially when you have a central position, a strong 12 kill हाने STG को ले but still, as you said, right, STG able to get himself a good result. That could be a huge prize point increase for them after that game. No, it definitely will be. And I mean, another team that we've been talking about, hopefully being a top 10. If they do get to top 10, it will be a huge win for the region itself. Godlike, they ended up with 9 elims. We saw what happened between the fight. It was they were fighting towards the blue. तिमीले त आफै भने त टप 10 मा मरेपछि मात्र हुन्छ त्यो पनि 1 पोइन्ट मात्र दिन्छ भने हैन with those elims. I think that's huge. Yeah, could be coming into play also. We're looking into that game also. We अनि 8 9 10 त्यहाँसम्म त 1 पोइन्ट त आयो त नि from the more southern side. I think there were 2 teams. It was 6-2 and Stalwart trying to make their way in. बाकी के को पोइन्ट लाग्छ the road. They just went for the wide rotate onto the more eastern side and trying to actually get himself a good entry point. They just avoided the fight because they knew that Nigma had a strong position. Try and get into the better spot, try and take the fight. It was a little bit complicated to aim for that win because there was that third party from S2G, but still, really strong attempt from STE. They just tried to slowly but surely move up the rankings. They are currently looking to go for that 4th place and finally overtaking the side of Nextria and Infinity. A player that we also have to give credit to from Nova, I was mentioning him, it's going to be Jimmy. He was able to survive that fight between Alpha तिमीलाई and I think it goes to show के थाहा अर्को गेममा लिड हान्छ कि बा to the lack of order or मैले हेपेको छैन he's still contributing to the team wherever we might not be able to see it, but right there we were definitely able to see it with placement points. Just look at the difference here in eliminations just between quite a few of these teams. Nova at 96, next closest is 78, and then from there on it goes down to 65. But you look at Nigma Galaxy at 41, they have the 3rd least amount of eliminations. In the entire lobby, and yet are ranked Arjun, एकछिन सम्हाल है मेरो बाबाको कल आयो म तल गएको
Yeah, we talked this many times during PMPL, if it's the I PMPL will finals, try if it's the League East, League West, my we keep best. mentioning, right, you want to have that about 50-50 split every single time. How are you second place? That just goes to show that they're Chat super consistent when it comes to those placement points, but if they can improve throughout the next year on those elimination points alone, world champion maybe next year, like there's a clear chance because that is a small thing to improve upon, and they could go right to the moon next time. 100%. To the moon, indeed. I mean, maybe one thing that is helping them get these high placement points. What's that look for? You just gave me like a little kissy face there. You guys couldn't see it, but I don't know what's going on. I'm glad Max is between us right now. Is obviously OnePlus, our sponsor here at PMGC, the OnePlus 9 Pro, offering ultra smooth gameplay at 90 FPS. Maybe that's what's helping them survive for so long. They'll need to lock down the elimination game. I definitely agree here. Again, maybe they're being pampered too much over at the Fairmont Hotel in Singapore. But also, I mean, the fact is, they're able to almost win actually over $500,000 at this rate with just playing for this alone. And that's what Max is saying. Like, the way they're playing right now, if they are able to work within this year on working on those elims, working on how to be a little bit more aggressive, if you do have the position to be a little bit more aggressive, this could be a team that could contend a little bit more in Nova, if we ever see Nova again. I'm pretty sure we'll see Nova again in the future. But if they can work on that, and I mean, with Navi, let's talk about Navi for a second. Last year, the main question was that, are they going to be able to find an IGL? Can they actually use that fragging power that they have? Well, guess what? We have seen the improvement from Navi. It hasn't been to the likes that they might become a champion, but now they're maintaining themselves there within those top three. I find it super interesting because when you look back, now that we're at PMGC Grand Finals, right, you can look back on the entirety of this year, and I mentioned this many times, I do believe the Arabic region is the region that's potentially improved the most, right? And coming into it, they could have an entire new year, and they could come in even stronger into next PMGC, right, given another year of time. So not only do we have Enigma Galaxy performing well, that have improved significantly, but if you have other teams from the Arabic region that can make it to this stage, I think they could be a world champion next year. There's a clear chance. We got like our footballs from the region to put Turkey on the map. We got our Zeus to put Mongolia on the map. Maybe this is the team to put the Arabic region on the map as well. And also really quickly, while we do have a quick second, I want to give a shout out to Singtel here, our provider over in Singapore, our network provider, as they give 2 times lower latency for gaming. Everyone out there going to be wanting to pick one of those up. And maybe, Max, just maybe, it could help even me get into PMCO one day, even though PMCOs are no longer happening this next year. We could always try. We could try. Yeah. We should team up. We're definitely not going to make it, but we can say we tried. tried making a dream team. Like, who would be a dream team out of all of our talent? And I think when we did get our best players, we still wouldn't have qualified for anything. There's a reason we're talent and we're not professional players. Yeah, very true. Very true. But what about some other teams here? I mean, it's going to be my team to watch at some point when we do get back, and I'm going to like pre-call it now, though we'll obviously get to it in a second. Xavier. I mean, we talk about teams going under the radar like Nova did day one. They have been super under the radar, and I never expected a team from Vietnam who placed second in the East League Finals to actually kind of do this well, and to be more important, like the consistency between the finals. Yeah, I would almost compare them to football. It's not this year, but the year before that, the competitive season before that in 2020, where they would come into separate events, and sometimes they would have really good results. I'm thinking mainly World Invitational, right, where they had a really good result, looking to go in that top 3 position, then into the league stage, just the league stage in general for the East, drop off, then come back into the league finals. They're up and down from event to event. If they can find some type of consistency from like when they jump in different events throughout the year, they could be a team that could be extremely consistent. But right now, because I do not see that consistency, I always have that big question mark before entering an event where are they going to be playing at their top level, or are they going to be playing, unfortunately, where they just can't find that consistency, can't find those big games. So they've proven it once again. They can perform really well on this stage, but next event, it might be, I don't know, a PMPL, and they might just be dead last. I don't know. That's the thing. I can't really expect beforehand what's going to be happening for the Xavier because there's no big consistencies. When you said dead last, I automatically thought of just Fenerbahce. I mean, this was a team. I had to. With Fenerbahce, this was a team that was super consistent in the finals for West. You've heard me say it over and over again. But here, I mean, they're currently battling just to not be last. That's not where you want to be as a team. Hopefully, they'll be able to go back, watch some tape, readjust. I'm not sure if they're going to be able to do anything at this point of the tournament, right? Try to keep themselves, hopefully, out of the 16th place. But maybe they'll work on some stuff they're currently lacking. Let's be fair to them, though. I mean, the fact that they made it here means they're one of the best 16 teams in the world. I mean, we can talk about them being last place or not last place at the moment. We can talk about that battle, but you cannot deny the fact that they are one of the best teams in the world. And, I mean, this is just kind of shows that even at the very top level, the 0.01%,
it is still tough to take any of these teams on, and it could be a different take next year. But we do have a quick little recap of S2G here in this last match. And again, 7, you have to be proud. The thing is, we know Silas, he played here last year with Class Digital Athletics. We know the team split up a little bit, kind of went their own ways in different directions, and he's brought a lot of experience to this team that they desperately needed. But unfortunately, turning it on now here in the final day isn't going to be enough. However, it might get them a couple extra thousand, 50,000, 100,000 extra bucks in their pocket. Yeah, and that's something that we've been talking about. For a lot of these teams, I mean, the championship right now, I agree with what Blank was saying. I agree with what John was saying. The championship is looking like it's going to be going to Nova. So might as well just work your way up, get a bigger prize pool, and then be able to improve throughout the year as well. S2G had an amazing performance when we talk about the West. They dominated a Super Weekend. They dominated so much that they were able to literally just play a Super Weekend and not really try hard. They were able to just try different stuff. Hopefully that's a learning experience for them, right? Maybe they would have been able, maybe they should have just continued on to that domination, continue to what was working and not try something new. But once we get here, this is kind of what you were talking about earlier too, Max. When you go to a region, if you're dominated on a region, I'm thinking of Alpha 7, I'm thinking of Godlike, and once you show up to the globals, you have to be able to adjust, and you have to be able to adjust right away. Especially if it's your first time playing on this level, right? You must come into it like the first day. I don't expect you to do great, but you're going to use that as a great learning experience, adapt to what's not been going right, and hopefully it'll be going well for you at some point in time. But in this game, I really enjoyed what we were doing. We saw the clip just a few seconds ago, where they were playing onto more western hillside. And what that allows you to do is to make sure you're going to clear every single team coming in from Pachinki Hill. I believe we had Nova at one point. We had also Alpha 7. You had also Na'Vi. And you're just making sure you're keeping control of those teams, knowing exactly how they're going to rotate in. And then if you get rid of all those teams, you're never going to have to take care of what team's trying to enter from the west, and you can just 100% put your focus on 180 degrees of view right in front of you as you're trying to enter the circle. That is why they had such a good advantage, because in this fight in particular, they could put 100% of their focus on the Enigma Galaxy, and they knew as a fact no one was ever going to push that position because the fight was happening on the other side of the circle, and that's why they were able to get so much control at the end, was that huge split, because they just made sure the west was completely free. Yeah, and going back to Silas on that play right there, I love the usage of that Molly, right? Making sure that you are able to actually finish off those elims. Every elim is going to count a point, and right now there are that team that currently needs those points. We see Timber right here being able to take the initiative to be the aggressive player, and we have seen how well that has worked for Nova. So hopefully, this is what I'm hoping for, Max. I'm hoping a lot of teams look at what Nova was able to do. Look how they were able to surprise a lot of teams. We talked about it earlier. When they had to be defensive, they were not defensive. They were able to just throw off some of the other teams by being the aggressive team, and I'm hoping a lot of teams will be able to learn from this, as we're able to see there from Timber. Yeah, I mean, Nova is just a team that literally throw anything their way, they'll be able to make something work and come from it every time, and that's why the adaptability is so strong in this tournament, because even if they're playing edge, even if they're playing center, and we typically thought, right, they were going to be playing full center, here they're playing edge when the circle is not to their advantage, and they play it well when it's not even their main playstyle, which is so impressive. So if you can adapt every single time on these type of circles, you're going to be world champion eventually. Yeah, world champion eventually. Obviously, you have more years to come. I'm curious, though, to see, and I'm getting ahead of myself here, can Nova do it 3 times? I mean, they haven't done it twice just yet, but there is a world where they could not going to be enough stars on their, like, space on their jersey to put multiple stars. That's true. That's true. I don't think we have any money left to give them, because maybe they can provide they can provide all the money for next year's prize pool with how much they've won throughout the last 2 years. But we still have a lot of teams, contesting for these positions. We still have 2 matches left to come, but they are going to be happening on the other side of a break. So make sure you guys don't go anywhere. 2 matches left to go until we can crown our champion.
someone's going to take it. Down one coming up on Godlike's position. There is a fair few players behind them. Clutchgod already goes down, though. Oh, they're trading 1-for-1. Judy spraying around on the swivel, and Godlike fall of the hurdle. Down one gaming only have one knock as well. Excellent hold there, excellent position. Very, I would imagine, typically what happens for rivals, but maybe it'll change. Yet Kid goes down, Frozen finds the high ground, and once again, this man clutches it when no one else can. We can feel a little bit more comfortable to start moving down this hillside soon. Uh-oh, Godlike, they're still fighting. They find one Scry off the back of Action's buggy. In action on the broadside of this hill. Not really sure what you were trying to get done there. It's such a difficult rotate, sure, but Nova, though, is no easy task ahead of them. 3 players alive for Nova, and that's a great way to start, but that's given back twice as much as they got. An excellent nade from Kadur to see 2 down and leave Order all alone. Oh my for Nova, God! but it's nades everywhere. One more as well, and Order steps up big for Nova. Just Kadur, the nade man himself, gets a taste of his own medicine, and it's Nova to snatch it back. Next through, you take a tumble, and Nova put themselves on top. The defending champions stand tall. King 1000% the thief here of this game. We see Order in the front line do a little hop in, trying to get that intel, cooking that grenade. Rebo just chilling in the back seat. Order said goodbye with that grenade. Order, once again, back-to-back games, dominating. Here we go. Last 2 games until we do have our champion. And right now, Nova, I pretty much want to say they're like one decent result game away from closing things out and locking down that $1.5 million out of $6 million in our prize pool. Jason Kaplan, Maxman, 7 Worlds Gaming. So we're going to be covering the last 2 games. So hopefully none of us get replaced here in the last few, because that'd be a little bit awkward. Why you were looking at me when you said that? I was looking at both of you, to be fair. Because I'm going to fight for you so you don't get replaced. But we do actually, speaking of replacing, if I'm not mistaken, Max, you did mention that Godlike are going to be subbing a player into this game. Yeah, I think it's Sunrush they're going to be bringing in onto this game. So you know what? Why not get some experience right now? You know, it's going to be hard to move away from those bottom positions right now for your team. So there's no other way to replicate what's happening here. You could do scrims, you could do PMPLs, you could do whatever event or whatever's going to happen in the structure for India. You're not going to be able to replicate and have such experience versus international teams. So bring it in. You know, have a little more fun. I want to see that Maxman curse. He comes out, he drops 10 eliminations, first match in PMGC, and then we're like, well, why did they use him the whole time? But we do have Miramar coming up next. We do, and I'm going to be looking at 628. This is a team that has been very consistent when it comes to Miramar. They've been able to get a chicken dinner with 16 ilms. They've been able to get a chicken dinner already today with 10 ilms. And I feel like if they're going to try to make a push for that second place, they might be able to do it here in this match, because the difference right now between themselves and second place is about 15 points. And I feel like that's something that we need to start taking a closer look. Couple kills. I'm looking at Enigma Galaxy. They really haven't been able to get the ilms right. They really haven't been able to capitalize when they're supposed to capitalize. And these teams at the bottom that are within that edge, within those 17 points, might be able to capitalize when they're not able to. Top 3. No, they're just one decent game, not even just a decent game, just an average game. If the top teams are not able to perform, and we've been talking about it, right? Second, third, fourth place, they're kind of throwing 7 out of the impression. Yeah. So there's a clear opportunity for teams that were on the bottom of that first page to jump up, get an extra 100,000 or such in terms of prize pool in these last few games. So these are super important, not for first place, but that top 3 could be completely different between now and after our next 2 games. Yep. I mean, that pressure initially started for those teams at the beginning of the day was, can they catch Nova? Now it's become, can they just hold their position, right? Can they just hold off the other teams? And obviously, as we get into our teams to watch, we can maybe talk about that a little bit. For me, I mentioned before the break, D Xavier, that's going to be my team to watch, because again, they've been super silent, but they've been deadly. And they've been slowly climbing up those leaderboards and eliminations, some decent placement points. And I was kind of critical, about them coming in from Vietnam, just because we didn't really see them much in league stage. And then in the finals, they're able to get second place overall. This team definitely surprises, and it seems to be these smaller format tournaments, which is 3 days of play, is where they excel. Yeah, exactly. D Xavier, especially, I remember back in the World League, World Invitation, where they surprised us. I know we did not expect them to perform that well.
They did at the very end, but it's just I want to see a little bit more continuity from tournament to tournament. I think they can do so, especially performing this well in the tournament. For my pick, personally, I'm going to go with Nova. We've been alluding to them, getting that really good game and just being impossible to take over. So I think it's going to happen. Why eventually. are they the team to watch for you? Because these, team to watch / potentially going to get a win. It's just because. I like how he says. Yes, I like how he says potentially a team that's going to win when we move away from who he predicts going to win, because he's been right a couple of times down this event. It's actually weird. I'm the impression my curse is going like lower. Probably because Zute's doing a viewer party, so he's probably just helping me out. I just don't look that bad. Whoa! I mean, don't hit Zute like that, man. 7. What about you? I think you mentioned STE before. Yes, yeah, that's the one I'm gonna go with. I gotta go with 628, just because of the reason why I talked about consistency with Miramar. They're with that team right now that can strike, and if they are able to take advantage of this last Miramar. But मतलब नॉर्दर्न जाने वाली टीम्स को ऑलरेडी दिक्कत हो गई, ऐसे में नावी लॉस एंजल्स के नीचे उतर सकती है, और हमें पता है नावी के लिए कितना क्रूशियल ये गेम बन जाता है। ला कोब्रेरिया उनका प्राइमरी ड्रॉप है, बट लॉस एंजल्स के नीचे उतरना ये टीम अभी के लिए चाह सकती है। अल्फा 7 उतर रही है, वो पीछे से एल्पोजो जाएंगे। देखो गैलेक्सी कल के भी आपस में एक भिड़ंत हुई थी, इस बार देखिए थोड़ा आगे जाकर के उतर रहे हैं लोग जी। आई थिंक मैं एक्चुअली अल्फा 7 के बारे में बात करने वाला था। मैं कंफ्यूज था कि इस बार टोरे हमूडा कैंपो मिलिटार की तरफ जाएंगे या फिर एल्पोजो, डिसाइडिंग टू गो फॉर एल्पोजो। ओके, चलिए जल्द से जल्द जाएंगे, वहां पे गाड़ियां भी मिल जाएंगी, रुक जाएंगे, तो उनका जो डिफॉल्ट रोटेशन है वो निभा सकते हैं। बट ये गेम अगेन लॉस लियोनेस के सिटी के अंदर हमने बार बार फाइट्स देखी है, 6-8 गोइंग अप अगेंस्ट फेनरबाचे। बट टीम सीक्रेट, और ये टीम सीक्रेट का सेकेंडरी ड्रॉप है। नावी भी यहाँ पे उतर चुके हैं, सर्दन लॉस लियोनेस के साइड उतरना पसंद करते हैं, तो शायद इन दोनों के बीच में थोड़ी देर में अगर मुठभेड़ देखने को मिलती। पहले भी इनफैक्ट अगर आपको याद होगा इनिशियल कुछ दिनों में मिनास लॉस ईगोस की तरफ फ्यूरियस गेमिंग के प्लेयर्स भी नजर आ रहे थे, बट इस बार इन्होंने एक अलग ही रास्ता अपने लिए अपना लिया है। नावी वुड नॉट वांट टू लूज दिस गेम अगर फाइट होती, क्योंकि टीम सीक्रेट क्रूज द वैल को छोड़ करके नीचे आई है, और पूरा जोन, पूरा सर्कल गया है ऊपर की तरफ को। इस समय हमें जो जोन है वो बनता हुआ नजर आया। इन्फिनिटी के प्लेयर्स वो तो चुमासेरा से हर बार रोटेट करते हैं, थोड़ा सा लॉस के साइड पर जाते हैं, देन वहां से नॉर्दर्न रोटेशंस ये लोग करते नजर आते हैं। ऐसे में एल अजार में डजेवियर जाती है, उनके लिए काफी इजी, काफी डिसेंट सी जगह रहेगी उनको जाने के लिए। बट देन अगेन S2G ये टीम हमें पता है वो हासियंदा के एरिया तक जाते हुए नजर आते हैं, वो आराम से वहां तक पहुंचेंगे भी। अभी के लिए अगर बात करें S2G इस गेम में भी आई थिंक कहीं ना कहीं वो शायद हमारा यही मानना रहेगा कि दिल खोल के खेलने वाली है, फिनिशेस के लिए काफी ज्यादा जाएंगी ये टीम। बट देन अगेन गॉड लाइक के प्लेयर्स, देयर यू हैव इट। जी हाँ देवियों सज्जनों, यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिल चुका है, सोमराज खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक अलग ड्रॉप पे जा रहे हैं, ग्रेवयार्ड के आसपास। आई मीन ग्लाइड जहां तक कर सकते थे वहां तक ग्लाइड किया, अभी तो यही पूरी बात हो जाती है, जहां तक ये लोग जा सकते थे वहीं तक ये लोग जाते हुए नजर आए। बट खैर इन सब चीजों के बाद आप देखिए नियो की जगह है, बिल्कुल आए जरूर है नियो की जगह, लेकिन कॉन्वर्सेशन पूरा इसी चीज का होता है कि फाइट कैसे लेंगे, क्योंकि ज़ीगॉड ही यहाँ पर थोड़े बहुत शॉट्स लेते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। बट ये हमेशा ये होता रहेगा। तीसरी बार मैंने देखा है नॉक्स इसी पोजीशन पे शांति के द्वारा नॉक हुए। क्लासिक फेनरबाचे, ये अगर बात करें 6-8 का जो दबदबा मिरामार के अंदर हमने देखा है, कल भी मिरामार में काफ़ी बेहतरीन शुरुआत करी थी, आज भी काफ़ी बेहतरीन शुरुआत। इनफैक्ट इनकी जो एवरेज की बात करें 16 का एवरेज लेके चल रहे हैं मिरामार के मैप के अंदर, हाईएस्ट देन एनीबडी एल्स इन द लॉबी। और नोवा का भी काफ़ी अच्छा एवरेज चल रहा था, बट देन अगेन ओशन कहीं ना कहीं आज के जो कुछ ऑफ परफॉर्मेंसेस के बदौलत वो अफेक्ट हुआ है। बट फिलहाल के लिए अगर नजर डालने से आपने कहा एक नॉर्दर्न जोन बन रहा है, राइट। अगर गॉड लाइक सही टाइम पे अपने ड्रॉप्स पे पहुंच जाती है, अच्छी तरीके से लूट करती है, तो आई थिंक शायद एक अच्छा गेम हो सकता है। रोजन को देखिए, उनका मतलब जो स्टाइल रहता है वो यहाँ पर वो दिखा रहे थे। 10 असिस्ट हैं इनके पास। अगर इस प्लेयर की बात करें, 5 रेस्क्यूज, काफ़ी अच्छे स्टार्ट्स ऑफ इस प्लेयर ने अपने लिए बना करके रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा आउटशाइन कर रहे हैं। ऑलराइट, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, आराम से यहाँ से ऊपर भी आ सकते, कोई दिक्कत ऐसा होगी नहीं। बट यहाँ पर आप देखिए ईजी ने पहले भी यही हुआ था, काफ़ी ओपन में इन्होंने प्लेयर को पकड़ा था पहले वाले मिरामार में जब वो गाड़ी के लिए गए थे। इस बार भी यही हुआ, काफ़ी ओपन में सेम चीज़। comes down to the conversation कि आप अपनी सराउंडिंग्स, क्योंकि अब तो मैं बोलूँगा अब एक्चुअली फेनरबाचे को ये रट जाना चाहिए कि 6-8 आ ही रही है यहाँ पे। आप देखिए इंटरेस्टिंगली वैलेडेमार के तरफ निग्मा गैलेक्सी उतर के वो वहाँ पे लूट कर रहे हैं। सो ये आज इतने एंड तक हम लोग को फाइनली उनका वो ड्रॉप देखने को मिला।
बट गॉड लाइक आई थिंक S2G के साथ जरूर चाहेंगे फाइट लेना, बट प्रीटी श्योर S2G के प्लेयर्स को ऑलरेडी भनक लग चुकी है। कालसी ने शॉट ले लिया और पहले में ही सोमराज को नॉक फिनिश। बैक टू द लॉबी। गॉड लाइक के प्लेयर सिर्फ एक रोटेशन कर रहे थे एंड वेल दे थॉट इसमें सोमराज भी देखिए कुछ कर नहीं सकते थे, बिकॉज एक प्लेयर थे जस्ट छुप करके, आपको पता है कि टेढ़ा एंगल लेकर के स्प्रेस दे रहे होते हैं, तो गॉड लाइक के प्लेयर्स उनका मेजर फोकस था कि निकल जाए यहाँ से, चले जाए। वेल दिस जस्ट हैपेंड। और नोवा के प्लेयर्स की बात करें तो टैम ऑन सुम को भी यहाँ पर पिक किया, जूनी के ऊपर अब डैमेज देने की कोशिश, इनफैक्ट जूनी को हटना पड़ेगा, लेकिन वो हटेंगे तो कैल्सी एक और यहाँ पर पिक निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कैल्सी की तो मैं बोलूंगा किस्मत थोड़ी सी चमकी है इस समय, पहले एक प्लेयर को पिक किया, फिर एक और प्लेयर उनके साइड से जा रहे थे तो उनको भी यहाँ पर ये पिक करते नजर आए, बट M249 लेकर के अब इस घर के अंदर ही जाना चाहेंगे। फॉरेस्ट बिल्कुल सामने, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा कैल्सी के द्वारा, खुद को वापस से बाहर लेकर के आएंगे, अपना बैकअप अभी बुलाना जरूर चाहेंगे, खुद हील यहाँ पर करना चाहते जरूर हैं, बट इन सब के बीच में साइलेंस भी आ चुके हैं और डैम के प्लेयर्स बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। पावियान अगर पिक हो गए, सबसे पहले पिक होने वाली टीम बन जाएगी डैमॉन एलिमिनेटेड। जी हाँ, डैमॉन के जो कमबैक करने के सपने थे आज की शाम में, वो आई थिंक कहीं ना कहीं धुंधला सा लग रहा है, बट फिलहाल के लिए S2G के प्लेयर्स ये एक अलग ही गतिविधि में चल रहे हैं। जो मोमेंटम गेम की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स पूरा जो दिल खोल के खेलने की बात होती है वैसे ही कुछ खेल रहे हैं। फाइट्स लेने से बिल्कुल भी कतरा नहीं रहे, एक के बाद एक फाइट्स लेते नजर आ रहे हैं। पहले यहाँ पे सोमराज को निकाला, अभी डैमॉन गेमिंग को भी बाहर कर दिया। सो गॉड लाइक के लिए अर्ली ऑन एक बहुत बड़ा झटका, जहाँ पे हम लोग को लग रहा था कि शायद एक अच्छा गेम बन सकता है उनके लिए। सोमराज अभी लॉबी के अंदर एंटर किए ही थे जी। एंड सोमराज का हमने देखा है कि उनका एक्चुअली मिरामार बहुत स्ट्रॉन्ग सूट होता था, बट वही बात है कि उनको कंफर्ट जोन में होना चाहिए कि फाइट लेने के लिए वो तैयार हो, तो रोटेशन में जा रहे थे और उसमें उनको पकड़ा गया। क्योंकि आप खुद सोचिए, और यहाँ पर कैल्सी और भी प्लेयर्स को पिक कर रहे हैं इस जगह से, और प्लेयर्स को दिक्कतें देते हुए नजर आ रहे हैं। ये घर इन्होंने क्या पकड़ा, 4 फिनिशेस ये इस जगह से ले चुके हैं। बट खैर बैक टू द कॉन्वर्सेशन, हमने उनको इंडियन सर्किट में भी देखा था, जिस तरीके से वो खेल रहे थे, उनका मिरामारी बहुत स्ट्रॉन्ग सूट नजर आ रहा था, बट देन अगेन एक बेसिक स्टैंडर्ड रोटेशन थी, उसके बीच में वो फंस गए और दिक्कत उनको आई। हालांकि अभी भी बाकी प्लेयर्स गॉड लाइक के हैं, देखते हैं किस तरीके से खेल पाते, क्योंकि इनको 4 राइवल्स के ऊपर जाना है इस मैच में। ये मैच 4 राइवल्स से जितना पार पा सके उतना बढ़िया रहेगा। अगले मैच में टीम सीक्रेट को देख सकते हैं, क्योंकि वो भी खैर इस मैच में पॉइंट्स, दोनों टीमें अपने पॉइंट्स वो भी बढ़ाना चाहेंगी। आइडियली कहीं ना कहीं नावी का गेम हमेशा ऐसे सर्कल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। अगर आप बात करें जो सर्दन साइड पे उतरे, पूरा टाइम लेके एक लंबा रोटेशन मारेंगे ईस्टर्न साइड से लेके नॉर्दर्न साइड ओएसिस से अंदर आने का प्रयास रहता है। वहाँ पे अल्फा 7 की भी एक सिमिलर थॉट प्रोसेस रहती है, तो मैं काफ़ी उत्सुक हूँ, देखना चाहूँगा कि यहाँ पे इस गेम में चिकन डिनर कौन लाता है। निग्मा गैलेक्सी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण गेम, एंड इस बार वो वेस्टर्न साइड से रोटेट कर रहे हैं, एल्पोजो से गुजरते हुए वो भी सर्कल के अंदर रोटेट करना चाहेंगे, आइडियली नॉर्दर्न साइड की तरफ से। बट सेंटर के तरफ काफ़ी अच्छा क्लस्टर हम लोग को बनता हुआ नजर आ रहा है। टीम सीक्रेट के पास भी एक अच्छा चांस है इस गेम में एक अच्छा प्रदर्शन दिखाने का। फिलहाल फ्यूरियस गेमिंग के प्लेयर्स भी ईस्टर्न साइड से रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे कांटे की तरह बन के जरूर निकल सकते हैं डार्क शावियर के प्लेयर्स, बट देखना यही रहेगा कि क्या वो फाइट इनिशिएट होता है। डेफिनेटली यही सवाल बन जाता है कि क्या वो फाइट इनिशिएट हो पाएगा। इन्फिनिटी के प्लेयर्स थोड़ा सा ऊपर के एंगल्स यहाँ पर अपने लिए बना रहे हैं, ये थोड़ा लेट रोटेट करते हैं ज़रूर, लेकिन सर्कल के पीछे काफ़ी ज़्यादा अच्छे पोजीशन में ये लोग आ चुके हैं। इनफैक्ट सर्कल के अंदर ही हैं, तो इनका जो चुमा सर का रोटेशन रहता है वो सीधा पावर ग्रिड पर जाकर के ऑलराइट खत्म होता हुआ नजर आता है। नावी के प्लेयर्स अराउंड द जोन अभी भी जा रहे हैं, ब्लू जोन का डैमेज अभी भी हल्का फुल्का ले रहे हैं, उनको फुली बूस्टेड कुछ प्लेयर्स ने यहाँ पर कर रखा है जो उनको ऑब्वियसली हेल्प करेगा। एंड देन फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द जोन वो लोग जाते नजर आ रहे हैं। वहीं पर नेक्स्ट रुया को देखें तो नेक्स्ट रुया के पीछे 4 राइवल्स के प्लेयर्स, जो नेक्स्ट रुया का घर है उसके पीछे ये लोग एक हिल पर आ चुके हैं। सो 4 राइवल्स डेफिनेटली उस हिल से इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट रुया की ले सकती है। एंड देन देयर इज 6 to 8 जो अभी तो जोन के बाहर हैं, बट हमें पता है आखिरी सर्कल से अगर सर्वाइव करे तो जोन के अंदर यही एक टीम होती है। गॉड लाइक की पोजीशनिंग देखिए, अल्फा 7 के ठीक बगल में जॉनथन यहाँ पे एक अलग दिशा में नजर आ रहे हैं। सॉर्ट ऑफ अ सिमिलर सर्कल, हम लोग को ऐसा सर्कल देखने को पहले भी मिल चुका है, बट इसका जो नेक्स्ट शिफ्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिलहाल के लिए सेंटर की तरफ काफ़ी सारी टीम्स मौजूद है यहाँ पे। अल्फा 7 अगेन एक डोमिनेटिंग
आपने कहा था स्टालवर्ट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम हो जाता है। नोवा को ऑफ कोर्स पता चल चुका है कि इस टूर्नामेंट के चैंपियंस तो वही होने वाले हैं। बैक टू बैक अपना टाइटल इन्होंने डिफेंड कर लिया है एंड काफ़ी मुश्किल हो जाता है यू नो बैक टू बैक टाइटल डिफेंड करना, स्पेशली एक ऐसे गेम के अंदर जहाँ पे इतनी सारी नई टीम्स बन के आ रही है। बट देन अगेन नोवा जस्ट बीइंग नोवा, बट ये गेम नावी, NGX, Stalwarts, Infinity, NRX, even 628 अगर इस गेम में फिर से एक चिकन डिनर ले आती है, ओशन यू नेवर नो, आखिरी गेम काफ़ी मसालेदार हो सकता है। डेफिनेटली, और मेरा हमारा उनका स्ट्रॉन्ग सूट है भी जो अभी वो खेल रहे हैं, तो ऐसे में अगर उनको पोजिशनिंग बहुत अच्छी मिल गई देन जस्ट लाइक यू सेड यू नेवर नो, या आई मीन थोड़ी देर में डेफिनेटली उसका जवाब मिलेगा। अगले 20 मिनट के बाद हमें पता चीज़ें ज़रूर चल जाएंगी। 10 मिनट के मार्कर को खैर हम लोग छू चुके हैं और अगले 25 सेकंड के अंदर हमारा जो दूसरा सर्कल है वो भी क्लोज इन करना शुरू कर जाएगा। पिकार्डो के पीछे अभी 628 के प्लेयर्स हमें नजर आएंगे और वहीं पर फ्यूरियस गेमिंग के प्लेयर्स की बात करें, ये लोग अभी भी अपना एक मूवमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। तोरे अहुमादा की साइड पर एक क्लस्टर जो है थोड़ा बहुत बन रहा है, हालांकि सर्कल वहाँ नहीं है तो उन सब टीम्स को सर्कल के अंदर आना पड़ेगा। 3 टीम है इनफैक्ट, टीम सीक्रेट वहाँ पर हमें नजर आती है, फ्यूरियस के प्लेयर्स वहाँ पर नजर आते हैं और एक और टीम जो है फेनरबाचे वो हमें नजर नहीं हो पाया। सीक्वेंस मेरे माइंड में ज्यादा चल रहा है। आपको पता है सीक्वेंस? देखिए इसीलिए कहते हैं थोड़ा मैथ्स कम पढ़िए, ये सब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, घर वाले बोलते हैं पढ़ाई पर ध्यान दो और आप बोल रहे हैं गेम पर ध्यान दो। देखिए इसी से ही आपका गुजारा होता है। ये तो है, 2 वक्त की रोटी इसी से आती है। बट खैर नावी के प्लेयर्स अभी थोड़ा अराउंड द सर्कल हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं। एंड डजेवियर जो एल पर रहती है, आप देखिए वो लोग वाटर ट्रीटमेंट की साइड तक अभी पहुंच रहे हैं। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर सर्कल को देख के या निग्मा गैलेक्सी ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है टॉप लेफ्ट रोटेशन टिपिकल निग्मा गैलेक्सी, बस इस बार गॉड लाइक अगर बात करें यहाँ पे नॉर्दर्न साइड से एंटर कर रही है अल्फा 7 के साथ काफी इंटरेस्टिंग फाइट हो सकता है। बट उससे पहले 4 राइवल्स अलायंस यहाँ पे आज के दिन की शुरुआत उन्होंने काफी अच्छे तरीके से करी थी। बट देन अगेन सेंटर खेलने के चक्कर में, हाई ग्राउंड लेने के चक्कर में बहुत बार ऐसा भी हो चुका है कि फंस जाते हैं। 2-3 जगहों से उनके ऊपर शॉट्स आ जाते हैं, देन मल्टीपल एंगेजमेंट्स वो ले नहीं पाते। जब आप सेंटर ले रहे हो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके चारों के चारों प्लेयर्स इंडिविजुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दैट इज वन ऑफ द एरियाज 4 राइवल्स अलायंस उस पर जरूर काम करने वाली है। फिलहाल के लिए नावी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम, कहीं ना कहीं उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि निग्मा गैलेक्सी इस गेम में जल्दी बाहर चली जाती है, अगर उनको वो सेकंड पोजीशन लेना पड़ेगा, वरना $3 लाख का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल एक बड़ा नुकसान यहाँ पर होता नजर आ सकता है। सैन मार्टिन के पीछे की बात करें तो वहाँ पर आप देखिए 628 स्टालवर्ट के काफी करीब, एंड सरप्राइजिंगली स्टालवर्ट ने हिल नहीं पकड़ी अभी तक। जो जिस हिल की हम बात करते हैं कि ये प्लेयर्स हिल पकड़ लेते हैं, सरप्राइजिंगली इन लोगों ने वो हिल अभी तक नहीं पकड़ी है जिस तरीके से ये होता हुआ नजर आता जरूर है। बट वेल फ्रॉम अराउंड द जोन्स नावी के प्लेयर्स जा रहे हैं। इनफैक्ट ये जो नेक्स्ट सर्कल शिफ्ट रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। नेक्स्ट रूया के प्लेयर्स कल तक फर्स्ट डे पे बहुत ही बेहतरीन खेल रहे थे एंड सडनली फाइनल डे पे आके कहीं ना कहीं डगमगाते हुए नजर आए हैं। अभी के लिए ये जो सर्कल शिफ्ट वाटर ट्रीटमेंट के वेस्टर्न साइड पे गया है, क्रिएटिव फील्ड्स के अराउंड भी एक अच्छा खासा रिच है जिसका फायदा आई थिंक मे बी कुछ टीम्स जरूर उठा सकती हैं। बट फिलहाल के लिए फ्यूरियस गेमिंग के प्लेयर्स यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं नावी को ऑफ गार्ड स्पॉट करने के लिए, एंड टिक्सी के ऊपर शॉट्स लेने की प्रयास जरूर किया था यहाँ पे स्क्रीम ने, बट ऊपर से दूसरे छोर से यहाँ पे उनके ऊपर शॉट पड़ा। बट मैटिक का ग्रेनेड जाता हुआ स्क्रीम की तरफ शायद ग्रेनेड से नॉक कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट दूसरे छोर पे हम लोग को टीम सीक्रेट के प्लेयर्स यहाँ पे गॉड लाइक के साथ फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। आई शॉट्स ने जी गॉड को पिक जरूर किया, गॉड लाइक पे से थोड़ा बैकफुट पर यहाँ पर हमें नजर आती है। मिकू एक प्लेयर स्क्रीम को यहाँ पर फिनिश करते हुए नजर आएंगे और वहीं पर जुलियन को भी पिक किया जाएगा। इन्फिनिटी के प्लेयर्स उन पर थोड़ा अभी के लिए हावी होते हुए नजर है, बट टीम सीक्रेट बहुत ज्यादा एग्रेसिव यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। डजेवियर को उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज ही कर दिया इस सब के बीच में, आई शॉट्स देख चुके, बट जॉनथन किट को यहाँ पर नॉक और इंस्टेंटली पिक करते हुए नजर आएंगे। अपनी टीम का खाता यहाँ पर खोलते नजर आ रहे हैं। डक की तरफ से नीच किए जाएंगे, उनको पता चल चुका है कि आई शॉट बिल्कुल सामने की तरफ को आ रहे हैं। डक के पास 75 गोलियां इस समय M249 के अंदर, बट उनको उनके बैकअप का भी इंतजार है। एक अच्छी वाइज डिसीजनिंग यहाँ पर डक की तरफ से हो रही है कि ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको पता है टीम्स इनफैक्ट मल्टीपल प्लेयर्स इस जगह पर हो सकते हैं, तो वो आई शॉट्स को अपनी तरफ ल्योर इन करना चाहते थे। बट आई शॉट्स उस गाड़ी का कवर अपने लिए बना करके जस्ट बूस्ट अप होना चाहेंगे। ऑब्वियसली इनके पास बैंडेजेस बचते हैं और थोड़े बहुत बूस्टर्स बचते हैं, उसके अलावा अभी के लिए कुछ नहीं। बट अगर किसी और ने इनको स्पॉट किया तो इनको टेक डाउन पीछे से किया जा सकता है। बट रबीज यूएमपी रीलोड करनी जरूरी है, अभी के लिए रीलोड आराम से कर भी लेंगे, बट उसके बाद आई शॉट्स फंस चुके हैं इस फील्डिंग में। यहाँ पे
कहीं ना कहीं डाश एवियर के प्लेयर्स जरूर आगे फाइट थे लेना ना। चाहेंगे। इनफैक्ट अगर ऐसे थे पोजीशन ना, में थे ना। उन्होंने पकड़ा है, लैम्बोर्गिनी की बना ना। पोजीशनिंग देखिए पीछे की तरफ से काफी अच्छा कवर फायर बना, उनकी बना। तरफ आ सकता है। अभी हाँ। के लिए राबीज ने यहाँ पे आईशॉट को नॉक भी ऑलरेडी हो चुके हैं, फिनिश भी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नावी के प्लेयर्स हाई ग्राउंड मेंटेन करते मैले के हुए तिमीले Fury भने के थे, players की मैले तरफ भने थे कि काफी तिमीले भने करीब थे जा बे। चुके हैं। यहाँ पे टेक्सी ऑफ कोर्स शेड में उनको पकड़ रखा है, अगर एक लो टॉस स्मॉल टॉप फेक भी देते हैं तब दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं, बट नो टिक्सी के इरादे कुछ अलग हैं। यहाँ से हाँ। रिट्रीट कर रहे हैं। नावी को आई थिंक अपना रोटेशन निभाना चाहिए एंड ए मतलब $20 पुगिसक्यो। टिक्सी ने एक बहुत वाइज अप्रोच करी कि उन्होंने यहाँ से फाइट छोड़ ही दी। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रिगा उनको एक्चुअली अगर चाहते तो वो शूट कर सकते थे बाहर निकलने, बट वही बात है कि उनको पता नहीं था कि प्लेयर्स कहाँ पर हैं, क्या हुआ। बट खैर इन सब चीजों के बाद आप देखिए सेनेटेक्सा यहाँ पर M16 उनके पास है जरूर, दिक्कतें बहुत ज्यादा बनती हुई नजर आएंगे। और वहीं पर डाजेवियर अल्फा 7 आई मीन खै म हेरेर काफी भन्छु ला। ज्यादा मुश्किलों म में हेर्छु एक पहिला, दूसरे मैले के हेरेको against छैन ये लोग अहिलेसम्म। डाजेवियर अभी एक फाइट लेकर के आए थे एंड आगे भी मुश्किलें बनाते हुए नजर आ अहिले हेर्न सकते हैं। मिल्दैन वहीं यार पर नावी मैले। के प्लेयर्स जो हमने रोटेशन अहिले की हेर्न बात करी थी मिल्दैन मैले। पिक्सेल्स, उस रोटेशन में यो सकेपछि उनको अब दो टीमों से त्यो पार पाना सकेपछि पड़ेगा। हेरेर भन्छु के गर्नुपर्ने। अब देखिए इनफैक्ट जिस तरीके से फाइट्स हो रही है, 4 राइवल्स अलायंस अगेन बहुत ही अच्छा पोजीशन इन्होंने मेंटेन कर हिंदी में रखा हेर्दैछु म है। त यार। शिफ्ट ओ माय गॉड निग्मा गैलेक्सी के झोले में आ चुका है। इंग्लिश में कहीं बुझिएन, Alpha 7 बरु के हिंदी players में भी बरु काफी हेर्दै मलाई के करीब, जान्छ। chaos next to या भी आ चुके हैं। 6 to 8 ने भी रोटेशन निभा दिया एंड किसी भी क्षण आई थिंक निग्मा गैलेक्सी के साथ फाइट ले सकते हैं, मे बी इन द लेटर फ्यूचर, क्योंकि अलग-अलग कंपाउंड्स में लगायो मौजूद है, ल ठिक छ। अलग-अलग टीम्स त्यसो आज भरे फेस गेम आउने वाला छ। ये गेम उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट। नावी अहिले अगेन के लाइभ गर्न आँटेछ? बट यहाँ पे एक दूसरी फाइट चलती हुई, के को? डाश चैंपियन ऑलरेडी आ चुकी है अल्फा 7 के साथ एंगेज करने के लिए एंड राबीज ने ऑलरेडी एक नॉक निकाल लिया है। कारियो जस्ट टीपीपी लेकर के देख रहे हैं, एक नॉक यहाँ पर आराम से निकालेंगे, बट कारियो इज बर्निंग राइट नाउ। वो जो मोलोटॉव का डैमेज उनके ऊपर आता है, माफियोसो रेवो भी पहुंच चुके हैं। डाजेवियर का एक इकलौता प्लेयर यहाँ पर बचा हुआ। कारियो डजंट केयर, वो तो आगे की तरफ को ही जाना चाहते हैं। यहाँ पर नेज करने की कोशिश हो सकती है, लैम्बोर्गिनी के द्वारा अच्छे नेज जा रहे हैं, इनफैक्ट डैमेज देने की कोशिश थी बट कारगर ऐसा नहीं हो पाया। लैम्बोर्गिनी को अगर हम लोग बात करें, अकेले अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। मोलोटॉव्स किए जा रहे हैं, थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, जो उनका ही विजन ब्लॉक कर रहे हैं। लैम्बोर्गिनी वाज बर्निंग नाउ, ही स्टिल सर्वाइविंग। काफी कम एचपी पर फर्स्ट एड लगाने की आवाज डेफिनेटली प्लेयर्स को आ चुकी होगी, बट उनको अब आगे मूव करना पड़ेगा। नेड आया है लैम्बोर्गिनी के ऊपर, इनफैक्ट नेड नहीं तो गोलियां उनको लेकर के जाते हुए। दैट अ नेड दो, yes it was। अभी भी अल्फा 7 टीम चार एलिमिनेटेड और एक बहुत एग्रेसिव मूव था ये इनकी तरफ से, और इन सब के बीच में नोवा 200 पॉइंट्स कंप्लीट करते हुए फाइनली नोवा ने 200 पॉइंट्स अपना कंप्लीट कर लिया, बट यहाँ पे उनको भेंट भी चढ़ा दी गई है। यहाँ पे टिगर के द्वारा देखने को मिला नॉक। मीरा का फाइट खतरा हुन्छ नि। जोन के बाहर है तो ऑब्वियसली एक प्लेयर नोवा के उनको रेस्ट देंगे, पैराबॉय को दूसरे प्लेयर कवर फायर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है कितने देर तक टिगर अपना संयम यहाँ पे बना के रख पाते, क्या एक और प्लेयर को नॉक कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे हिंदी में हेर्न जोस मजा आउँदैछ। जीवित तो है, बट एट द सेम टाइम नोवा के रोटेशन टाइमिंग्स में यहाँ पे फेर बदलाव हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। सबके बीच में गॉड लाइक के प्लेयर्स की रोटेशन उन्होंने बदल दी थी, बट वहीं पर फोर राइवल्स के लिए तैयार नहीं थे। फोर राइवल्स के प्लेयर क्लच गॉड को टेक डाउन करेंगे, मतलब गॉड लाइक के अकेले प्लेयर जॉनथन यहाँ पर बचे हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी प्लेयर हैं, सर्वाइव करना चाहते थे बट इन्फिनिटी के मेला उनको स्पॉट कर जरूर चुके हैं। उन्होंने गाड़ी रोकी एक छोटा सा शैक देख करके, और उस शैक पर नजरें यहाँ पर इन्फिनिटी के प्लेयर्स की। नोवा के प्लेयर्स की अगर बात करें, उनके भी प्लेयर्स को दिक्कतें थोड़ी बहुत आ रही है। प्ले जोन एक प्लेयर को टेक डाउन यहाँ पर करता हुआ, बट देन चौथा ही सर्कल है, दिक्कतें थोड़ी बहुत यहाँ पर बनाता हुआ नजर आएगा। ऑर्डर थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, वो टीम सीक्रेट के प्लेयर्स उनके लिए तैयार रहेंगे। अराउंड द जोन ये जो फाइट है हमें होती हुई नजर आ सकती है, देखना पड़ेगा किस तरीके से राउंड 7 फाइट है, लेकिन अल्फा 7 के माफियोसो को डाउन करते नजर आएंगे ऑर्डर, और अपनी टीम को शायद यहाँ पर बोला जाएगा कि हम लोग उस टीम अल्फा 7 के लिए फील्डिंग बैठा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर टीम सीक्रेट थोड़ी दिक्कतें तो दे सकती है। हालांकि डैमेज इतना ज्यादा तो ऐसा नहीं पड़ रहा, बट नोवा के प्लेयर्स तैयार हैं रश करने के लिए, चार्ज करने के लिए। आधे रेडी फॉर इट नहीं, वो पीछे वाला घर पकड़ रहे हैं, एक अच्छी चॉइस। हमेशा इन एरियाज के अराउंड नोवा खेलना पसंद करती है, राइट, बट फिलहाल के लिए अल्फा 7 का ये जो गेम है काफी बेहतरीन गया है। ऑर्डर ऑफ गार्ड पकड़े जा सकते हैं, जी हाँ, सेना टेक्सा ने उनकी गाड़ी फोड़ दी, बट नावी के प्लेयर्स हाई ग्राउंड लेके एस्टैब्लिश करके बैठे हुए हैं। अभी भी नावी के लिए एक अच्छा गेम हो सकता है। निग्मा गैलेक्सी इन द मीनवाइल सेंटर एंजॉय करते हुए, आई थिंक कहीं ना कहीं एक सेफर अप्रोच रहने वाला है। निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स बस प्रार्थना यही करेंगे, बट फिलहाल के लिए जॉनथन के सामने यहाँ पे एक्शन और स्क्राई दोनों है। क्या जॉनथन यहाँ पे कुछ बेहतरीन कर सकते हैं, बट इन द मीनवाइल मेला का साथ आता हुआ एक्शन को कर दिया काफी लो, बट एट द सेम टाइम अगर जॉनथन स्पॉट हो जाते हैं
उनके ऊपर ही ये दावा बोल देंगे। स्टार्ट करू एक सक्यो हेल्पिंग हैंड बन जाता, बट एकता का ग्रेनेड अगर हम लोग बात करें, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से अपने नेज को भी बाउंस करवा रहे थे। इनफैक्ट 2 प्लेयर्स एसटीजी के डाउन किए जा चुके, टिम्बर को भी डाउन यहां पर किया जाएगा और टिम्बर जाते जाते खुद को तो पिक कर चुके हैं, बट अब यही चीज ज्यादा एंग्री कर देती है प्लेयर्स को। एंड इनफैक्ट आगे की तरफ को मूव कर रहे प्लेयर्स सिचुएशन, क्योंकि इनके पीछे कैल्सी बैठे हुए थे और इन्होंने उधर देखा ही नहीं, इनके पीछे बैठे हुए थे कैल्सी पूरी जगह के अंदर। बट खैर एक और प्लेयर को खाने के बाद एसटीजी का एलिमिनेशन 13वें पायदान पर, लेकिन 7 एलिमिनेशंस के साथ ये लोग बाहर हुए हैं। देखिए कितना बड़ा छलांग लगाया इन्होंने इन टर्म्स की, कितना अग्रेसिव खेल रहे, कितने सारे पॉइंट्स अपने लिए अर्ज रहे हैं। रही बात यहाँ पे टीम इन्फिनिटी की, इनको भी सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। सर्कल का जो शिफ्ट है वो कंप्लीटली फेवर करता हुआ नोवा को, बट फिलहाल के लिए 6 to 8 के प्लेयर्स यहाँ पे फिर से हाई ग्राउंड में पकड़ चुके। सुनान का बेहतरीन स्प्रे एंड शानजी मेकिंग श्योर कि पेम्बुरू भी फिनिश हो जाएंगे। इसी के साथ 4 राइवल्स अलायंस भी इस गेम से हो चुकी है बाहर। बट ये जो अभी हम लोग को माहौल देखने को मिल रहा है, इट्स ऑल अबाउट स्टारवर्ड, इट्स ऑल अबाउट गैलेक्सी, इट्स ऑल अबाउट नावी। फिलहाल के लिए जॉनथन को ढूंढ निकाला इन्फिनिटी के प्लेयर्स ने, एंड नूजी ने कोई कसर नहीं छोड़ा, आखिरी फिनिश किया। एंड गॉड लाइक भी इस गेम से बाहर मात्र 1 फिनिश के साथ। टोटल 2 पॉइंट्स उनको मिलने वाले हैं, जो 8 से 12 के बीच में 1 पॉइंट और 1 फिनिश। बट 10 टीमें 29 लोग यहाँ पर जीवित। स्टालवर्ड के प्लेयर्स वो त्यही गर्छन्, कतिले त गर्छन्, कतिले युट्युबबाट पनि हेरिरहेका छन्, मोटालहरूले युट्युबबाटै हेरिरहेका थिए। प्लेयर्स थे, टीम्स थी इनफैक्ट, लेकिन ये लोग रुकेंगे कहाँ पर जाकर के, वो एक सवाल बन जाता है, क्योंकि पीछे देखिए टीम सीक्रेट भी हायर ग्राउंड पर है। ये तो मैले बुझे त्यो हैन हैन त्यो बुझे मैले, त इंग्लिश कास्टिङ आउँदैन, आफ्नो ल्याङ्ग्वेज कास्टिङ त्यो ठुलो युट्युबरलाई मात्र दिएको हुन्छ क्या, त्यो अनलिस्टेड लिङ्कहरु हामीले दिदैन। फिनिश उनका बटोरते हुए कारियो नजर आए हैं। कारियो मौके का फायदा उठाना काफी अच्छे तरीके से सरवाइव तो कर रहे हैं, बट ऊपर टीम सीक्रेट भी है और ये सर्कल के बाहर डेफिनेटली स्पॉट हो जाएंगे। बिल्कुल। एंड इनफैक्ट ये जो शिफ्ट हुआ है निग्मा गैलेक्सी के अगेंस्ट सर्कल जा चुका है, नेक्स्ट शिफ्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट इन द मीनवाइल यहाँ पे फ्रेडो ने एक और पिक निकाल लिया है, बट अभी देखना पड़ेगा यहाँ पे 6 to 8 के प्लेयर्स, काफी महत्वपूर्ण गेम था और निग्मा गैलेक्सी यहाँ पे काफी सारे फिनिश पॉइंट्स अरजने वाली है। नोवा के प्लेयर्स की बात करें, उनके ऊपर पुश इन आ चुका है, बट उससे पहले ही निहात को निकाला। इनफैक्ट हमोदी ने नॉक जरूर किया था, इनफैक्ट हमोदी ने फिनिश जरूर दिया था उस फाइट के अंदर। एंड नोवा अभी भी अपने कॉम्पाउंड को सुरक्षित रखते हुए काफी अनि अघिदेखि गरिरहेको थियो, अहिले लाई बिच्छादेखि सुरु गरिदिएको हुँदा हालांकि 2 प्लेयर्स इन्होंने पहले खो दिए थे, जिसमें से एक अल्फा 7 के प्लेयर्स ही लेकर के गए थे। अब वो जो ऑर्डर इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनको टेक डाउन किया जरूर गया था, बट निग्मा गैलेक्सी अगेन सर्कल का शिफ्ट उनके विपरीत जाता है, सर्कल जाता है नावी के पास। नावी और निग्मा गैलेक्सी दोनों सर्वाइव कर रही हैं। दूसरे तीसरे चौथे पायदान की ये जो दौड़ है, ये जो रेस है, उसके अंदर ये दोनों टीमें नजर आ रही हैं। 5 टीमें जीवित, 16 लोग हैं यहाँ पर, और निग्मा गैलेक्सी कर रही है इस छोटे से पहाड़ की चढ़ाई, इसके दूसरी तरफ होगी नावी। जी हाँ, एंड नावी का कंट्रोल भी देख सकते हैं आप, कोई भी और दूसरी टीम मौजूद नहीं है। निग्मा गैलेक्सी और नावी के बीच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट होने वाला है, बट स्टिल निग्मा गैलेक्सी ने डिसेंट फिनिशेस पे निकाले, उनके लिए आप कह सकते हो एक अच्छा गेम है। जो कंफर्ट जोन पे बैठे हैं, अगर यहाँ से 10 या 15 पॉइंट्स भी अर्ज लेते हैं, तो आई थिंक निग्मा गैलेक्सी का मेरा नेट पूरा लैग हो सकता है अल्फा 7 के प्लेयर्स को। लेकिन देखिए वो नोवा के ऊपर यहाँ पर रश करते नजर आ रहे हैं, नंबर्स एडवांटेज अल्फा 7 के पास है, बट क्या नोवा के प्लेयर्स यहाँ पर फाइट निकाल पाएंगे? पैराबॉय को नॉक करते नजर आएंगे, पोजीशन इंस्टेंटली उन्होंने स्विच करी, एक और प्लेयर यहाँ पर डाउन होता है जिमी के द्वारा। नोवा के प्लेयर्स काफी बेहतरीन फाइट ले रहे थे, लेकिन कारियो और सेनाटेक्सा की जोड़ी ये फाइट अपने हिस्से में लेकर के जाती हुई। नोवा का एलिमिनेशन 5 टीम मात्र बाकी है, 2 फिनिशेस के साथ, बट नावी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया होल्ड कर रही है अभी सर्कल के अंदर। टीम सीक्रेट सर्कल से बाहर निग्मा गैलेक्सी कोशिश करेगी और अल्फा 7 निग्मा गैलेक्सी के पीछे। बिल्कुल एक किंग ऑफ द हिल सिचुएशन आप कह सकते हो नावी के पास यहाँ पे मौजूद है, काफी अच्छा स्प्रेड भी है उनके पास। एंड यहीं प्रे करने वाले नावी की टीम सीक्रेट और निग्मा गैलेक्सी एक दूसरे के साथ फाइट ले ले। अल्फा 7 भी मेरा लिंक डाल दोगे बन के आ सकते हैं यहाँ पे निग्मा गैलेक्सी के लिए, लाइक करना पड़ेगा, उनके जो नियरेस्ट 10-15 जना ले वही है। बट फिलहाल के लिए नावी के प्लेयर्स बहुत ही अच्छा होल्ड अभी उनके तरफ से देखने को मिल रहा है। देर से ही ना निग्मा गैलेक्सी इन तीनों टीम्स के बीच में एक हम खुश है भाई इतने में, बेहतरीन भिड़ंत भी होने वाली है। स्मोकी आने सारा, बट
कनेक्ट नहीं कर भाई स्मोक है ना, Fredo down स्मोक हो है चुका है, ना, जंपर के ऊपर बाहर बहुत ज्यादा स्मोक आया जरूर था, लेकिन वो बाहर उनसे लिया गया वापस। माफियोसो एक अच्छा पिक, इनफैक्ट दोनों प्लेयर्स को उन्होंने पिक यहाँ पर किया था, बट सेनेटेक्स डाउन हो चुके हैं। अब अल्फा 7 के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लॉर्ड एक ग्रेनेड करेंगे, अगर वो जाकर के लगता जरूर डैमेज देता, बट थोड़ा पीछे रह गया इस समय। सेनेटेक्स की एचपी थोड़ी कम हुई है, बट सर्कल के अंदर नहीं पहुंच पाएगी अल्फा 7 ऐसा लग रहा है। हमोदी को उनका पिक मिलेगा, माफियोसो को उस ग्रेनेड के डैमेज के अंदर आ गए, एंड वेल दिक्कतें बहुत बढ़ रही हैं। की ग्रेनेड आने को यार, Somebody actually give them an umbrella because it's a strike, it's hellfire. I think पैन की दरकार रहने वाली है, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे अल्फा 7 इस गेम से हो चुके हैं बाहर। मैटिक यहाँ पे फायदा उठाने वाले, एक फिनिश तो जरूर निकाल लिया। 4v3 का सिचुएशन, मीको को जल्द से जल्द हील करना पड़ेगा। उसी बीचों बीच यहाँ पे मैटिक ने पूरा छोर संभाला। निग्मा गैलेक्सी ने अपनी पोजीशनिंग चेंज की, और MG3 क्या यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। ओशन बहुत ही बेहतरीन फ्लैंक हो सकता है। देखना पड़ेगा कित्सुने किस तरीके से फाइट लेते, क्योंकि राउफ भी उस एंगल पर जा जरूर रहे हैं। कल के दिन हमने देखा नावी के पास लोअर ग्राउंड था, जिसके कारण वो प्लेयर्स ये फाइट हार गए थे। ऐसी फाइट और निग्मा गैलेक्सी वहां पर सेकंड आई थी, लेकिन राउफ को डाउन किया जाएगा टिक्सी के द्वारा। अब कित्सुने पूरी फाइट के बीच में आ जरूर है, टिक्सी के पास ग्रोथ बल्ब, लाइट बल्ब की कौन, एंड ये दो बेहतरीन वेपन्स यहां पर इस्तेमाल में आ रहे हैं। टिक्सी और कित्सुने लेफ्ट हैंड साइड, मैटिक राइट हैंड साइड, और ये पूरी फाइट बन चुकी है 4v2, जिसमें अपने फिनिशेस यहां यहां पर लाइट की ना वेयर इज ही, नो वन कैन सी हिम, क्योंकि उनका जो एंगल है वो निग्मा गैलेक्सी के पीछे आ चुका है। यहां से MG3 डेफिनेटली गोस रता एक पिक और कित्सुने आगे जाकर के लॉर्ड को अगर पिक कर लेते, वेल पूरी फाइट अपने लिए लेकर के आ जाएंगे। M4 पर स्विच उन्होंने किया है, लॉर्ड की एचपी बहुत ज्यादा लो, आराम से उनको टेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर पीछे से एक अच्छा असिस्ट आएगा, एंड देयर इट इज, नावी मेकिंग थिंग्स स्ट्रॉन्ग फॉर देम इन द टॉप 3। इतने प्रेशर सिचुएशन के अंदर फिर भी ये दोनों टीम्स ने इतना बेहतरीन गेम प्ले दिखाया। दोनों ही नावी और निग्मा गैलेक्सी, जितनी तारीफ करे उतनी कम पड़ जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त पे इन्होंने ले लिया। नावी भी नहीं, अरे सकेको छैन, यो सकेको, लास्ट मैच बाकी छ एउटा, लास्ट मैच बाकी छ। टॉप 3 कहीं ना कहीं मिल चुके, क्योंकि हैन लास्ट मैच बाकी छ भने ज्यादा अपेक्षा थी कि अच्छा हैन लास्ट मैच बाकी छ के, मैच बाकी छ, विन भएको छैन। एंड 6 to 8 के लिए भी अगर अच्छा गेम हो सकता था, क्योंकि आखिरी मिरामार है उनका सबसे सक्सेसफुल मैप है, वो भी नहीं हुआ। अल्फा 7 हाउएवर काफी बेहतरीन गेम प्ले का प्रदर्शन उनकी तरफ से देखने को मिला, जिस तरीके से फिनिश पॉइंट यहां पे निकाले, कंसीडरिंग जिस टीम के ऊपर और निडर होके खेले थे। बट नावी सर्दर्न साइड पे उतरी थी, इमेजिन कीजिए जो रोटेशन कंप्लीटली नॉर्दर्न साइड पूरा जमावड़ा अपने नाम किया। नावी जब भी नीचे उतरती है उनकी रोटेशंस काबिल तारीफ होती है। हमने कल भी देखा था नावी के प्लेयर्स बहुत बार हुआ है, निग्मा गैलेक्सी कुछ चेंज करते हैं तो जाते हमेशा एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर सर्कल उनके पास आ जाए। त्यत्रो बेर प्लेयर्स पिक हो गए थे, ठीकै छ काम तभी अपने छैन आप टॉप 2 में लेकर के आ गए। तो बुझिराछ म गरेर बुझिसके हैन, उतर करके रुकना यहाँ पर सोचा, तब भी बाद में टॉप 2 के अंदर खुद को लेकर के आ गए। नामको भइराछ लाइफ सकिको मलाई त उनको सराउंड करने उधर खेल्न सक्दिन थिएन त म 3-4 घण्टासम्म बसेर पब्जी खेल्न त बहुत बड़ा दिक्कत मैं बोलूंगा बन गया। अदरवाइज वेल पूरा गेम यहाँ पर नावी खैर अभी तो अपने हिस्से में लेकर के जा चुके। अगर प्लेयर्स रहते, अगर जगह ऐसी रहती जहाँ पर निग्मा गैलेक्सी भी थोड़ा सा और फैल करके खेल सकती, डेफिनेटली नावी के लिए डिफिकल्ट होता, बट एट द एंड टॉप 3 की फाइट मेरो लागि त्यही मजाले हो, यो भन्दा बढी त म के गर्नु। अल्फा 7 की तरफ निग्मा मेरो लागि त्यही मजाले भइहाल्यो क्या, फायदा यहाँ पे नावी के प्लेयर्स ने बढीमा के गर्ने। वहां पे अगर नंबर्स एडवांटेज निग्मा गैलेक्सी के फेवर में होते, शायद चीजें बदल सकती थी, बट नावी के पास हाई ग्राउंड भी था, नावी के पास इतना बेहतरीन मैप कंट्रोल, वहां पे आप कह सकते हो था स्प्रेड भी काफी अच्छा हो गया था। एंड कित्सुने जैसे हमने पहले से कह रखा था कि बहुत ही जल्दी यहाँ पे रोटेट कर गए एंड बहुत ही अच्छा एंगल ले लिया। म त खेल्न भ्याउँदिन नि पब्जी का खेल्न, अगर वो फिनिश पॉइंट ले लेते मोबाइल लिएर पब्जी खेल्नु भने पनि काफी सारे यहाँ म टिभी हेरेर जस्तै बसिरहेको थिएँ क्या, कम्प्युटर अगाडि कति नै के हेरे जस्तो क्या। ऐसे सिचुएशंस में दोस्तों खेल्न थाले भन्दा मलाई लाग्छ एक पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा कति नै ठुलो के कुरो भए जस्तै पुरा हुन्छ नि, एकदम घरले पढे जस्तो क्या, हुन्छ हेरिरहेको छु क्या। बट अब मोबाइल लिएर खेल्न थाल्यो भने चप्पल आउँछ, फ्लाइङ चप्पल आउँछ, सुई सुई गर्दै। बट ये देखिए 26 पॉइंट्स, जरूर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब त्यही त गरिरहेको छु नि, निग्मा गैलेक्सी ने लिए 18 पॉइंट्स। आवाज कम गरिदिन्छु तिमीहरुको, ठिक एकदम 8 पॉइंट्स का इसीलिए मैच आप बोल रहे हैं डज नॉट पे माय बिल्स, बट या इज माइन समटाइम्स। बट नोवा के प्लेयर्स 8 पॉइंट्स लेकर के गए, टीम सीक्रेट 10 पर, बट जैसे कि आपने बोला और वहीं निग्मा गैलेक्सी ये जो डिफरेंस अति क्या अति जरूर वहीं पर हमोडी हमें नजर आएंगे 3
एलिमिनेशंस काफी अरसे बाद मैं हमोदी को देख रहा हूं। आप देखिए एमईए ने चैंपियनशिप बात कीजिए जो हम पीएमपी ने कास्ट करा था हमने अत्ती के हमने भी अत्ती निग्मा गैलेक्सी का नाम जब भी जहन में आता है कहीं ना कहीं ये एनजेक्स को हर टाइम एमवीपी के मैथिली मॉडल। फिर उसके बाद आया लॉर्ड का दौर एंड अभी भी वो लॉर्ड का दौर चल रहा है। बट इस गेम में हमोदी ने काफी बेहतरीन खेला, काफी सारे प्लेयर्स को ऑफ गार्ड भी पकड़ा था, काफी सारे फाइट्स बेहतरीन लिए भी थे। बट फिलहाल के लिए मात्र 1 पॉइंट का डिफरेंस सेकंड और थर्ड के बीच में। हाँ नावी और अगर वासी रहते हो बोला मेरा बार में तुझसे मिलसा सेम बट यही मैं कह रहा था नेक्स्ट यूएस से मुझे अब झलक दिख रही है नावी सबका आफ्नो लोगो छ सारा टिमलाई टॉप 3 में घुस गए थे हेरेको छु एक समय के लिए टेबल टॉप सबै टिमको आफ्नो लोगो छ। आखिरी दिन वो बहुत ज्यादा नीचे कट पाया था, वो प्रेशर एग्जैक्टली वो नजर आया थोड़ा सा यहां पर मुझे एनआरएक्स के ऊपर 6 to 8 इस बार 6 पर मतलब अब एक हैन तो युट्युब को लोगो इनरको युट्युब च्यानल त न छ र मतलब इनरको बेग्लै लोगो छ नि त एउटा क्लान के लोगो छ का नोवा तो अभी भी विराजमान है बट अब सेकंड पोजीशन के लिए कोई और टीम कंटेस्ट करती हुई नजर आ रही है जस्ट मोबाइल इस गेम के बाद वेल लास्ट गेम लाला दूसरे और तीसरे के बीच में जी हां आई थिंक और 1 पॉइंट का डिफरेंस है 1 पॉइंट का मात्र ओए किसके ऊपर कूदने वाला है, सर्कल कहां बनेगा, काफी सारे सवाल जरूर यहां पे हमारे दिमाग में चल मेरो टॉयलेट भएको बत्ती टॉयलेट भएको लाइट लगाइदिन्छु ल दोस्त। फाइनली हम लोग को उनके सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स रिंग लाइट एंड जाहिर सी बात है रोटेट कर ही रहे थे कलर यहाँ लाइट के प्लेयर्स ने उनको वहां पे पकड़ लिया था इंस्टेंटली 30 वाला लाइट फिनिश हो गए थे। दैट इज समथिंग अ सिचुएशन व्हिच कांट कंट्रोल या यू कांट हेल्प दैट सिचुएशन। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अभी भी वो आखिरी गेम में उनसे खिलाया जाना चाहिए एक बार जस्ट यू नो हैव अ प्रॉपर बिना मार देखा कमर दुख यार बस्ता फाइट से पहुंचते तो ले पाते क्योंकि वही है पिछला गेम के अंदर दिक्कतें हुई और माम खान जानु पर्ने छ अभी जो पोजीशन पे माम खा रहा हूं छु यहाँ पे नेक्स्ट गेम में अच्छा खेल भी लेती है तो इन टर्म्स ऑफ द प्राइज मनी कोई ज्यादा फेर बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मेरा एंटिसिपेशन मैं छोरी कम आखिरी गेम मैं छोरी बेटर भी रहेगा किस तरीके से खेलती है क्योंकि काफी सारी चीजें हम लोग को भी देखने को मिल रही है देखने को मिल रही है प्यारे रोटेशंस। आप देखिए अल्फा 7 आप देखिए नावी ने जो निभाए निग्मा गैलेक्सी का यहाँ पे जिस तरीके से जोन उन्होंने लिया फिर जोन होल्ड किया अगर वो लास्ट नहीं होता शायद ही उनका भी गेम हो सकता था। 6 to 8 भी काफी करीब आ गई थी बट फिर 6 to 8 जब देवसीरे हारेगा उनका प्रयास था तब उनको रोक दिया गया था। बट अगेन नोवा बीइंग कंसिस्टेंट एज एवर फाइनली यहाँ पे उन्होंने अपना 200 का आंकड़ा भी पीएमजीसी टूर्नामेंट पबजी का बिगेस्ट टूर्नामेंट आई रिमेंबर जब एक चैंपियनशिप पीएमजीसी ट्रैश टॉक करके एक वीडियोस डालते रहता है उसके अंदर मेरे थंबनेल है ना मेरे थंबनेल में से तो प्लेयर्स को जो भी कंपटीशन में हमसे नीचे रहने वाली उन लोगों ने ट्रैश गुड ग्लोबल चैट वो तो दिखा ही रहे हैं बट खैर आई मीन नोवा तो दिखा ही रही है बट खैर दिखा चुके हैं यस एक्टर हूं दावरो गेम में अगर जल्दी अगर नाम इज बिग यहां पे टॉप रहने वाले हैं। आई डोंट थिंक सो कोई टीम उनके आसपास भी है जिस तरीके से पॉइंट स्टैंडिंग्स आ रही है या ऑफ कोर्स अगर आप नोवा को एलिमिनेट कर देते हो एंड देन गेम में शायद 20 किल्स के ऊपर फिनिशेस के ऊपर ले लेते हो कुड बी एनीथिंग बट फिलहाल चलिए चलते हैं अभी आई सुपर जॉनी की तरफ एंड लेट्स फाइंड आउट कि उनके पास इस गेम के लिए क्या कहना है। आई मीन जैसे नोवा के पॉइंटर्स हमारे दो कास्टर्स ने रखे मैं बस एक ही चीज़ वही चीज़ जो मैंने कल कास्टर्स डेस्क पे कही थी वही बोलना चाहूँगा कि मेरी बस एक ही चीज़ पे नाराज़ी रहेगी ढाका टू बिला वर्ती मेरे पास सोचा स्टेजेस में फिर क्या मतलब ऐसा क्यों होता है कि टीम हमको फर्स्ट पोजीशन पे बहुत कम नजर आती है किटे गया फाइनल्स की बात आ चुकी है एक अच्छा एडवांटेज है गाइस किटे गया पीस आना गया सेकंड पोजीशन की जो लड़ाई है इस मैच के बाद किटे पीस लागो टेंस हो चुकी है। आखिरी मैच के लिए एक परफेक्ट सेटअप यहाँ पे दोनों टीम्स को मिलने वाला है। निग्मा गैलेक्सी और नावी की बात करो नावी के रोटेशंस की जैसी बात करी थी फिक्सर्स ने ये बात मेंशन करी थी कि हर बार सदर्न साइड से मीरामार पे स्टार्ट कर रहे थे बहुत वाइड रोटेट करके जाते थे और क्लोजिंग सर्कल्स में नॉर्दर्न साइड से अप्रोच करते थे। फायदा जैसा पॉइंट आउट किया था उस चीज का इस बार आई थिंक थोड़ा सा कम देखने को मेरे पेरेंट्स साउंड आउट दिस केयरफुल अप्रोच फिर से लेकर चल रही थी और थोड़ा सा स्लो उन्होंने खेलने की कोशिश करी थी और इसी चीज के चलते एजेस पे थोड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे नावी को फेस करनी पड़ी बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करते हैं लेट स्टेजेस में अगेन
एक जो फाइट थी इससे पहले कि निग्मा गैलेक्सी और अल्फा 7 का जब कोलिजन हो रहा था, डामोन के प्लेयर्स वहाँ पे मौजूद थे जो नावी को थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, एंड उस टाइम पे निग्मा गैलेक्सी के पास एक ओपनिंग थी कि उस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाते हुए पहले नावी को पिक किया जा सकता था, बट तब तक अल्फा 7 का एंगेजमेंट उनके अगेंस्ट हो जाता है और एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनके लिए भी वहाँ पे खड़ी हो गई थी ना। इसी वाइड रोटेशन की बात हमने स्टार्टिंग में भी करी थी, बहुत ज़्यादा सुपर वाइड इनफैक्ट सर्कल के एजेस के अलोंग बाहर से इन्होंने मूव इन किया, नॉर्थ ईस्ट से सर्कल के अंदर एंट्री ली, यहाँ पे हाई ग्राउंड कंट्रोल को प्रायोरिटाइज किया। निग्मा गैलेक्सी इसी चीज़ में थोड़ा सा डिले उनकी तरफ से हमको किन सब क्यामेरा रखी हुन्छ तिम्रो से थोड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उन्हीं के लिए भी क्रिएट हुई थी क्योंकि अनि भन्छ नि केटा किन गएर एज से उस पहाड़ी के और तब तक किन गयो भन्छ नि खाना त्यो गर्न टाटामा क्लियर विजन था उनके पास आसपास के ओपन एरियाज का और इजी पिकिंग नया अपनी चॉइस की। आई मीन जो टीम को आपको पिक ऑफ करना है वहाँ पे टारगेट कीजिए। मेजॉरिटी प्लेयर्स और टीम्स जो थी वो इंडिविजुअल जो बचे हुए थे वो ऑलरेडी स्प्लिट्स की वजह से ऑकवर्ड पोजीशंस में फंस चुके थे ब्लू जोन के अंदर, और उस चीज़ का फ़ायदा नावी काफ़ी अच्छे तरीके से उठा रही थी। मज़ेदार चीज़ ये है कि जो एक्सेलरेटर जिस स्पीड से ये दबाते हैं गेम के एंड तक बिल्कुल नहीं छूटता है। अर्ली स्टेज में थोड़ा शांत रहना हमेशा प्रेफर करती है नावी की ये स्क्वाड, और लेट स्टेजेस में बहुत धमाकेदार फिनिश हमको एक तरफ से देखने को मिलता है और ये चीज़ एक्सपेक्टेड भी थी। अगेन इम्प्रूवमेंट हमने बहुत ज़्यादा देखी है ओवर द ईयर इटसेल्फ। 2021 में इस टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर मैं बोलूँगा डिलीवर किया, और ये इनके एक 2021 के क्लोजिंग नोट के लिए नावी के लिए एक अच्छा सेटअप रहेगा कि 2022 के सीजन में डिलीवर करती है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। जहाँ तक कि एक पॉइंट मेंशन किया था अगेन गॉडलाइक के ऊपर भी यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, जो एक सब्स्टिट्यूशन हमको देखने को मिला उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा और देखने को मिल जाता, बट अगेन जो इंसिडेंट हुआ एकजना को हेर्दैछ यार मेरो लाइभ था, यू कांट रियली कंट्रोल इट, आप कुछ नहीं कर सकते उन चीज़ों के बारे में कि आप पहली चीज़ तो ये कि प्लेन पाथ बहुत ज़्यादा साउथ में, उसके ऊपर से जब आप नॉर्थ मूव करने की कोशिश करें आपके कंटेंडर्स भी आप ही के साथ मूव कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इजीली आपको स्पॉट आउट कर लेते हैं, प्लस उनका जो एग्जैक्ट जहाँ पे उनको जाना होता है दैट पोजीशन इज मच क्लोजर उस ट्रैजेक्टरी सेटअप से जो उस बबल गरेको छ नि ट्रैवल करना, और प्लस वो ओपन फील्ड काफी ज्यादा डेडली है। मैं बोलूंगा निग्मा गैलेक्सी ने काफी स्मार्ट प्ले किया अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि अल्फा 7 के साथ ही उन्होंने एग्जिट लिया था, बट अल्फा 7 बहुत ज्यादा तेज तर्रार टीम है, वो जल्दी से लैंड करे, व्हीकल्स उठाए और सीधा एल्पोजो की तरफ उन्होंने अपने कदम बढ़ा रहे थे। निग्मा गैलेक्सी को थोड़ा सा डिले हुआ व्हीकल्स ढूंढने में, तो उसका काउंटर उन्होंने ढूंढा कि चलिए एल्पोजो को अबैंडन करते हैं, हम लोग वैलिड एलमार से स्टार्ट करेंगे, और रिजल्ट एक अच्छा डिलीवर हुआ। मगर ये आज का सेकंड लास्ट गेम था देवी और सजनो, एक आखिरी एंगल आज के दिन के लिए और बचा है, और वो डिसाइड करेगा कि फाइनल ओवरऑल स्टैंडिंग्स किस तरह की होने वाली है एंड ट्रॉफी किसके हाथ में जाएगी। ये द फाइनल है, आपको पता चलेगा लास्ट एंगल छ। दिस इज सुपर जॉनी सेंडिंग इट टू द ब्रेक, सी यू गाइस ऑन द साइड। लास्ट एउटा एंगल बाकी छ। फेस कैम अपीयर वायर तिमीले सिरो थम्बनेल पनि बनाउन भ्याइसक्यो बे, सिरो थम्बनेल पनि बनाउन भ्याइसक्यो। I saw the first light, the first steps. Now I see much more.
capture Earth in all its beauty. I see action. तिम्रो जस फेस क्यामसँग बवाल लागिरहेछ And I see it in तिमीले the यसरी finest जस टेस्ट गर्यो भने बवाल लाग्दो रहेछ क्या and the first steps. ल के छ लाइटिङको व्यवस्था गरौँला नि Homes are लाइटिङको now पनि where we व्यवस्था work, भइहाल्छ नि के छ र learn, and play. Oops. Homes are where we build spaces to call our own. Power on and beyond with Singapore's most trusted broadband. प्रचार भइरहेछ प्रचार चलिरहेछ म्याच 13 म्याच 14 म्याच 15 म्याच 16 म्याच 17 9:05 सुरु हुन्छ अर्को म्याच इराङ्गल 9:05 होइन म्याच 16 टाइम छ यार म्याच एसजी एउटा एसटी छ एउटा एसजेड एसटी म्याच 15 इन्फिनिक्सले म्याच 16 S2Gले म्याच 17 न्याभीले नोभा कता छ नोभाले खै कति म्याच जित्यो नोभा लिडमा थियो होइन नाभी होइन नोभा एनभीको टिम लिडमा थियो सबभन्दा फर्स्टमा अरे यस्तो क्या अरे यस्तो अरे क्या गडालको टिम या अरू पनि कुनै टिम हुन्छ नि मतलब हुन्छ नि गेमै पल्टाइदिएको अरे क्या ठ्याक्कै क्या लास्ट मोमेन्टमा कस्तो सिचुएसन हुन्छ र त्यस्तो कस्तो सिचुएसन हुन्छ एक आखिरी मैच जो यहाँ पे तय करने वाला है कौन होगा हमारा सेकंड पोजीशन हासिल करने वाला टीम पहली बार क्योंकि फर्स्ट पोजीशन तो चलिए आप सभी को पता है स्वागत है आप सभी का पीएमजीसी के अंदर और पूरे आराम से ऐसे सुन रहा था कि आप बोलना क्या चाहते हैं फिर समझ में आया ओके ऑफ कोर्स आई मीन फर्स्ट पोजीशन के लिए कंटेस्ट कौन ही हाँ लेट्स बी ऑनेस्ट राइट इस पॉइंट पे आज ठीक है मम्म खा रहा है तय हो चुकी है सेकंड पोजीशन के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे टकरार चल रही है 1 पॉइंट का मात्र डिफरेंस है 164-163 ये फर्क बन के बैठा हुआ है लेकिन देखना पड़ेगा कि अब यहाँ पे सारे फैक्टर्स एकदम से आ जाएंगे सर्कल कहाँ बनता है कौन सी टीम सर्कल के अंदर होती है क्योंकि निग्मा गैलेक्सी हमें पता है जोन उनके पास है तो वो बहुत लंबी पारी खेल जाते हैं बट नावी के प्लेयर्स के लिए उनको फाइट जरूर करनी पड़ती है लंबी पारी खेलने के लिए जब भी उनको सर्कल्स के अंदर जाना होता है उनकी रोटेशन ऐसी कि उनको फाइट निकालनी पड़ती है बिकॉज वो सदर्न जॉर्ज या फिर मिलिट्री बेस के लेफ्ट हैंड साइड वाले एरियाज बट देन अगेन इन सबके बीच में देर आर अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन जो इस गेम की पिछले गेम की रहने वाली है एंड देयर इट इज हमोदी हमें नजर आते हैं हाईएस्ट डैमेज दे करके उसके बाद कैल्सी 754 एंड मिकू 584 डैमेज के साथ Yeah, of course. I mean, निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स जाहिर सी बात है हमने देखा जिस तरीके से खेला था अर्ली रोटेशन ऑन सेंटर पकड़ लिया उन्होंने उसके बाद नावी के प्लेयर्स की तरफ से ड्रास्टिक रोटेशन एंड S2G के प्लेयर्स आई थिंक आज की शाम से बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव खेल रहे हैं एंड क्लियरली उनके आंकड़ों में वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर फर्दर ट्रैवल डिस्टेंस की बात करें ऑफ कोर्स नावी जाहिर सी बात है उन्हीं को मिलना ही मिलना था जिस तरीके से सर्दन साइड से पूरा घूम के ईस्टर्न साइड से टॉप ऑफ द नॉर्दर्न साइड लिया फिर उसके बाद जोन भी लिया वेल डिजर्व्ड वेल डिजर्व्ड नाविगेटिक्स यहाँ पर है मैटिक भी हैं और रिबेलियन हमें नजर आते हैं यहाँ पर फेनरबाचे की तरफ से और देखिए पहला गेम स्टारलॉर्ड का चिकन आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो सबसे पहले इन 3 दिन के अंदर क्या आखिरी गेम मैं तो ये जानना चाहता हूँ क्या वो एंड भी उसी नोट पर कर पाए क्योंकि वो भी एक कंटेस्टेशन में है जरूर देखिए ये जो हमेशा बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल्स के जो आखिरी गेम रहते हैं आपको भी पता है बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कुछ भी होता है कुछ भी होता है और हमेशा जो भी विनर्स होते हैं मोस्टली एक ऐसी टीम रहती है जो कि टॉप 8 में होगी भी नहीं तो कुछ भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या होने वाला है रही बात गॉड लाइक की जरूर चाहेंगे कि सोमराज को एक और गेम खेलने का मौका मिलेगा क्योंकि बेरामार में जो घटनाएं घटी उनके साथ ऑफ कोर्स काफी खराब लगता है टू बी ऑनेस्ट आप पहली बार आ रहे हो एक अच्छा सुनहरा मौका मिला है कि एक बार लॉबी एक्सपीरियंस करने का एंड अगर इस तरीके से नॉक फिनिश होते हो तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है बट अगेन लास्ट गेम की बात करें तो वही हमारी चाह रहेगी कि सर्किल
कहाँ पे बनने वाला है, ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि वही डिफाइन करने वाला है निग्मा गैलेक्सी के लिए। अच्छा हो सकता है कंसिडरिंग उनका जो ड्रॉप जिस प्रकार रहता है, क्योंकि नावी के लिए वही सवाल होता है राइट, कहाँ पे उतर रहे हैं, आर दे ड्रॉपिंग एट साउथ जॉर्जो या फिर मिलिट्री बेस के वेस्टर्न साइड पे, ये दोनों जगहों से। एंड डिफिकल्ट हो जाता है जब आप ब्रिज की तरफ उतरते हो, फिर उसके बाद क्रॉस करते हो, इन्फिनिटी भी होती है आपके पीछे और सामने। आज तो नहीं बट कभी कभी एस2जी होती है। आज के दिन तो अभी एस2जी नजर नहीं है, वो तो मिल्टा के पीछे जाते हुए नजर आया। लेकिन सोचिए फिक्सर्स, अगर एक सेंट्रल फ्लाइट पाथ हमें देखने को मिलता है तो ये कॉन्वर्सेशन आती है कि मोस्ट प्रोबेबली नावी अपने प्रेफरेबल ड्रॉप पर जाएगी, विच इज ऑब्वियसली सदर्न जॉर्जो, क्योंकि उन्होंने जॉर्जो के अराउंड पूरा उनका जो पीएमजीसी लीग था उन्होंने जॉर्जो के अराउंड ही खेला हमेशा। अल्फा 7 वो एक ही ड्रॉप को लेते थे, अल्फा 7 थोड़ा पीछे जाते थे, जारके तक जाते थे। उनके इस मूवमेंट के अंदर झलक हमें सिर्फ इतने से मूवमेंट के अंदर झलक हमें देखने को मिलती है हैदराबाद हाइड्रास की, जहां पर एक प्लस स्ट्राइकर कभी कभी जारके तक भी चले जाते थे एंड देन वो मूव कर। लेकिन अल्फा 7 की मूवमेंट उसके बाद हमेशा सेवर्नी के नीचे से होती है या फिर वो लोग जाते हैं लिपोव का, जो कि ऑब्वियसली एक सेकंड उनका ड्रॉप बन जाता है। दोनों ड्रॉप्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, दोनों उसके अराउंड लाइक उनको दोनों के अराउंड खेलना आता है। बट अगर वो जाते हैं लिपोव का तो डाजेवियर को से संभल करके उनको चलना पड़ता है। या इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में ही हम लोग को एक्चुअली पता चलने वाला है कि सर्कल कहाँ बन रहा है, टू बी ऑनेस्ट। एंड डाशेवियर की टीम ऑफ कोर्स वियतनाम से इकलौती टीम आती हुई, हमेशा मेरी एक मनपसंदीदा टीम बॉक्स, अगर आपको याद होगा लुई वगैरह जो प्लेयर्स थे, पिमेंटो, यस, एसएस की टीम हुआ करती थी। अगेन टेक्स यू बैक टू द डेज, बट या ऑफ कोर्स चलिए फाइनल गेम यहाँ पे शुरुआत होने वाली है। देखना पड़ेगा फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी कहाँ से कहाँ तक जाता है। इरैंगल का मैप, आखिरी मैप ऑफ इरैंगल, इनफैक्ट आखिरी मैप आप कह सकते हो जो 2021-2022 साल का इनफैक्ट आखिरी गेम, डायरेक्टली हेडिंग फ्रॉम सुस्नोवका मिलिट्री बेस से लेके शूटिंग रेंज के तरफ। सो यहाँ पे नावी और निग्मा गैलेक्सी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बट एट द सेम टाइम जोन कहाँ बनने वाला है जरूर दर्शकों से पूछना चाहूंगा, एंड ओशन से भी। वेल बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा कि सर्कल, क्योंकि अब हमें वो स्टैंडर्ड सर्कल्स नहीं देखने, मैं तो ये बोलूँगा हमें चाहिए कुछ अजीब सा सर्कल जो जहाँ पर अगर हम लोग बोले क्लैशेस अलग हो और जोन्स भी ऐसी जगहों पर जाएं कि आप जस्ट सोचते रह जाएं कि प्लेयर्स मूव कहाँ से करेंगे। सबसे पहला गेम हमने वो मिलिट्री बेस का देखा था, जब सबसे पहला गेम हुआ था जहाँ पर स्टारलॉर्ड का चिकन आया था, और वो तो एक बहुत बेहतरीन था। बट आप देखिए नावी के प्लेयर्स, जैसे कि हम लोगों ने बात करी, जैसा मर्जी फ्लाइट पर, तो वो अपने कंफर्ट जोन पर जाना चाहते हैं, विच इज सदर्न जॉर्ज, जो उनका एक कंफर्ट जोन अभी के लिए बन जाता है। S2G वो अपने कंफर्ट जोन पर जा रहे हैं, दैट इज पेरीपियर के अराउंड। लेकिन यहाँ पर उनकी रीड 6 to 8 अच्छे से करती है। ये हमने कल भी इस चीज़ की बात करी कि 6 to 8 के प्लेयर्स को रीड रहती है, उनको पता चल चुका है उनके साथ प्लेयर्स ग्लाइड कर रहे हैं, मतलब कोई तो और यहाँ पर होना जरूर चाहिए। वहीं पर फनरबाचे की बात करें, फार्म से लेकर के मिल्टा तक वो आराम से जा सकते हैं। डाजेवियर वेल वो भी अपनी मूवमेंट्स कर सकते हैं इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस केओस। वेल अल्फा 7 उतर रही है एंड जोन क्रॉस रोड्स का सर्कल, जो क्रॉस रोड जो 4 रोड्स मिलती हैं उसके अराउंड ये सर्कल जो है वो जाते हुए हमें मोस्टली नजर आता जरूर है। इन्फिनिटी के प्लेयर्स ऑलराइट आराम से अपनी लूट करेंगे, उनका ही इलाका है। देखिए इन्फिनिटी को घबराने वाली कोई बात नहीं, कभी भी ज़्यादा तौर पे हम लोग को इन्फिनिटी मिलिट्री बेस के अराउंड कंटेस्ट होते हुए कभी दिखे नहीं इस टूर्नामेंट के दौरान तो एटलीस्ट। बट ये जो सर्कल बना है ईस्टर्न साइड का सर्कल है, यसना के नीचे बन सकता है, सेकेंड शिफ्ट जब होगा तब हम लोग को कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल जाएगा, एक अंदाजा हो जाएगा। बट दर्शकों को फिर से बता दें, इस गेम में भी सोमराज हम लोग को खेलते हुए नजर आ रहे हैं नियो के जगह, एंड गॉडलाइक के प्लेयर्स यहाँ पे जरूर उतरेंगे, उसके बाद यसना की तरफ हेड आउट करेंगे। काफी अच्छा गेम हो सकता है उनका, आइडियल सर्कल भी आप कह सकते हो। सो लेट्स सी गॉडलाइक के लिए अगर एक आखिरी गेम में अगर एक चिकन डिनर देखने को मिल जाता है उनके तरफ से, तो शायद भारत से जितने भी दर्शक देख रहे हैं काफी ज्यादा खुश होंगे। डेफिनेटली काफी ज्यादा खुश तो होंगे। लेकिन यहाँ पर निहत की बात करें तो आप देखिए वो ग्लाइडर लेकर के आए और अब बग्गी लेकर के नेक्स्ट की जो टीम है वो जो प्लेयर है इनफैक्ट वो अपनी टीम के काफी करीब जितना हो सके उतना जाने की कोशिश अभी के लिए करेंगे। निग्मा गैलेक्सी हमें पता है पूछिंग के एरियाज हमेशा इनके पास रहते हैं, ये लूटते हैं एंड देन यहाँ से राइट हैंड साइड इनको मूव करना पड़ेगा। जो हम लोग आगे की बात करेंगे पोटैटो हिल के नीचे से ये लोग मूव करना चाहें आराम से कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में फ्यूरियस गेमिंग जिनको मिल्टा पावर जाना चाहिए था लाइक एक तरीके से, बट जो फ्लाइट पाथ था वो दिक्कत भरा था, उसके कारण ये लोग नोवा के पीछे उतरे हैं, गतका के पीछे उतरे हैं। देखिए आखिरी पायदान पे चल रहे हैं यहाँ पे, अगर नोवा के साथ फाइट भी लेना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करूंगा, बट एट द सेम टाइम अगर नावी के लिए अड़चन बन जाते हैं यहाँ पे
इस सिचुएशन में, तो सोचिए क्या होगा, क्योंकि निग्मा गैलेक्सी अभी भी सर्कल के अंदर है। हमेशा वो पुचिंकी की तरफ जब भी आप उतरते हो तो वो फायदा रहता है, एक्सेसिबिलिटी कहीं ना कहीं रहती है। तो निग्मा गैलेक्सी के रोटेशंस काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बट दास जावियर जिस तरीके से उतरे, काफी लंबा स्प्रेड, एक प्लेयर मैंशन पे, दूसरे प्लेयर प्रिजन पे, एक प्लेयर शेल्टर पे, और राबीज को देखिए उनके पास भी एक अलग इलाका है। सो अगेन दास जावियर के पास लूट्स अच्छी रहती है। फ्रैंकी की तरफ से आई थिंक फ्रैंकी एक रेवोल्यूशन रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, काफी सारे MVP परफॉर्मेंसेस उनके तरफ से देखने को मिली है। लैम्बोर्गिनी थोड़े बहुत शांत रहे थे, बट देन अगेन पहली बार आए हैं, और जिस तरीके से इन्होंने खेला, आई थिंक अपने फैंस का, अपने दर्शकों का दिल जरूर जीता है। बिल्कुल, लैम्बोर्गिनी फ्रैंकी काफी अच्छे हैं। फ्रैंकी का तो कल वही ऑलमोस्ट अल्फा 7 के साथ रिपीटेड MVP एग्जैक्टली एंड वो जो ऑलमोस्ट कल के अल्फा 7 के साथ की जो फाइट थी वो बार-बार हमेशा ज़हन में आएगी जब भी फ्रैंकी की हम बात करेंगे, क्योंकि जो कारियो के ऊपर स्प्रेस थे काफी काबिल तारीफ थे। ये पूरा जो हम लोग इस चीज को हम लोग देखिए अपने वर्ड्स में एक फेस्टिवल बोलते होते हैं जो जीसी का चलता रहता है, महोत्सव, ये एक अंत पर अब आने जरूर वाला है। बहुत सारी चीजें हमने भी देखी, बहुत सारी चीजें हमने भी सीखी, बहुत सारी चीजें आई एम प्रीटी श्योर यू नो ऑडियंस ने भी देखी। यहाँ पर जो लोग पहले से जब लीग चल रहा था तब से हम लोगों के साथ जुड़ रखे थे, सो काफी ज्यादा बेहतरीन यहाँ पर हमें फाइट्स एंड ऑल सब देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ऑर्डर खेले हैं, और कल के दिन का आखिरी गेम तो क्या ही खेले थे। ये बगी में ही बैठे हैं ना, लग रहा है ऐसे यू नो F1 की जो गाड़ियां होती है ना वैसे कुछ बट एनीवेज जस्ट अ विजुअल ग्लिच। बट रही बात यू नो ऑफ कोर्स अभी गेम शुरुआत है, अभी ज़्यादा कोई फाइट्स हम लोग को उमड़ते हुए नजर नहीं आए। सो इनफ टाइम टू हैव अ डिस्कशन अबाउट टीम गॉडलाइक, राइट। इंडिया से रिप्रेजेंट करते हुए टीम गई थी यहाँ पे, बट जो हमारी उम्मीदें थी, जो यू नो हमारे दर्शक चाह रहे थे कि काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन हो, वो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप मैप्स की एनालिसिस करो, देखो तो पेसिंग, लॉबी की पेसिंग, रोटेशंस वर द प्राइमरी यू नो कॉजेस जहाँ पे गॉडलाइक को परेशानियाँ हो रही थी। क्योंकि गन फाइट्स की बात करें, गन फाइट्स भी डिसेंट थे, इनफ यू नो फिनिश पॉइंट्स उन्होंने अर्जे थे। बट वही वाली बात रहती है कि काफ़ी टाइम बाद अगर जीसी के लॉबी के अंदर आप खेलते हो तो वो जो चेंजेस हैं, आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे गॉडलाइक को और सारे इंडिया के जितने भी टीम्स हैं, IGL से जितने भी देख रहे हैं, सबको एक आइडिया मिल चुका है कि जीसी की जो लॉबी होती है वो कितना आगे चल रही है एंड कितना डिफरेंट तरीके से वो लोग कुछ गेम्स के अंदर इनफैक्ट खेलते नजर आते हैं। लेकिन डिफरेंट की बात करें, स्क्राई को गाड़ी की आवाज तो आई होगी, और मेला सिर्फ स्टंट मारने के लिए ऊपर अच्छा था, ये अच्छा था। देखिए थोड़ी सी एचपी की कमी, बट अच्छा ही था। कहीं ना कहीं होमवर्क करना चाहिए टीम इन्फिनिटी के प्लेयर्स को, क्योंकि आइडियली स्टालवर्ट के हमेशा एक प्लेयर रेडियो टावर की तरफ आते हैं। सो स्क्राई ऑफ कोर्स ये रीड थी इनके पास कि वहां पर गाड़ी भी है, ग्लाइडर पे एक ही चीज, अगर स्पॉन भी होगी तो एक ही चीज होगी, ऐसे मल्टीपल चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज की रीड लेकर के मेला वाज लाइक कि मुझे नहीं पता यहाँ पर एक प्लेयर या दो प्लेयर्स एंड स्टालवर्ट का हमें पता है वो ये टावर एरिया हमेशा लेते हैं। या ऑफ कोर्स, आई मीन अगर सर्दन साइड रहता है तो दैट्स अ मस्ट, राइट। अगर मेला यहाँ पे नॉक फिनिश होते तो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी के प्लेयर्स अपने आप को ही कोसते उस सिचुएशन के अंदर। बट फिलहाल के लिए अगर सर्कल की बात करें, कुछ टीमों ने ऑलरेडी अपना रोटेशन चालू कर लिया, एंड उन सब में सबके बीचों बीच यू नो यू गॉट S2G फिर से कंटेंडिंग फॉर द सेंटर एंड गोइंग फॉर अ लॉट ऑफ फिनिशेस। आई थिंक इस गेम में, आखिरी गेम में अगर गॉडलाइक एक अच्छा गेम रहता भी है तो 13वें पायदान के लिए जा सकती है। 12वां पायदान काफी मुश्किल होने वाला है। 98 पॉइंट्स हैं एलिमिनेशंस में नोवा के पास, उसमें से लगभग 47% यहाँ पर ऑर्डर अकेले एलिमिनेशंस लेकर के बैठे हैं। आप सोचिए एलिमिनेशंस का नंबर कितना ज्यादा बेहतर, लगभग 45-44 एलिमिनेशंस ये अकेला प्लेयर लेकर के बैठा हुआ है पूरी टीम के कंपैरिजन में। अनडिस्प्यूटेड MVP रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, राइट। अनडिजर्व भी करते हैं, क्योंकि हमेशा जैसे हमने कहा पैराबॉय रहते हैं एक वो प्लेयर जिनका नाम हमेशा उभर के आता है। सो इस बार ऑर्डर का स्टेप अप करना, काफ़ी पुराने प्लेयर हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर, बट एट द सेम टाइम दास जावियर और S2G के बीच में होती हुई गुफ्तगू, कुछ शॉट्स यहाँ पे जरूर एक्सचेंज हुए हैं। राबीज को हल्का सा डैमेज पड़ा, बट स्टिल आउट ऑफ हार्म्स वे। हम आपको एक और बात बताएं, जिन लोगों ने लीग देखा होगा उनको ये बात याद जरूर होगी कि नोवा जब टॉप 16 में आने की कंटेस्टेशन थी तो नोवा के प्लेयर्स, खैर उस चीज के ऊपर आते जरूर है, बट यहाँ पर ताओशी ऑलराइट की फील्डिंग के सामने से निकल गए प्लेयर। मेला आए, डैमेज मेला को पड़ा और मेला फंस गए, जिसके कारण मेला गए। काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ताओशी ने फील्डिंग सेट करी थी। एंड इफ वी टॉक अबाउट इट, ये बदला है लीग के अंदर जब इन्फिनिटी ने 6-8 के प्लेयर्स को पकड़ा था। आखिरी गेम में आकर के 6-8 ने वो बदला
आज जाकर के लिया है, जहां पर एक प्लेयर को तो टेक डाउन किया जरूर है, बट वेल फाइट इज नॉट ओवर येट। जी हाँ, एंड इसके पीछे की जो रीजनिंग है हम समझा देते हैं। आई थिंक राइट साइड पे अगर नजर डालें, दोनों ही टीम सेम पोजीशन पॉइंट्स पे हैं, 138। सो इट्स अ बैटल फॉर द 7th स्पॉट एंड इनफैक्ट द 6th स्पॉट, और इन्फिनिटी को ऑलरेडी एक काफी खराब शुरुआत हो चुकी है। गॉड लाइक के प्लेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी अपना यस्नाय की तरफ लूट खत्म करके अपने फर्स्ट रोटेशन की तरफ आ चुके हैं। क्लच गॉड यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं एरियाज का कि कहाँ पे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए आई थिंक यहाँ पे रहना ठीक ही रहेगा जब तक नेक्स्ट सर्कल शिफ्ट नहीं आता, जब तक उनको आवश्यकता नहीं होती है। फिलहाल के लिए केओस नेक्स्ट हुआ एक बहुत ही अच्छा सीजन मैं कहूँगा उनका इस बार देखने को मिला। जो रन था कमिंग इन, जो जीसी के अंदर एक सिंड्रेला स्टोरी जिसको कह सकते हैं, वन ऑफ द डार्क हॉर्सेस कमिंग इनटू द टूर्नामेंट। हर एक टूर्नामेंट के अंदर यही एक आस रहती है, राइट? एक कुछ टीम्स ऐसी होती है जैसे कि यू नो हमने कुछ दिन पहले बीजीएस में भी देखा था, काफी सारी नई टीम्स आई थी, बट वो प्रभावशाली परफॉर्मेंस जो रहता है, जैसे पुराने टीम्स आप बात कर ले, सेल्स हो गई, जेड हो गई, आईटी हो गई, वैसे टाइप का परफॉर्मेंस देखने को वो नहीं मिल पाया था। बट इस बार कमिंग इनटू द जीसी, आई थिंक केओस नेक्स्ट ने सभी को काफी ज्यादा खुश करा। बिल्कुल, काफी ज्यादा प्रभावित किया जरूर है नेक्स्ट ने। इनफैक्ट फ्रोजन ने इंडिविजुअली अगर हम लोग उनके स्किल्स की बात करें, काफी ज्यादा प्रभावित यहाँ पर किया है। बट इन्फिनिटी के प्लेयर्स कितना गॉट इन आगे जा चुके थे, और बाकी प्लेयर्स अब राइट हैंड साइड से फ्रॉम द जोन जाने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर अगर स्टालवर्ड के प्लेयर्स ने उनको स्पॉट किया तो स्टालवर्ड के प्लेयर्स डेफिनेटली उनको टेक डाउन कर सकते हैं। एंड वहीं पर 6 to 8 के प्लेयर्स भी आगे मूव कर जरूर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो ब्रिज के अंदर अंदर जाते रहे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अभी भी इन्फिनिटी के प्लेयर्स यहीं पर हैं। ये चाहते ना चाहते रिवर्स साइकोलॉजी हो चुकी है। ये तो एक यू नो वही वाली बात है, जो कैट एंड माउस चेस जो होती है। सो इन्फिनिटी के प्लेयर्स कहीं ना कहीं उनको ही पता है कि फिर 6th और 7th स्पॉट के बीच देयर इज अ सर्टेन डिमार्केशन इन द प्राइस पूल। सो वो जो एक्स्ट्रा प्राइज मनी है उसके लिए टीम्स लड़ रही है। एंड ये जो कुछ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्वर्ट अगर करें INR में हो जाती है। तो फिलहाल के लिए सारी टीम्स यहाँ पे कोशिश तो कर रही है, और फिर से एक सर्कल का जो सेंटर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। इन्फिनिटी के प्लेयर्स यहाँ पे रोटेट तो कर ही रहे हैं, गॉट यूनियन ठीक बगल में FG के प्लेयर्स भी रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इन द मीनवाइल S2G के प्लेयर्स आई थिंक इस बार थोड़ी स्पेसिंग चेंज करी, मुझे लगा यहाँ पे घुस के टीम्स को तलाशने वाले हैं एंड देन उनके साथ फाइट लेंगे। बट फिलहाल के लिए फॉरेस्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक निकाला एंड लॉर्ड भी हो चुके हैं डाउन। एंड कहीं ना कहीं नावी को अगर यू नो महसूस होता है कि ये निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा खुश रहने वाले हैं। फिनिशर्स भी आ रहे हैं उस चीज के अंदर। अगर हम लोग बात करें, निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स एक करके पिक हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नोवा के प्लेयर्स प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टीम सीक्रेट आई डैमोन के ऊपर, और निग्मा गैलेक्सी के लिए एक छोटा सा जीवन दान आप बोल सकते हैं। हालांकि उनके 2 प्लेयर्स, एक तो पिक हो ही चुके हैं और एक ब्लीड आउट अभी भी कर रहे हैं। तो दिक्कतें निग्मा गैलेक्सी के लिए अभी खत्म तो बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं। बट खैर, उन सब चीज़ों के अराउंड ही यहाँ पर इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि जूनी अपनी टीममेट को वो जो फिनिश है वो देते हुए नजर जरूर आएंगे। वो जो असिस्ट है वो उन्होंने किया। फ्रेडो धीरे धीरे आगे जा जरूर रहे हैं। डैमोन उनका जो एक प्लेयर नॉक है वो डेफिनेटली अभी रिवाइव हो जाएगा, बट फ्रेडो एक नीड करना चाहते हैं। अगर उनको एक सही रीड है कि ये नीड कहाँ जाना चाहिए, डेफिनेटली डैमेज देगा। बट आई बिलीव एग्जैक्टली जो वो मार्कर चाहते हैं उस पर ये नीड नहीं जाएगा। बट ये भनक लग चुके हैं डैमोन की, कोई और टीम भी यहाँ पर, एंड दैट इज टीम सीक्रेट ऑब्वियसली। जी हाँ, एंड टीम सीक्रेट यहाँ पे आ तो जरूर चुके हैं, बट आई शॉट्स ऑलरेडी रोटेट कर रहे हैं और टॉप ऑफ द साइड, टॉप ऑफ द हिल्स की तरफ से। फॉरेस्ट एक ऐसे पोजीशन में कहीं ना कहीं डिसएंगेज में भी करना चाह सकते हैं जिस पोजीशन पे हैं, क्योंकि अगर आई शॉट्स एक अच्छा एंगल मिल जाता, बट उससे पहले ही 4 राइवल्स के आप ही ने उनको स्पॉट कर दिया। फॉरेस्ट डाउन हो चुके हैं। यहाँ पे टीम सीक्रेट अगर चाहे तो आगे बढ़ सकती है, बट सेम टाइम फ्रेडो को भी टीम सीक्रेट ने यहाँ पे गवा दिया है। बिल्कुल, टीम सीक्रेट के लिए दिक्कतें हो चुकी है इस फाइट में। वो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग सूट लेकर के आए थे, बट उतना ही धीरे धीरे फंसते रहे। डैमोन के प्लेयर्स की बात करें, जुनी अभी भी थोड़ा सा पीछे खुद को संभाल करके रखे हुए हैं। अगर डैमोन के प्लेयर्स यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो उसमें आई शॉट्स उनको डेफिनेटली पकड़ सकते थे, बट आई शॉट्स के साथ ही यहाँ पर रीग्रुप होना अभी के लिए चाहेंगे। सर्कल अगला शिफ्ट लेने वाला है एंड 6 to 8 इन्फिनिटी को खोजते थे। अब अपना आए ये लोग आए हैं इन्फिनिटी के अगेंस्ट। Well, I believe they definitely are taking it a bit too personal. जी हाँ, काफी ज्यादा पर्सनल हो चुका है। लीग में हुआ था, 1 महीना हो चुका है उस बात को। भूले नहीं है। भूले नहीं है। के बीच में पड़ेगा बदला
यही तो हमें पसंद है, राइट? वो फाइनल गेम के अंदर वो मसाला जिसकी मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, वो देखने को मिला। बट डायमंड गेमिंग और उनके विजिट टावर्स की जो लव स्टोरी अभी भी जारी है, रिट्रीट करके विजिट टावर उन्होंने ले लिया है। बट वही बात आ जाती है कि अगर एक भी प्लेयर नॉक हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको प्रोटेक्ट करना। केओस नेक्स्ट के प्लेयर्स चाह ही रहे थे। ये क्या कुदुर ने 4 कुछ राइवल्स ना। पे गोलियां जरूर चलाई होंगी, बट क्योंकि उनकी गाड़ी बीच में आ गई, उनके टीममेट की गाड़ी बीच में आ गई, तो वो आखिरी की 1-2 गोलियां ही लगने की बस दरकार थी। शायद, मेरे को लगता है शायद यही हुआ है, लेकिन ये भी क्यों ही हुआ। बट खैर, अगले सीजन तक सॉरी बोलते रहेंगे। नेक्स्ट के प्लेयर के ऊपर, निहात के ऊपर एक ग्रेनेड आया है पावियान का, और ग्रेनेड डैमेज दे गया है। एकता बचे हुए नजर जरूर आ रहे हैं क्योंकि आखिरी प्लेयर बचे हैं। अभी भी सारी 16 टीमें जीवित है, लेकिन यहाँ पर पहली एक टीम मुझे लगता है शायद बाहर का रास्ता दिखती हुई नजर आ सकती है। शायद एकता की पोजीशन यस प्रॉपरली पता चल चुकी है, उन्हीं के ऊपर गोलियां आएंगी और नेक्स्ट रुया पहली टीम बनती है आखिरी गेम से। एंड कहीं ना कहीं यार वही वाली बात है, इतना बेहतरीन खेले पहले दिन, सेकंड दिन, एंड आपके बातों से कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि लास्ट ईयर के क्लास डिजिटल एथलेटिक्स की कहीं ना कहीं एक याद आ जाती है कि स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बट फिलहाल के लिए ऑर्डर यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। नावी के लिए एक बहुत ही अच्छा गेम जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं निग्मा गैलेक्सी ऑलरेडी बैकफुट पे आ चुकी है और नावी एनआरएक्स को टीम फिनिश भाई सको एक दूसरे के साथ। बट इन्फिनिटी के प्लेयर्स गॉट ट्यूनी इनफैक्ट वहां पे फिनिश हो रहे। सो 6-8 शायद इस चीज का फायदा जरूर उठा सकती है। इन्फिनिटी के एक और प्लेयर डाउन भी हुए हैं, तो इन्फिनिटी वेस्टर्न ब्रिज से जाने का प्रयास था, फिर घूम के ईस्टर्न ब्रिज से गए। बट जिस तरीके से टीम्स ऑलरेडी मौजूद है, काफी मुश्किल होने वाला है उनका इस गेम में एक अच्छा प्रदर्शन निकालना। डेफिनेटली स्पॉटेड है क्योंकि उनके ऊपर थोड़े बहुत शॉट्स आए थे, हालांकि वो शॉट्स एग्जैक्टली उनको कनेक्ट नहीं हो पाए। इन्फिनिटी के प्लेयर्स रिवाइवल्स वो सब चीज़ों की प्रक्रियाएं यहाँ पर जारी हैं, चल रही हैं। अभी तक एक टीम गई है, अभी 55 लोग जीवित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शॉट्स एक और बार गॉटिनी को यहाँ पर टेक डाउन करते हुए नजर जरूर आएंगे एंड स्प्रेस डाले जा रहे हैं उस जगह पर, शायद डैमेज देते जरूर, बट एग्जैक्टली उस जगह पर थोड़ा सा कवर था जो प्लेयर्स के पास आया है। और इन्फिनिटी के प्लेयर्स भी रिटालिएशन फायर यहाँ पर देना चाहते हैं, बट फ्रेडो थोड़ा आगे जा चुका है। मुझे लगता है ये इंडिविजुअल डेथ पुश शायद बन सकता है, बट वेल फ्रेडो पिक निकालेंगे जरूर। गॉटिनी उनका ये तीसरा नॉक तो डेफिनेटली बचाया, अब उनको नहीं जा सकता एंड पिक आराम से किए जोनेरा भाई जोनेरा नॉट लाइक का 2-2 स्प्लिट हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट परेशानी वाली बात ये है कि अगर नावी 2x करा ना 2x बंदे होना, बट फिलहाल के लिए टीम सीक्रेट यहाँ पे फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन्फिनिटी के एक और प्लेयर डाउन। नावी मुझे नहीं लगता कि एसटी को टीम डाउन, जो दो प्लेयर्स हैं वो फ्यूरियस गेमिंग की साइड से मूव कर रहे हैं, बट सालवर्ड्स के प्लेयर्स काफी करीब यहां पर मूव करते नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट उनकी गाड़ियां टकराई हुई थी समय के लिए, लेकिन यहां पर 4 राइवल्स के प्लेयर्स आप देखिए कितने ज्यादा बेहतरीन तरीके से डायमंड पर हावी हो रहे हैं एंड एक और टीम का सफाया यहां पर होता हुआ जो होगी डायमंड गेमिंग। और वेल ऐसे रशेस चाहिए थे, बट वहीं पर सालवर्ड भी बाहर का रास्ता देखती हुई नजर आएगी। ये टीम 5वें पायदान पर अब अगर हिंदी वर्ड है ना, हिंदी वर्ड अच्छा खेल गई 6 to 8 जाएगी टॉप 5 के अंदर, टॉप 4 के अंदर। 720-60 FPS पे है ना, क्लियर पनि हुन्छ, राम्रो पनि चल्छ के टॉप 4 हासिल करने का एंड सडनली इतनी लंबी छलांग मारने का मौका। बट फिलहाल के लिए गॉड लाइक के प्लेयर्स उसी शेल्टर एरियाज के पास में आ चुके हैं जहां पे इससे पहले जो रैंगल गेम पे काफी सारा डैमेज हुआ था वहां पे। बट फिलहाल के लिए टीम सीक्रेट के प्लेयर्स के ऊपर निग्मा गैलेक्सी इनफैक्ट हमोदी काफी ज्यादा डैमेज इग्नोर भाई ल नेट गयो मेरो त लल मेरो के भयो नेट गएको लोड लिदिरहेछ। दे रहे किड को डैमेज जरूर दिया था, बट पीछे से यहाँ पे और अभी शॉट्स आए थे। बट जंपर इज द वन जिन्होंने नॉक एस्टैब्लिश किया था। यू यांग ने वो फिनिश भी चुरा लिया, अपने नाम कर लिया, एक और फिनिश पॉइंट। काफी अच्छे तरीके से फाइट यहाँ पर निकाली। अभी लग रहा है ऊपर भी प्लेयर्स हैं, तो आप देखिए नेक्स्ट की इजाजत है, बट नाउ
वो नेट ऊपर ही करना चाहते थे बट वो ऑब्वियसली जल्दी कुक करके जल्दी यहाँ कितना इंपॉर्टेंट सिचुएशन गेम बन जाता है. दो प्लेयर्स अभी सर्वाइव कर सकते हैं पास. MK and Legend, a team with two faces. 68 is at 6th. Right now, somewhere between 6 to 8. कितने $1000 का नुकसान होगा ये तो थोड़ी देर में पता चलने वाला है, बट फिलहाल के लिए ना फिर इन्फिनिटी का जो यहाँ पे एक मकसद है कि एक टॉप 4 फिनिश कहीं ना कहीं सपना बनता रह जाएगा. चार टीम एलिमिनेट भाई सके. यहाँ पर इकलौता प्लेयर सरवाइव कर रहा अपनी टीम के लिए. चौथे पोजीशन तक के लिए वो जा सकते हैं. हालांकि उनको वो मेजर जो एक ब्रिज होता है 8 to 12 पोजीशंस का वो क्रॉस करना पड़ेगा बिना कोई नॉइस के. लेकिन यहाँ पर फ्यूरियस गेमिंग के प्लेयर्स के लिए दिक्कतें हैं. पापी पोतो को डाउन जरूर किया जाएगा. वो बग्गी में बैठ रहे थे क्या समझ नहीं है, बट खैर उनको डाउन तो जरूर यहाँ पर किया जाएगा. एंड वहीं पर फ्यूरियस गेमिंग के बाकी प्लेयर्स दिक्कतों में आएंगे. इनफैक्ट नावी भी दिक्कतों में आएगी क्योंकि सर्कल इनसे दूर यहाँ पर करवट लेता हुआ जरूर हमें नजर आएगा. चौथे पांचवें जोन का जो शिफ्ट होता है इंपॉर्टेंट होता है. एंड ये जो शिफ्ट है गॉड लाइक के पास है इस समय. फिक्सस यू नो क्या जाते जाते चेहरे पे एक खुशी देखने को मिलेगी, क्या एक मुस्कुराहट देखने को मिलेगी, ये तो सिर्फ वक्त बताने वाला है. फिलहाल के लिए टीम सीक्रेट के प्लेयर्स यहाँ पे अल्फा 7 की तरफ एंगेज इन कर चुके हैं. माफियोसो यहाँ पे डाउन हो गए. एपी इन द मीनवाइल S2G के प्लेयर्स के साथ फाइट ले रहे हैं. टीम सीक्रेट के फ्रेडो यहाँ पे करीब आने की कोशिश आई शॉट्स के. एंड दर्शकों को बता दो ऑलरेडी ओशन अपने चेहरे से उठ चुके हैं. कानों से बहुत ही जल्दी खून बहने वाला है. बट उससे पहले नहीं अल्फा 7 के कारियो, लेट्स सी what he can do. जंपर एक अच्छा एंगल बना के बैठे. Z-God 4 राइवल्स के एक प्लेयर को पिक करते नजर जरूर आएंगे. वो फाइट डेफिनेटली एक दूसरे एंगल पर हो रही होगी. लेकिन ये वाली फाइट जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्कल के बाहर एकदम से फाइट बन जाती है. अल्फा 7 इस समय 7वें पायदान पर. वो भी अगर सर्वाइव करते तो इन्फिनिटी को टक्कर डेफिनेटली दे सकते हैं क्योंकि वो 137 पॉइंट्स एज ऑफ नाउ बना जरूर चुके हैं. एलिमिनेट होते तो भी 138 पर जाकर के रुक जाएंगे क्योंकि एक पॉइंट उनको अभी प्लेसमेंट का मिलेगा. टीम सीक्रेट उनका ये जो रन है, उनके जो रश है रोकने के लिए पूरे तरीके से तैयार. दे हैव नथिंग टू लूज. दे ओनली और वही सबसे खराब चीज बन जाती है. आई शॉट्स स्टिल सर्वाइविंग बाय द विस्कर्स इन द स्मोक. और इसी के अंदर वो प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है जोन के बाहर से प्लेयर्स आ रहे हैं. उनके पैरेलल ये जाना चाहते थे बट आई शॉट सर्कल के अराउंड एक अच्छा एंगल पकड़ रहे हैं. पेड़ पकड़ सकते हैं. प्लेयर्स ओपन में आएंगे, उनको स्पॉट करेंगे. एक स्प्रे में 2 को लेकर के जाने का दम तो रखते ही हैं. ऑफ कोर्स. एंड ऑलरेडी यहां पे राउट ने रिवो को नॉक कर दिया. निग्मा गैलेक्सी ने मैनेज कर ली 2 फिनिश पॉइंट्स. सो निग्मा गैलेक्सी अभी भी कंटेंशन में हार नहीं मानना चाह रही. बट नावी उनके ऊपर ऑलरेडी जा चुकी है. सर्कल का जो शिफ्ट है ऑफ कोर्स काफी सारी अलग टीम्स को फेवर कर रही है. बट राउफ ये गिव अप नहीं करना चाह रहे. आई शॉट्स का भी अगर फिनिश यहां पे उठा पाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनका सफर खत्म होते हुए यहीं पे नजर आएगा. निग्मा गैलेक्सी 10वें पायदान पे बाहर हो चुकी है. बट जॉनथन ने यहां पे 4 राइवल्स के एक प्लेयर को नॉक भी किया, साथ ही साथ फिनिश भी निकाला. 2 फिनिशेस गॉड लाइक के हो चुके हैं. इनफैक्ट तीसरा भी यहां पर क्लच गॉड निकालते नजर आए हैं. गॉड लाइक के पास 3 फिनिशेस और अपनी इमीडिएट कंपटीशन जो 4 राइवल्स है. हालांकि 4 राइवल्स की बात करें तो 6 उनके पास एलिमिनेशन पॉइंट्स प्लस 1 प्लेसमेंट पॉइंट यहां पर आया. पर देखते हैं गॉड लाइक उससे कितना पार पा पाते हैं. अभी के लिए दे हैव द 14th पोजीशन फॉर देमसेल्व्स. क्या वो 13th उनके लिए लकी बन जाएगा अगर वो ऊपर जाते हैं क्योंकि अभी और भी फाइट्स यहां पर लेनी पड़ेंगी. लेकिन नोवा के जो किंग हैं वो गॉड लाइक के एक प्लेयर को नॉक करते हुए नजर आएंगे. इनफैक्ट बाकी प्लेयर्स को भी डैमेज दे जरूर रहे हैं. ऐसे में दिक्कतें बहुत ज्यादा बन सकती हैं क्योंकि उनको पता चल चुका है कि उनके पीछे से नोवा की टीम आएगी. बट खैर रवीज एक प्लेयर को पिक करेंगे. S2G के प्लेयर्स बहुत ज्यादा मुश्किलों में आ चुके हैं. 5वां सर्कल जो है वो क्लोज इन होता नजर आएगा. 6वां जोन हमारा बनता हुआ जरूर दिखाई देगा. वहीं पर आप अगर फेनरबाचे के मशीन को देखें काफी एक बोल्ड रोटेशन करी बट वहीं पर नावी के क्रॉसर में आ गए. अब नावी के प्लेयर्स काफी दिल खोल के खेल सकते हैं. उनको पता चल चुका है जो उनके कांटे की टक्कर की टीम थी निग्मा गैलेक्सी इस गेम से बाहर हो चुकी है. और नावी के पास ऑलरेडी 5 फिनिशेस हैं. बट ये देखिए चलते हुए गाड़ी से अगर जा रहे डाच चैंपियन के प्लेयर्स अगर गाड़ी फोड़ देते हैं तो कितना ज्यादा डिजास्टर्स हो सकता है. इन द मीनवाइल मैटिक स्टिल सर्वाइविंग चार्ज को लीड कर रहे हैं बट यहाँ पे हो चुके हैं नॉक. इन द मीनवाइल उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं ग्रेनेड्स आते हैं एंड पूरी नावी खत्म.
एट द सेकंड पोजीशन इन द ओवरऑल, ये तो पक्का मिलता है। बट चार टीमें बची हैं जिसमें अभी मैन पावर अगर हम लोग बात करें गॉड लाइक के पास है, डजेवियर उनके पास भी चारों प्लेयर्स है बट एक को रिवाइवल चाहिए। S2G दे हैव 3 प्लेयर्स जिसमें से एक को रिवाइवल जस्ट अभी मिला है। नोवा दे हैव 3 प्लेयर्स फॉर देमसेल्व्स एज वेल। देखना पड़ेगा क्या होता है क्योंकि जो सर्कल है वो गॉड लाइक के पास जाता हुआ नजर जरूर आ रहा है। इससे ज्यादा अभी क्या चाहिए, वेल चिकन डिनर इफ यू आस्क। और वही यहां पर लेने की कोशिश रहेगी। सोमराज एक ऑफ एंगल पर बैठे हुए हैं, पैराबॉय S2G के एक प्लेयर को पिक करते नजर जरूर आएंगे। अब डजेवियर के ऊपर पूरी फाइट यहां पर नोवा ले सकती है। हमारे तो मैच है सबका पैसा क्या है वहां पर मतलब हुन्छ नि अगर सर्कल की ये इंटेंसिवनेस हुन्छ नि बेहतरीन जोन जैसा आपने कहा एंड साथ ही साथ यहाँ पे अग्रेसिव भी जा रहे, क्लच गॉड मेकिंग श्योर यहाँ पे टिम्बर नॉकआउट हो जाते हैं। बोलती बंद मेरी तो कालसी किसी भी मोमेंट यहाँ पे कवर फायर देने की कोशिश करेंगे बट जिस तरीके से स्मोक्स यहाँ पे डाल दिया गया है बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बट गॉड लाइक एक ब्रीदिंग चांस, एक आखिरी चांस, एक कॉन्सोलेशन, चिकन डिनर लेने का मौका। कैन दे डू इट? दैट्स द क्वेश्चन, कैन दे डू इट और विल दे बी एबल टू डू इट? क्योंकि जो कंपटीशन है अभी भी उसी लेवल की फियर्स कंपटीशन हमें नजर आ रही है। देखिए उनको सोमराज डेफिनेटली देख रहे होंगे एंड देखा भी है और पिक भी किया है। गॉड एल निकाले को ये प्लेयर इस समय खूंखार रूप में आया है, लेट आया उस चीज का गुस्सा ऐसा लग रहा है। सोमराज यहाँ पर निकालते नजर जरूर आ रहे हैं बट वहीं पर नोवा के प्लेयर्स भी फाइट ले जरूर रहे हैं। क्लच गॉड डजेवियर के डक को यहाँ पर पिक करते जरूर नजर आएंगे। फ्रैंकी के ऊपर थोड़े बहुत स्प्रेस दिए जा रहे थे। किंग डक को यहाँ पर फिनिश करेंगे। सी गॉड नोवा के किंग को लेकर के जाते हुए ये गॉड लाइक ही तो चाहिए थी। क्लच गॉड डजेवियर के प्लेयर्स के ऊपर कहर बन के टूटते हुए गॉड लाइक अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं विद द मैन एडवांटेज। इट्स द फाइनल गेम राइट नाउ और S2G का भी सफाया हो जाएगा। 4 versus 3 गॉड लाइक वर्सेस नोवा। This is what we would have wanted to see मैच है यार गॉड एल वर्सेस नोवा यार the final day of PMGC। जी हाँ, बट इस पॉइंट पे अगर बात करें सिचुएशन की नेक्स्ट शिफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एंड इनफैक्ट नोवा के एक प्लेयर नॉक हो चुके हैं। गॉड लाइक की पोजीशनिंग काफी बेहतर सिचुएशन के अंदर पैराबॉय एंड जिमी के ऊपर पूरा भार है बट जॉनथन मैनेजेस टू गेट द नॉक। कीप क्विट भाई चुप अच्छा लास्ट मोमेंट जिमी अकेले प्लेयर यहाँ पर बचे हुए हैं, पूरा भार उन पर आता है बट वहीं पर जॉनथन आगे जा रहे हैं। जॉनथन वांट्स टू मूव फॉरवर्ड, ही वांट्स टू स्टील इट आउट फ्रॉम नोवा और वो आराम से स्टील कर भी सकते हैं। अगर हम लोग बात करें जिमी की, अगर पोजीशनिंग की बात करी जाए, दे हैव अ गुड पोजीशनिंग फॉर देमसेल्व्स लेकिन प्लेयर एडवांटेज तो गॉड लाइक के ही पास यहाँ पर बंद करके बैठा है। जॉनथन को देखिए कितना ज्यादा आगे यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। स्मोक उनके हाथ में, उनके पास वेपन डेफिनेटली होना चाहिए, वेपन निकालेंगे। M4 उनके पास दिख जरूर रही है। जिमी रिवाइवल पर यहाँ पर जा जरूर रहे हैं बट जॉनथन अगेन स्टिल वेटिंग। ये एक वेटिंग गेम बन चुका है। सोमराज बिल्कुल आगे जाएंगे बगी लेकर के। ये बगी, ये चार्ज इन, क्या ये वार्निंग बन जाती है? इट्स अ वार्निंग, इट्स अ फाइनल वार्निंग बिकॉज़ इट्स अ फाइनल फाइट राइट नाउ। और सोमराज वो बस वेट कर रहे हैं कि कब प्लेयर उनके सामने आएगा। जिमी को देखिए नेड कुक कर रहे हैं इस समय। बट इज दैट वर्थ इट? क्योंकि जो जोन है वो उनको लेकर के जा चुका है पीछे। अब नोवा अंदर सिमट चुकी है इस सर्कल में। जी हाँ, यहाँ पे जिस तरीके से एक यू नो हाइड एंड सीक का गेम देखने को मिल रहा है, तरह गेम पे दिखाएगा इन्हें। नोवा कहाँ से आ रही है बाहर के पास आता हुआ हमें नजर। What? लेकिन जोन का डैमेज पड़ रहा है, खुद ही खुद से खत्म यहाँ पर होते नजर आएंगे। फाइनली एक विनर चिकन डिनर गॉड लाइक के पास आता हुआ हमें नजर जरूर आएगा। नो डाउट नोवा इज द चैंपियन बट गॉड लाइक एक फाइनल गेम लेकिन दिल जरूर जीता है उन लोगों ने। एंड फाइनली वो चीज हम लोग को देखने वाला आखिरकार यू नो 18वें गेम पे गएछन् जापान देशन। जब भी भारत इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में गए एक ना एक पार्टी गर्न गए। पार्टी
पार्टी आने का पार्टी एक चिकन डिनर हासिल करके रहते हैं एंड कहीं ना कहीं मुझे भी घबराहट हो रही थी कि आज क्या चिकन डिनर मिलेगा बट फाइनली हियर इट इज एंड प्राइस देखो यार ना अच्छा पेशेंस दिखाया ज्यादा ओवर एग्रेसिव नहीं गए गलत फाइट्स नहीं लिए के थाने में दे रहा कि पहले दिन से 1 साल करके रहे विनर को अनाउंस गर्नु पर्यो नि त मलाई अवॉइड करना जोन टू जोन खेलना that was a very good decision that was an actually good game right and बाकी सारी टीम्स जिस तरीके से खेल रही थी बट अभी तक का जो स्टोरी लाइन था राइट हम सभी को पता चल चुका था नोवा टॉप पे रह रही थी उन्होंने अपना जो चैंपियनशिप टाइटल है वापस से सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया बट देयर यू गो मैच रैंकिंग्स की अगर बात करें गॉड लाइक गेटिंग अ चिकन डिनर 7 एलिमिनेशंस के साथ 22 पॉइंट्स इस गेम से अर्जे एंड काफी सारे पॉइंट्स इकट्ठा हुए जरूर देखना चाहूंगा ओवरऑल रैंकिंग्स में क्या छलांग लगाई है प्रॉब्ली एक अच्छी छलांग मैं बोलूंगा अगर होती है क्योंकि वो 13वें पायदान तक जाना चाहते 4 राइवल्स को भी हालांकि वो 7 पॉइंट्स मिले जरूर हैं तो डिफरेंस यहाँ पर बना था अब उस डिफरेंस के अगेंस्ट कितना ज्यादा अच्छा आगे गए देखना पड़ेगा बट वहीं पर S2G मतलब S2G आज रैंगल्स में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा एग्रेसिव गई है एंड जॉनथन कमिंग डाउन विद एन MVP 3 एलिमिनेशंस 760 का डैमेज 23 मिनट लगभग 40 सेकंड का सर्वाइवल टाइम जो हमें चाहिए थी चीजें जो हम लोग जिस चीज की कॉन्वर्सेशन करते होते हैं कि ये चाहिए था वो फाइनल गेम में हुआ देर से आया बट खैर आया जरूर है नाम आया जोनाथन को जैसे भी बनी ट्रेन तो छूट चुकी थी ऑफ कोर्स वो जो सपने थे यहाँ पे जितने भी सारे इंडियन फैंस का कि कुछ एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला की तरफ से वो ओवरऑल टूर्नामेंट में तो चलिए देखने को नहीं मिला बट आखिरकार एक चलिए मुस्कुराहट के साथ एक हैप्पी एंडिंग जो बोल सकते हैं ऑन अ गुड नोट यहाँ पे गॉड लाइक ने इस टूर्नामेंट को खत्म किया ऑफ कोर्स चिकन डिनर के साथ मेरे नेट चल रहा है मेरे वाईफाई स्पॉन्सर कर दो ना शब्द होते हैं कि लाइट की सब पूरी स्पॉन्सर कर दो हार्ड बट प्लेइंग जीसीस ये इन लोगों ने बोला जरूर था अपने एक इंटरव्यू में प्लेइंग जीसी कंपैरेटिवली इजी होता है क्योंकि आप एक ऐसी कंपटीशन से आते हैं खुद कस्तो मिलाइदिन्छ भने कस्तो मिलाइदिने भने त जो आपको पता है कितना ज्यादा रेगुलेटेड होती है कितना ज्यादा डिसिप्लिन में ये प्लेयर्स खेलते हैं ईयर को नजर आते हैं रेगुलरली इनके पीएल के सीजन्स चलते रहते हैं वहां पर फाइट्स हमने देखी हैं कितना ज्यादा क्लोज होती हैं लेकिन ये वही टीम है मतलब ये गर्रासु भनेर त्यस्तो डिस्काउन्ट हो स्पेशल डिस्काउन्ट हो चिकन आ जाता तो सोचिए फेज इनसे ऊपर हो सकती है 6 पॉइंट्स का मेरे ख्याल से शायद डिफरेंस था या कुछ ऐसा डिफरेंस जरूर था बट वहां पर अपनी सारी स्ट्रेटजीज छुपा दी उसके बाद एकदम से सारी स्ट्रेटजीज निकाल करके सामने रख दी जब चाहिए था देखिए लीग स्टेजेस के दौरान तो साफ ये भी आपको पता था कि प्लेयर्स खुले में घूम रहे थे जैसे आराम से जा रहे थे उनकी पोजीशनिंग के लिए बट कुनको आ रहे नेट साफ तौर पे पता चल रहा था प्लेयर्स सीरियसली वहां पे नहीं खेल रहे थे उनके लिए क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बट कनेक्ट नेपाल हैन फाइनल्स के अंदर आते यहाँ पे वेयर इट मैटर्स पहिला तिम्रो अर्कैको थियो हैन लिटरली कॉन्कर्स एंड इस बार आई थिंक डे 1 भी काफी अच्छी उनकी शुरुआत रही थी सेकंड पोजीशन पे थे बट उसके बाद स्पॉन्सर रही थी 35 MBS 10000 ये चैंपियनशिप पर ईयर आज अगर कहूंगा कंपेयर इसको मतलब कति लाग्यो तिमीलाई महिनाको इनफैक्ट इस पर्टिकुलर गेम के अंदर उन्होंने कुछ अलग करने की कोशिश जरूर बैकफायर हो गया बट देयर यू हैव इट राइट पोजीशन नंबर 900 नावी यहाँ पे आ चुके हैं सो ऑफ कोर्स काफी खुश रहेंगे पूरा करते होता चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम करा प्लस $1.5 million नाटा स्विंसर यहाँ पर दूसरे पायदान पर जति खेर भने गर न तीसरे पर जाते हुए 175 पॉइंट्स नावी के पास आते हैं एंड यस डेफिनेटली द हेडलाइंस विल रीड दैट नोवा कॉन्कर्ड इट ऑल अगेन एंड वी गो टीम 7 अगाडि छ 700 पॉइंट्स है 2 दूसरी बार के चैंपियंस और पॉइंट्स आते हैं 2-2-2 उनके पास S2G चौथे तक चलेगी आज के रैंकिंग्स की बदौलत डजेवियर 5वें पर मेरे भाई NRX क्लास एथलेटिक्स की जो हम बात कर रहे थे वही सेम चीज एग्जैक्टली देखने को मिली है एंड वहीं पर स्टालवर्ट और SCSTE 628 at the 8th somewhere to the down line of 6 to 8 and Alpha 7 9 Infinity 10 Demo 11 Team Secret 12th और उसके बाद गॉड लाइक 13वें पर बट ऑर्डर जो हम एलिमिनेशन के नंबर्स की बात करेंगे ना 45 40 होंगे इनके पास आधा धन सस्तो भइसक्यो होला यत्रो कम्पिटिसन भएको छ कि 7700
फाइनल्स के एमवीपी बन चुके हैं ऑर्डर एंड आई थिंक अनडिस्प्यूटेड रहे थे, कोई यहाँ पे क्वेश्चन कर भी नहीं सकता था कि हाँ शायद कोई और बेटर प्लेयर था या फिर समथिंग। द नियरेस्ट आई थिंक पैराबॉय रहेंगे, फ्रोजन भी वो कहीं ना कहीं तालिका में मौजूद थे। बट देन अगेन बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट हम लोग को देखने को मिला, 3 दिन का ये घमासान एक्शन, दुनिया के विश्व के सारे बेहतरीन टीम्स थी और it had to end. Of course, Chinese teams domination रहता है, and more than that, I think it all comes down to आप pressure कितना अच्छा झेल पाते हो, right? Chinese teams आप देखते हो कितना organized league है, उनका एक proper road map हमने देखने को हम लोग को मिलता हुआ है। बार situation में पैनिक नहीं करते, जहाँ पे अच्छे की कहीं ना कहीं पसीने छूट जाते हैं। That is where Nova maintains themselves और यहाँ पे बन चुके हैं आपके PMGC के चैंपियंस। इनफैक्ट अनाउंस भाई था चैंपियनशिप पैसा नोवा वापस इसी चीज पर एम्फेसिस कर सकते हैं। एक बार आए थे, पूरे सीन को हिला करके रख दिया, चैंपियंस बने थे ये और 4AM पहला और दूसरा पायदान लेकर के गए। इस बार फिर से नोवा ने ये दिखाया कि ग्लोबल कंपटीशन। अरे उसका फुल फॉर्म नोवा है, तुम क्यों इतना हीरो बनते हो, बैठ के बताओ तो। डेफिनेटली 2 बार के चैंपियंस हमारे सामने, आपकी स्क्रीन के सामने सारे प्लेयर्स। ऑर्डर कौन स्टेडियम पे पैराबॉय विजुअली व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड काफी बेहतरीन खेले थे। सो आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड इस बार जिस तरीके से नोवा खेली है। डेफिनेटली, लेकिन इसी के साथ फिक्सर्स हमारा जो जर्नी है वो समाप्त होती जरूर है। जस्तो स्टेडियम में आएर अनि त गेम खेलेको हेरेको त्यस्तो पनि हुन्छ न, मान्छे घरै बसेर हेर्छ। अच्छा कुछ सीखने को मिला ये जर्नी जो गई है। कास्टरको नाम हेरे त FYXS@FX कास्ट अरे ओशियन शर्मा। अभी के लिए यही बोल सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट एक अच्छी जर्नी की का जो अंत है वो यहाँ पर होता जरूर है। हिंदी को जो और जर्नीज रहेंगी मैं हिंदी हेर्दै छु। बट वेल it just comes down here कि ये एक कॉम्पिटिटिव ईयर यहाँ पर खत्म होता है हम लोग। 21-22 का कॉम्पिटिटिव ईयर यहीं पे समाप्त होता है, ये आखिरी मैच था। इसके बाद जो हम लोग को देखने को मिलेगा विल बी द 2022-2023। उसके चैंपियंस कौन होंगे, उनके क्वालिफायर्स कैसे होंगे, ये सब तो ऑफ कोर्स हम लोग को पता चलेगा कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि काफी सारे टूर्नामेंट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। सो ऑफ कोर्स और टूर्नामेंट नाटे सारे यार, बट यहीं पे आज का जो सफर है हमारा खत्म होता है। ऑफ कोर्स अगर कोई भन्दै छन् यार कास्टिङ पसन्द आया, यू एन्जॉय अनि यसको त भइसक्यो, अरु पनि हुन्छ होला भन्दै छन् के। नाम है फिक्सेस और फिक्सेस कास्ट पे यू कैन फाइंड हिम ऑन ओशन शर्मा। जॉनी को भी फॉलो कर लीजिएगा ऑन आई सुपर जॉनी। तो फिलहाल के लिए अभी हम आपसे लेंगे अलविदा, मिलेंगे एक और मंच पे किसी और दिन, तब तक के लिए हैव अ गुड नाइट। अपर्च्युनिटी हो, अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ नि त एउटा यार। कस्तो करप्सन। तो त अब फेमस भएपछि हरेक कुरोमा पनि त हुन्छ नि हुन्छ क्या। त्यो त हरेक खेलमा हुन्छ। ल बस के थाहा नि अब, इसको क्या मालूम है। ल म चाहिँ अब यहीँ स्ट्रिम एन्ड गरेको है त। हाम्रो विनर चाहिँ नोभाको टिम रहेछ नि। अब म इन्ड गर्छु नि त मेरो रात। नोभाको पोइन्ट हेर न बे, पोइन्ट हेर न, पोइन्ट हेरिन्छ क्या। सबभन्दा हाइएस्ट पोइन्ट छ नोभाको। एनबी, त्यही त एनबी भनेको नोभा त हो नि मुला। नाभी त थर्ड कि सेकेन्ड कुन भएको छ, थर्ड होला सायद। थ्याङ्क यू फर 10 लाइक्स। भर्खर हाम्रो 10 लाइक पुग्यो, थ्याङ्क यू सो मच।
विनर चाहिँ एनाउन्स विनर भयो It's time to end the stream. लल के गर्दैछौ यस्तै हो के गर्छ अब पास आता हुआ हमें नजर बोला जरूर था अपने एक इंटरव्यू में प्लेइंग जीसी कंपैरेटिवली अब एवोल्यूशन ही सामने और कुछ नहीं यहाँ म रिप्ले हेर्दै थिएँ क्या कति त पोइन्टहरू खोज्दै थिएँ क्या versus 3 godlike versus Nova. This is what we would have wanted to see, and this is what we are getting in the final game, on the final circle, on the final day of PMGC. जी हाँ, बट इस पॉइंट पे अगर बात करें सिचुएशन की नेक्स्ट शिफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एंड इनफैक्ट नोवा के एक प्लेयर नॉक भी हो चुकी चीज एग्जैक्टली देखने को मिली है एंड वहीं पर स्टालवर्ट तिम्रो पोइन्ट एनवी को टिमले हेर सुन नोभाको टिम फर्स्ट भएको छ नाभीको टिम सेकेन्ड एनजिएफको टिम थर्ड गडलको टिम एसटेक 13 मा आएको छ यार टप्स एनवीको टिम नहेर अहिले फेस यहाँ कतिजनाको पोइन्ट यहाँ एसटी को टिम र एसजेड एसटी को टिम को पोइन्ट एउटै आएको छ A7 को अल्फा 7 र इन्फिनिक्स को टिम को एउटै पोइन्ट आएको छ गडलले सुरुमै पोइन्ट उठाएको भयो अहिले त्यस केही त के गर्न सक्थ्यौ इन्डियाबाट हैन हाम्रो छिमेकी मुल्क अलि त्यसैले सपोर्ट पनि हुन्छ क्या छिमेकी मुल्क भए पनि हैन तर त्यही त जे सपोर्ट दिनु पर्यो नि त यार सपोर्ट नदिँदैन क्या अब ओनामी ओए ओनामी हामी जम नेभीको टिमले 3 चिकन निकालेको छ नोभाको लिड भनेको तिम्रो डे 2 मा भएको छ क्या डे 1 देखि नै राम्रो खेलिरहेको छ नि यिनीहरू डे 1 मै 67 एनआरएक्सले पनि राम्रो दिएको थियो डे 1 मा 76 पोइन्ट उठाएको थियो डे 2 मा नोभाले 101 पोइन्ट उठायो डे 3 मा चाहिँ हैन कम ल्याए पनि लिडमा थियो फाइदा उठाइहाल्यो क्या अरू टिमले त्यस्तो दिमाग लगाएन जस्तो गडलको टिमले सुरुमै तिमी खेल्न म अब बन्द गर्छु म बन्द गर्छु ओके मेरो भाइ बोलाइरहेछ अरे किन अज्जु भाइ पनि खेल्दै थियो अरे 4 जना वाचिङ 5 जना वाचिङ हैन यो 5 जना वाचिङ 6 जना वाचिङ लल यो के भएको हो ओनामी ल लाइक गरौँ फ्यानाकै हो भने चाहिँ फ्यानाको होइन भने चाहिँ यो भ्युज पट अस्ति उकुडन वाइटी आउँदाखेरि चाहिँ 6 भ्युज बट लिएर आएका हुन्छन् उनी चाहिँ पाँच जना भ्यू चाहिए पनि 5 जना हेर्दैछन् लाइक पनि बढ्दैछ थ्यांक यू सो मच फर लाइक ल 2 जना भयो ल अब सक्यो अब स्ट्रिम पनि हेर्ने भन्ने थ्यांक यू एभ्रीवन फर वाचिङ हैन म चाहिँ यहाँ सकाउँछु क्या यहाँ सक्यो क्या अब मेरो पनि टाइम एन्ड भयो त्यो राति बस्यो भने कराउनुहुन्छ
छाडेन खेला मलाई म एन्ड गर्छु ल टाटा बाई बाई एभ्रीवन थ्याङ्क यू फर वाचिङ भन न मलाई तिम्रै बेटा हानिरहेको थियो यार भन्छौ कहिले भनेर यार ती भन न ती भन मलाई म सिम्पल है टाटा बाई बाई सकेको स्ट्रिममा थ्याङ्क यू फर वाचिङ यति फेरि आउनुहोस् अन्त बढी आउँदैन आफूलाई त पछि अलि भ्युवर्स भएपछि बनाउँछु भ्युवर्स आउन देऊ न प्र्याक्टिस हुँदैछ प्रैक्टिस गर्दैछु बिस्तारै हुन्छ हर एक चीज़ का टाइम है अपना भी टाइम आएगा अपना टाइम आएगा ल ल्याएर म गएको तिमी पब्जी खेला असल मेरो त डाटा पनि सक्यो के को खेल्नु नि अब खेल्न पनि पाउँदिनँ होला है नसक्छ केही ठेगाना छैन ल यार मैले चाहिँ ए भन्देऊ न यार तिमी जल्दी भन न तिमी भन न छिटो यार टाटा ल एन्ड गरिदिएँ